Chinese, in fact, are beating up our Jawan, black and blue, in Arunachal. Here's all that you need to know about what's really happening with Rahul Gandhi. जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं. Yes, you heard that right. Rahul Gandhi has said that Chinese are beating up our Jawans black and blue in Arunachal. Listen again. मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा. जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है. उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है. हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है. इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन यूथ का है. प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन यूथ का है. On a cross-country walkathon by the name Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi may not have seen this undated video. Where Indian soldiers successfully pushed back PLA troops along the line of actual control. Maybe because he was busy watching the Football World Cup and may have missed important news updates. That India has test-fired Agni 5 ballistic missile that has a target range of over 5,000 kilometers. Is that why he's echoing Mehbooba Mufti's line? Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. Very sorry. जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं. The people of Tawang are giving him a reality check. राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला. मुझे सही नहीं लगा, अपना इंडियन आर्मी को लेकर अच्छा नहीं लगा. राहुल गांधी ने जैसे कि आज से वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है. बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना. पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम सब प्राउड फील करते हैं. ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ, ना इंडियन आर्मी के खिलाफ. And has triggered a big political face-off. इस अपनी यात्रा में जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, ये भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं. Is there a problem with Rahul on understanding of issues of national security? And let's take a look at some news in brief, viewers. The BJP has condemned as highly shameful and derogatory remark of the Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari against the Prime Minister Narendra Modi and has decided to hold a nationwide protest on Saturday. According to the BJP, the protest will be held in all of the state capitals across the country. In a shocking incident of a school teacher in Delhi allegedly hitting a female student with scissors and then flinging her from the first floor of the building has come to light. The incident took place at the Municipal Corporation of Delhi-run Prathmik Vidyalaya in Central Delhi's Model Basti area on Friday. According to sources, the teacher Geeta Rani has been suspended with immediate effect of throwing a girl student off from the first floor of the Nigam Prathmik Balika Vidyalaya Model Basti Karol Bagh, and the MCD will bear all the expenditure on the medical treatment of the student.
Members of a Hindu organization protested inside the premises of a private school in Yamunanagar after a teacher allegedly scolded a student for keeping a braid and applying tilak on the forehead. Mormugao, the second of the 4 Visakhapatnam class destroyers to be commissioned into the Indian Navy in the presence of Defence Minister Rajnath Singh on 18th December at Mumbai. The ship is designed by Indian Navy's Warship Design Bureau and constructed by Mazagon Dock Shipbuilders. More than 2,000 security personnel, including 2 additional commissioners and 5 deputy commissioners, will be deployed in Mumbai to keep an eye on the Mahavikas Aghadi protest march against Eknath Shinde government and the governor of the state, Bhagat Singh Koshyari, over his controversial remark over the Chhatrapati Shivaji Maharaj. And the Mumbai police has tightened security arrangements so that now no law and order problem can be risen. Five students drowned in the Krishna River of Vijayawada, Andhra Pradesh. According to information, 7 students went into the river on Friday evening, out of which 5 students drowned. Rescue operations are being done to carry out the students out of the river, with the help of which 1 student has been taken out and his identity has also been confirmed. The death toll in Bihar's Chhapra due to the consumption of spurious liquor has risen to 50, but the Bihar Chief Minister has stated that zero sympathy towards those who are drinking spurious liquor. बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो। And the newly elected Himachal Pradesh MLAs will take oath on December 22nd when the 3-day winter session of the State Assembly begins. A notification issued here on Friday said this would be the first session of the 14th Vidhan Sabha. According to the notice, the Speaker will be elected on December 23rd, which will be followed by the Governor's address, a debate on which will be held on December 24th, and it would be passed on the same day. The National Investigation Agency on Friday filed a charge sheet against 11 persons in the murder of the Amravati-based pharmacist Umesh Kole, who had shared social media posts backing Nupur Sharma. The charge sheet was filed before the special NIA court here, and the court had in September granted the central agency 90 days extension to file the charge sheet, and Kole was killed in the eastern Maharashtra's Amravati city on June 21st, 2022 after sharing on social media a post supporting suspended BJP leader Nupur Sharma over her controversial remarks about the Prophet Muhammad. Now, viewers, we are seeing the kind of friction that China is also facing, and of course, we are seeing how Japan has adopted a new national security strategy that names, in fact, China above North Korea and Russia as strategic threats. And China has now taken the news, in fact, has not taken the news well, and has called out Japan for using the China threat as an excuse to bolster its military power. Here's all that you need to know about what's really happening with China and Japan. Japan has adopted a national security strategy. The strategy has caused ripples because it comes as a major break from Japan's strictly self-defense only post-war principle. Japan has announced plans to possess preemptive strike capability and cruise missiles within 5 years to give itself more offensive footing against threats from neighboring China and North Korea. 今回防衛力強化を検討する際には各種事態を想定し
相手の能力や新しい戦い方を踏まえて、現在の自衛隊の能力で我が国に対する脅威を抑止できるか、脅威が現実となったときにこの国を守り抜くことができるのか、極めて現実的なシミュレーションを行いました。This shift puts an end to Japan's 1956 policy that shelved counter-strike capability and only recognized the idea as a constitutional last-ditch defense. Japan's post-war policy prioritized economic growth while keeping its security light by relying on American troops stationed in Japan under their bilateral security agreement. 5年間で緊急的に防衛力を抜本的に強化するため、43兆円の防衛力整備計画を実施する。令和9年度には抜本的に強化された防衛力とそれを補完する取り組みを合わせて、 The strategy named China as the biggest strategic challenge before North Korea and Russia to Japan's effort toward ensuring the peace, safety and stability for itself and the international society. Japan Prime Minister Kishida assured that Japan's path as a peace-loving nation will remain unchanged. まさにこの3文書とそれに基づく安全保障政策は戦後の安全保障政策を大きく転換するものであります。もちろんこれは日本国憲法、国際法、国内法の範囲内での対応であることは言うまでもありません。China slammed the Japanese government and the Chinese Foreign Ministry stated that the Japan ignores facts and groundlessly discredits China. 中国始终致力于维护亚太和世界的和平与稳定，是各国发展的伙伴和机遇。日方罔顾事实，背离日方对双边关系的承诺及中日之间的共识，对中国无端抹黑，中方对此坚决反对，一直通过外交渠道向日方表明严正立场。 China claimed hyping up the China threat to find an excuse for its military buildup is doomed to fail. China also urged Japan to respect the security concerns of Asian neighbors and act prudently in the field of military security. 中日互为近邻，同为地区重要国家，维护和发展中日友好合作关系，符合两国和两国人民根本利益。我们再次敦促日方恪守中日4个政治文件各项原则。 切实将互为合作伙伴、互不构成威胁这一政治共识体现到政策上，落实到行动中。 Japan, however, called the newly adopted national security strategy its move to bolster military powers. Since Japan's defense buildup has long been considered a sensitive issue at home and in the region, the adoption of new national security policy poses a big challenge to Kishida government. Agency Report, Republic TV. And now, viewers, we're getting some very colorful visuals from Hyderabad. In fact, these are the visuals of the combined graduation parade of the Air Force Academy. Let's cut across to those. All right, so once again, those were the visuals from Hyderabad that we have just put out on your screens. And of course, this is the visual
from the combined graduation parade of the Air Force Academy that is being carried out in Dundigal in Hyderabad to mark the successful completion of the pre-commissioning training of the flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Air Chief Marshal Sheikh Abdul Hanan, Chief of the Air Staff of Bangladesh Air Force, would be the chief guest, in fact is the chief guest, and the reviewing officer of the CGP, the Combined Graduation Parade. Now this makes this event even more significant, as this is the first instance when a foreign service chief would be reviewing the common graduation parade as well, and those are the latest visuals of this combined graduation parade, where we do see dignitaries from Bangladesh as well who are present here as chief guests. And we also see how during the ceremony the Air Chief Marshal Sheikh Abdul Hanan in fact will confer the President's Commission to the graduating trainees as well, and the ceremony includes the presentation of the wings and rivets to the flight cadets who would be successfully completing the flying and navigation training respectively. And those are the visuals of our Jawans as well on your screens right now, and the RO all right, let me also bring in my colleague Aneri, who is reporting on this. Aneri, speak to us about these very colorful visuals, in fact, that we're getting of the combined graduation parade that is being carried out in Dundigal in Hyderabad today. Well, that's right, Priyanka. We have been seeing that this is a combined graduation parade which has been held here at the Air Force Academy, where you can see how this is being taking place here every time we see. And this time, the chief guest here is the Bangladesh Air Force Chief of Air Staff, who is here as the chief guest. And also at the same time, we have been seeing that this is to mark the completion of the pre-commissioned training of the flying cadets of various branches of the Indian Air Force. And now you can also see how there are various people who have come here to witness this graduation parade. And also at the same time, not to forget, during the ceremony, the Air Chief Marshal of Bangladesh, Sheikh Abdul, will also confer the President's Commission to the graduation training. So definitely a big day here, and also as a part of this graduation parade, we have been seeing that the flight cadets from the flying branch standing in the first in order of the merit will be awarded with the Sword of Honor. So now we are seeing that how this graduation parade is here at the Air Force Academy in Hyderabad. That's right, Aneri, and of course we continue. On the other side of this short commercial break, we continue to track these visuals of the combined graduation parade being held at the Air Force Academy in Dungal in Hyderabad. Powered by Amity University, ranked amongst the top 3% universities globally. Tata Capital, Palak Jhapkao, Loan Pao. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education, whilst imbibing values and sanskars in students. Life will test you. It will turn your world upside down. Again. And again. And again. The only way to hit back is to stand up. Stand up every time. And say, I'm not done.
India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी, तो डायबिटीज की कर लो तैयारी. Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा. अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया. बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है. छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर. जियो मार्ट, हर घर का मार्ट. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. Top stories on the Morning Express. Rahul Gandhi faces massive anger. Rahul says our soldiers are being beaten up by the Chinese troops. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults the Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark. Death toll in the Bihar Hooch tragedy rises to 65, and yet the Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Shraddha's killer Aftab seeks bail. Delhi court to hear Aftab's bail plea today. Home Minister Amit Shah in West Bengal for the Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and the other chief ministers to attend. Now, viewers, cutting across to some more breaking updates that we're picking up, this time from Hawaii, where we are seeing that a medical plane, in fact, with the crew members, 3 crew members on board, has gone missing on a flight between Maui and the Big Island. According to a statement from the company, the Global Medical Response can confirm that one of our Hawaii Life Flight emergency fixed-wing airplanes based in Maui went off radar while en route to pick up a patient in Waimea, the Big Island. Now, the company's statement issued on Friday had stated these particular details, and the patient was not on the plane, which lost radar contact from at about 9:30 p.m. on Thursday, and it said that we are in the process of reaching out to the other families, and the statement of the company, in fact, had also given this information, and the company is also assisting searching and rescue teams, is something that has been conveyed by the Hawaii Life Flight. And the Coast Guard said that the aircraft controllers lost radar contact with the plane about 17 miles south of Hana in Maui as well. And of course, the Coast Guard has stated that they're searching with both a helicopter and a cargo plane as well. And the guard from the missing plane as well is being looked for. And the Global Medical Response said that it is a temporarily paused Hawaii Life Flight transports, prompting the government, in fact, to issue the emergency proclamation, allowing the state to supplement Hawaii's medical flight capacity in the interim as well. Viewers, we're getting various voices on this big developing story. Then we'll get you all the breaking updates. Let's listen into those. And there was no patient on the flight at the time. They were going for a pickup. But what has happened subsequently is there is a pause now in services statewide. And the word for that pause
we will get into in a moment, but basically it is a stand down, meaning that we're unable to use Hawaii Life Flight for a period of time until they're cleared. Remember that there are people involved, and so our hearts break for the potential loss of life for those 3 individuals that were on the Life Flight. These are healthcare heroes who have been working for years, if not decades, caring for our people, transferring sick individuals from neighbor islands to Oahu when in crisis. So that's the first thing that we want to remind people, that we potentially lost loved ones who have helped keep people alive. And here's some news in brief from across the globe. Starbucks workers from around the US have started a 3-day strike. The walkouts are a part of the effort to unionize the coffee chain stores. Starbucks Workers United says more than 1,000 baristas at 100 stores are planning to walk out. The strike is said to be the longest in the year-old unionizing campaign. Starbucks workers around LA have also started their 3-day strike, and this is the second major strike in a month by Starbucks US workers. On November 17, workers at 110 Starbucks stores held a 1-day walkout, and more than 265 of Starbucks' 9,000 company-run US stores have voted to unionize since late last year. Starbucks workers shut CEO Howard Schultz's home store in Seattle as they launched their first of the 3 days of strike. The workers at the Madison Park store joined more than 1,000 baristas. King Charles danced with Anne Frank's stepsister on a visit to a Jewish community centre in London. Charles visited the centre on Finchley Road and spoke with the students who were preparing presents and food hampers for families around Camden, alongside the Holocaust survivors like Shosh and the refugees. U.S. Secretary of State Antony Blinken welcomed Mexican Foreign Minister at the State Department, and the two ministers expressed that they have a great deal to discuss during their bilateral meeting, including the North American Leaders Summit, migration and regional security. SpaceX launched its Falcon 9 SES O3BM power mission to medium Earth orbit from the Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The first stage booster supporting this mission previously launched CRS-22 and Crew 3 and 4 and others. The following stage separation, the first stage landed on the shortfall of the Gravitas drone ship, which is stationed at the Atlantic Ocean. Many worshippers walked barefoot, pushing heavy carts loaded with tobacco, candles and statue of the Catholic San Lazaro to ask for the blessings of Saint Lazarus in Cuba. Saint Lazarus is revered throughout Cuba as the saint of good health, and its popularity is also due to the blend with the African roots religion. Peru's President Dina Boluarte, in fact, said that her transitional government was listening to the demands of the Peruvians who were legitimately raising their concerns. Although protests continued across Peru demanding Castillo's freedom, in fact, Dina's resignation and the immediate scheduling of the elections to pick a new president and the Congress. Truck drivers continue to strike in Jordan after launching a strike last week to protest against high fuel prices in the Arab Kingdom. And the strike and the protests have spread to several cities now, and the clashes have erupted with the police using tear gas to disperse them. A few hundred protesters gathered in front of the Serbian presidency building in Belgrade to show their support for the Serbs in Kosovo. And the protests held flags reading "No Surrender" and a banner that read "Kosovo is the heart of Serbia."
Now, Serbia formally demanded that its security forces return to the province of Kosovo, despite warnings that such calls are unlikely to be accepted and will only add to the tensions in the Balkans. Now, shifting our focus, viewers, to the Peruvian judge that ordered the President Pedro Castillo to remain in custody in 18 months, approving a request from the authorities from time to build their rebellion case, in fact, has also come to light. And here's a report on all that you need to know about the same. Amid the violent protest in Peru over the release of former President Castillo, a Peruvian judge ordered ousted ex-president Pedro Castillo on Thursday to remain in custody for 18 months, approving a request from authorities for time to build their rebellion case against him. Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 27427864. The judge's decision came a day after the government declared a police state as it struggles to calm violent protests. Remember, the protests erupted after Castillo was voted out of power by lawmakers following his attempt to dissolve Congress ahead of an impeachment vote. The ruling came days after Congress stripped Castillo of the privilege that keeps Peru's presidents from facing criminal charges. Meanwhile, a large group of protesters and police in riot gear gathered in central Lima Thursday evening. The government also imposed a curfew in at least 15 communities as allowed by the nationwide emergency declaration issued on Wednesday. Que reafirma mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, para la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos. The protesters were demanding Castillo's freedom, the resignation of President Dina Boluarte, and the immediate scheduling of general elections to pick a new president and members of Congress. Earlier, the protesters have burned police stations, taken over an airstrip used by the armed forces, and invaded the runway of the international airport in Arequipa, a gateway to some of Peru's tourist attractions. Bureau Report, Republic TV. Time now here for a short break, viewers. On the Morning Express, viewers, coming up on the other side, Shraddha's killer Aftab seeks bail. Delhi court to hear Aftab's bail plea today. And getting you updates on the other side of Home Minister Amit Shah in West Bengal for the Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend as well. A movement transforming millions of lives in rural Maharashtra. An initiative empowering communities to transform their own lives. A journey that is changing the face of rural India. A holistic area where we want to make impact across everything that affects people's life, with the holy grail being livelihood to sort of empower them. Catch the stories of aspiration on Swadesh Foundation's Swa Se Bane Desh at these times only on Republic TV. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। मेरा दोस्त है। वो हर बार मुझे बचा लेता है। घोस्ट को कैसे पता मैं अंधेरे से डरता हूँ? घोस्ट मेरा दोस्त है। मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं। ना आग पकड़े, ना जहरीली गैस छोड़े। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो। एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर
हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. ऑलराउंडर हम भी है। और तुम्हारा किचन? कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स, तो कभी पानी। आपकी किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100 टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर। MYK लेटिक्रीट SP100 जोड़ हो तो ऐसे। Why did life test me? Why did it try to crush me, shake me, break me? Why me? Because it knew if I could take this test, I could take anything and say, that was easy. जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना। मातृभूमि विनाश के कगार पर खड़ी है। ये घड़ी है करो या मरो की। एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। Welcome back, viewers. Now let's shift our focus to what's really happening in Andhra Pradesh, where the clashes in fact had been reported between the ground level cadre of the YSRCP and the opposition TDP as well. Now we're seeing how multiple reports are emerging out of that area of these clashes that have been reported, but the reason of the clashes has not yet been determined as well. Let's take a look at this complete report of these clashes emerging from Andhra Pradesh. Amid ongoing tensions between the ruling and opposition parties in Andhra Pradesh, another fresh violent clash has come to light. A fresh violent clash has been erupted between the TDP and the ruling YSRCP workers. The violent clash occurred in Machrela of Palnadu district of Andhra Pradesh. On camera, watch the leaders came face to face as vehicles were being burnt and stones were also pelted. Notably, the situation got intensified that the police were deployed at the site. Watch how police struggled to maintain law and order situation at the clash site. Several were reportedly injured in the clash. President of the state unit of TDP, Kinjarepu Naidu, strongly condemned the damage caused to the party office amid violence. The leader further called out the ruling YSRCP for not allowing the opposition to protest. He said, and I quote, "Machrela is not anyone's personal property and is not the Jagir of the MLA. Are the opposition parties not eligible to stage protest programs?
While fresh clash has been escalated, tensions continue to soar between already rivals TDP and YSRCP in Andhra Pradesh. Bureau Report, Republic TV. $5 lakhs. लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए. लोन सही मिलेगा यहीं. Life will test you. It will turn your world upside down. Again and again and again. The only way to hit back is to stand up. Stand up every time and say, I'm not done. বাইরে সিকিউরিটি আর নিজের বাড়িতে এইসব दादा बचा लिया आपने. बेफिक्र कोलकाता जाओ, इंटरव्यू अच्छा ही होगा. हर बंद राह ओपन हो सकती है. लगता है सिर्फ दिल. एक्सिस बैंक, दिल से ओपन. Welcome back, viewers. Now let's take a look at how the global diamond brand De Beers Forever Mark, in fact, is creating awareness about the brand and how the consumers are contributing back to the society. Here's a complete report on the same. Client never had a problem with global brand or access to the luxury product, because luxury in jewelry particularly, Indian had, if you look at the culturally, we had an access to all those things. So now when you talk about specifically about global brand, there is an immense opportunity because the world is becoming one through digital platform, because of one device, access to the consumer and client. Brands are the expression for the new generation client wherein they can express their own identity. So they will buy from the brands which exhibit or exposes those philosophy. They want to buy a brand which is also giving them assurance of the social responsibilities, environmental responsibility. Keeping that in mind, we are the only global diamond brand which has an access to the mines. So we give a complete traceability of whole journey of the diamond. And look at the De Beers philosophy. We have something called Building Forever. That's the initiative which we have within the organization. Few examples that we are going to be a carbon neutral company by 2030. We are doing a lot in the community where we mine. That means generating employment, contributing a higher percent to the GDP. So when as a company we bring in this offering to the end client, and when the end client buys a De Beers diamond, okay, they are rest assured that they are buying the world's most beautiful, rare and responsibly sourced diamond. Sustainability is a new big buzz in the market, and the end clients, particularly millennial and Gen Zs, they want to buy product from the brand which contributes back to the society, which takes care of the environment, takes care of the community from where it comes. And that's where the De Beers plays a big role in that. We not only just take care of the environment, but we make sure that the local community thrive out of this business what is being generated. So South Africa had a typical problem of excess elephant population, and they were destroying the ecosystem. So we did a project under this moving giant wherein we relocated 200 elephants from South Africa to Mozambique. It may look very simple, but it took more than 2 years to study the behavioral pattern of the elephant, because they live in family. So this may sound like, what does the elephant has to do with the the diamond? But these are the values which we live, taking care of the whole ecosystem. And that's where making sure that these elephants are relocated, and they are relocated to Mozambique, and we are very happy to say that those relocated elephants are giving birth to the new one, and bringing in a balance in the environment, now contributing back to the community. If you look at the GDP of Botswana or the countries where we mine, diamond contributes a higher percentage.
And that is possible because of the employment we generate. So when you buy a De Beers Forever Mark diamond, you are rest assured, as I said, that these diamonds are contributing back to the society and also responsibly sourced. And I think from a De Beers Forever Mark point of view and De Beers point of view, India market remains very, very strong. Imagine the 10 diamond produced in the world, 9 diamond comes to India because of its craftsmanship and the skill set what we have in cutting and polishing. It is also at the same time the demand for the end or the finished product is growing. Currently, Indian as a market, we consume almost 7 to 8% of the global polish diamond, and that is expected to grow to a double digit. That's primarily because currently diamond jewelry market is valued around $5.6 billion, and by 2030 it is expected to be growing to around $17.6 billion. So commitment from De Beers will continue. We will be working very, very strongly with De Beers Forever Mark brand. We are working with new technology called Tracer. It's a blockchain platform that is we are introducing, and then eventually we are looking at introducing our luxury segment brand also. So India remains very, very important. In fact, in today's world, nobody can ignore India as a market. Powered by Amity University, ranked amongst the top 3% universities globally. Tata Capital, Palak Jhapkao, Loan Pao. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. सोच रहा हूँ कमेंट्री ट्राई करूं। मैच का आखिरी बॉल, तेज तूफानी डिलीवरी, एक धमाकेदार शॉट और ये गया छक्का। छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। Hey boss. Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया। Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. ये है गेहूं. जब इसमें जुड़ता है रागी, जवार, बाजरा और मेथी तो बनता है हेल्दी मन्ना मल्टी मिलेट आटा. ये है बेहतर आटा. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, NPS में. NPS में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है. इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. NPS कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है. अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना NPS अकाउंट ओपन करता हूँ. जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं. पेंशन है तो टेंशन नहीं. NPS में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है. आर्थिक विकास एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए निवेश का उत्कृष्ट गंतव्य स्थान बनकर उभर रहा है. भारत की अर्थव्यवस्था को
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. The headlines at this hour: Rahul Gandhi faces massive anger, says our soldiers are being beaten up by Chinese troops. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark. Death toll in Bihar Hooch tragedy rises to 65, yet CM Nitish Kumar says no sympathy. Shraddha's killer Aftab seeks bail. Delhi court to hear Aftab's bail plea now. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other CMs to attend. You're watching Live in Breaking, and in breaking news coming in from the national capital, NCPCR has summoned Baiju's CEO over allegations of malpractice. The apex child rights body, the NCPCR, has summoned EdTech Baiju's CEO over allegations that the company is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. According to a media report, Baiju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived as they had to put their savings and futures in jeopardy for these courses. The National Commission for Protection of Child Rights, taking cognizance of the matter, has summoned Baiju CEO Baiju Ravindran to appear before it next week. So, EdTech firm Baiju, under the scanner now, being summoned by the apex child rights body, the NCPCR. Joining us is Harsha with all the details and the updates on this breaking news story. Harsha, if you can hear me. Child rights body NCPCR taking cognizance of activities, and now Baiju's CEO has been summoned. What are the details that you have right now about the allegations against him, the exact allegations that have come in that has caused the NCPCR to take such serious note? Exactly, Rukma. Now we are learning that this is a online education company, Baiju. So its CEO Baiju Ravindran has been summoned by NCPR because there have been allegations from parents and children of malfunctioning. They are trying to lure the parents and children to buy their courses online, and not only this, they involve them into the loan agreements, which makes the future and savings of the parents in jeopardy. This is the reason that many customers have come in forward, and there were several articles also against Baiju. Because of this, now NCPCR has taken the cognizance of this entire matter. And Rukma, let me try to tell you very frankly, if Ravindran doesn't come in person next week when the NCPCR has summoned him, then according to the power of the NCPCR and according to section 13 and 14 of CPCR Act of 2005, serious actions could be taken against the Baiju CEO Ravindran. So Rukma, now we are learning that next week he has to come in person, because there have been many customers and many parents who have clearly stated that the malfunctioning in the Baiju company has been reported. They are trying to lure the parents to buy their courses online, and this is all the wrong way. And therefore NCPCR, who is the apex body for child welfare, has taken the cognizance of this entire matter. Now we have to say that
what Ravindran has to say about the discrepancy which is being seen in his online education company Byju's, and he has to explain about the entire discrepancies which is taking place in his company, and therefore NCPCR has called him and summoned him in next week. Next week he has to come in person and explain everything, how they make the parents buy their courses and how the allegation from his side is not true, what the Byju's has been claiming. Rukma, back to you. Right, Harsha, many thanks for giving us those updates at this point. These are the few details that we have, that Byju Ravindran, CEO of EdTech company Byju's, has been summoned by the apex child rights body, the NCPCR. The allegations against him are for malpractice, and various parents and guardians have alleged that Byju Ravindran and the company under him has lured them with, with false promises, and they have jeopardized their money and their futures because of, because of these malpractices. He is to appear next week. And to discuss this, we are trying to get you more voices now of the NCPCR, the National Commission for Protection of Child Rights. Priyank Kanungo joining us. He's the NCPCR chief. Many thanks, Mr. Kanungo, for speaking with Republic. Tell us more. What are the exact charges? What are the exact charges on which Mr. Byju Ravindran has been summoned by your body? Mr. Priyank, if you can hear me. Yeah, I can hear you. It is not first time that we are receiving complaints against this company for alluring children. Earlier also we have received this kind of complaint. We have contacted authorities, the regulator authorities, the ministry. The Ministry of Education had issued a guideline to regulate this type of malpractices. Repeatedly, we have noticed that complaints are continuously coming to us and widely published in the newspapers. We have issued summons to the CEO of this company to tell us what is their modus operandi of this kind of illness, how they are promoting, how they are alluring children to pressurize their parents, take loans for studies in their online education program. So we have issued summons to CEO to come to the NCPCR and explain their modus operandi. Well, Mr. Kanungo, we'll have to leave it at that for now. Many thanks for joining us and for giving us those details. Right now, what we're getting clearly is the fact that Byju Ravindran, CEO of EdTech company Byju's, there are allegations by parents and guardians of the company having duped them and lured them using false pretenses, and he is to appear before the NCPCR around next week. Shifting focus now, Congress leader Rahul Gandhi has attacked our forces yet again. Rahul has said that the Chinese are beating up Indian Army Jawans black and blue in Arunachal Pradesh. Here's a look at all that he said and the reactions that have come. जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं. Yes, you heard that right. Rahul Gandhi has said that Chinese are beating up our Jawans black and blue in Arunachal. Listen again. मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा. जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उन्होंने उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है. उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है. हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है. इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती. मगर
उनका प्रेपरेशन चल रहा है और प्रेपरेशन यूथ का है। प्रेपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रेपरेशन यूथ का है। On a cross-country walkathon by the name Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi may not have seen this undated video. Where Indian soldiers successfully pushed back PLA troops along the line of actual control. Maybe because he was busy watching the Football World Cup and may have missed important news updates. That India has test-fired Agni 5 ballistic missile that has a target range of over 5,000 kilometers. Is that why he's echoing Mehbooba Mufti's line? Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs, very sorry. जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। The people of Tawang are giving him a reality check. राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला, मुझे सही नहीं लगा, अपना इंडियन आर्मी को लेकर अच्छा नहीं लगा। राहुल गांधी ने जैसे कि आज वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है। बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ, ना इंडियन आर्मी के। And has triggered a big political face-off. इस अपनी यात्रा में जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, ये भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात है। Is there a problem with Rahul on understanding of issues of national security? And in other top stories, the BJP has condemned as highly shameful and derogatory remarks of the Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari against Prime Minister Narendra Modi and has decided to hold nationwide protests. According to the party, the protests will be held in all state capitals across India. Mormugao, the second of the 4 Visakhapatnam class destroyers to be commissioned into the Indian Navy in the presence of Defence Minister Rajnath Singh on the 18th of December at Mumbai. The ship is designed by Indian Navy's Warship Design Bureau and constructed by Mazgaon shipbuilders. More than 2,000 security personnel will be deployed in Mumbai to keep an eye on the Mahavikas Aghadi protest march against the Eknath Shinde government and the governor of the state, Bhagat Singh Koshyari, over his controversial remark over Chhatrapati Shivaji. The Mumbai police has tightened security arrangements so that no law and order problem arises. And the newly elected Himachal Pradesh MLAs will take oath on the 22nd of December, when the 3-day winter session of the state assembly begins. A notification issued on Friday said this would be the first session of the 14th Vidhan Sabha. According to the notice, the speaker will be elected on the 23rd of December, which will be followed by the governor's address, a debate on which would be held on December 24th, and it will be passed on the same day. In the Shraddha Walkar murder case, accused Aftab Poonawalla has moved an application in Delhi Saket Court seeking bail, which the court will likely hear today. Poonawalla, who has been arrested based on his confession to killing Walkar and chopping her body into 35 pieces to dispose of, was arrested last month and is lodged in Tihar jail.
Union Home Minister Amit Shah will be attending the Eastern Zonal Council meeting scheduled to be held in Kolkata today. Shah is stated to meet Chief Ministers of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha and Sikkim to hold discussions on unsettled issues between these 5 states, including those related to boundaries and completion of the Eastern Freight Corridor. The GST Council in its meeting today is expected to decide on a number of issues like decriminalization of offences under the GST law, setting up appellate tribunals and a mechanism to curb tax evasion in pan masala and gutka businesses. And in latest updates on the Shraddha Walkar case, her family is now fighting for justice. Shraddha's father met the police commissioner in Mumbai yesterday and seeking a probe into lapses in the murder case, while accused Aftab Poonawalla is now seeking bail. We get you more details and updates in this report. Take a look. As investigation continues in the Shraddha murder case, the November 2020 complaint that Shraddha wrote to Mumbai's Vasai police against Aftab becomes most critical. Shraddha's father, Vikas Walkar, met Maharashtra police officials and sought an immediate probe into the lapses. मैंने जो तुलिंज में जो 2020 में जो कंप्लेंट की थी मेरी बेटी ने, उसी के बारे में मैंने वापस पूछा। According to her family, Shraddha would have been alive today had the police not ignored this letter. Remember, in the past 2020, Shraddha Walkar had written a letter to Tulinj police station and filed a complaint, and also and the letter also mentioned that Aftab Poonawalla wants to kill her and he will in fact cut her into pieces. Despite all the testimony given to Tulinj police station, no actions were initiated, and in fact within 24 hours it is being said by police and claimed by Tulinj police that Shraddha Walkar took back her complaint. Meanwhile, the accused Aftab Poonawalla moved an application in Delhi's Saket court seeking bail. According to sources, the bail plea will be heard on Saturday. This is a day after Shraddha's dismembered bones that were retrieved from Mehrauli forest matched with her father Vikas Walkar's DNA samples. Bureau Report, Republic TV. And we are getting the visuals here. Earlier, we had been reporting how the BJP has declared that it has announced that it will be holding nationwide protests against the remarks that it has taken umbrage to of Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari. And India has slammed Bilawal Bhutto's comments against the Prime Minister as a new low even for Pakistan, and has clarified while it will have no impact on Prime Minister Modi's image, it is clear that Pakistan कुछ ऐसा जरूर करने का वो कोशिश करते हैं कि जिससे कुछ न कुछ कहीं बौखलाहट हो, लेकिन हमें और हमारे प्रधानमंत्री जी को उससे कुछ फर्क नहीं। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पे, और साथ ही पाकिस्तानी झंडे को भी यहाँ पे रखा गया, उसको भी जलाया जा रहा है। जो यहाँ पे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइव तस्वीरें, यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के। तमाम यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और भी कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं बयान को लेकर के। हाय हाय पाकिस्तान, 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 हाय हाय। देखिए
बिलावल भुट्टो का पुतला लाया गया, उसको भी जलाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों में काफी रोष है, जो कार्यकर्ता हैं काफी रोष में है। पूरे देश में बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यह जम्मू की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश बिलावल भुट्टो के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हाय हाय पाकिस्तान, 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 हाय 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 पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान। देखिए बौखला गया है पाकिस्तान, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं बौखला गया पाकिस्तान और कहीं ना कहीं डर है उसे कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान ISI के एजेंट्स And these are protests, the BJYM, that's the Bharatiya Jana Yuva Morcha, holding protests there, protesting against Bilawal Bhutto Zardari's remarks at the United Nations. Earlier, India had slammed the remarks, saying that they are a new low even for Pakistan. And while India has clarified that the remarks would have no impact on Prime Minister Modi's image, India has resoundingly slammed Bilawal Bhutto, Pakistan Foreign Minister, over his offensive personal attack on Prime Minister Narendra Modi. Now, these, as you can see, these are visuals of the protests. Earlier, the BJP had said that protests would be held nationwide today. These are visuals of some of the protests as they are happening. The Republic has accessed these first visuals of the protests against Pakistan's Bilawal Bhutto's remarks against Prime Minister Narendra Modi. Lomas joining us live. Lomas, we're getting visuals of the protests. It appears that they have begun in Jammu. That's the update we're getting. But it's over to you to give us all the details as they are happening. The BJP had earlier stated that nationwide protests would be held today against the remarks by Bilawal Bhutto.
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जम्मू में मौजूद हूं और जम्मू में आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कर्मी हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा यहाँ पर गुस्सा निकाला जा रहा है। साफ तौर पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो बिलावल भुट्टो ने बातें कही है वो आपत्तिजनक है और वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको यहाँ पे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर रोष देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर क्या कहते पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान, उसका बिलावल भुट्टो जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। आज लानत भेजते हैं उस बिलावल भुट्टो को हम इस प्रदर्शन के माध्यम से। पाकिस्तान बौखला गया है जिस तरीके से बयानबाजी उसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के कल जो फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान किया है, तो मुझे लगता है कि ये कंडेम करने के लायक है, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद अपने गिरेबान में झांके अगर, क्योंकि वो एक आतंकवादी देश और पूरे वर्ल्ड ने उनका बॉयकॉट किया है। तो मुझे लगता है कि आज जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि राहुल गांधी ने भी वही स्टेटमेंट दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है वो राहुल गांधी के साथ कोई ऐसी सेटिंग थी कि जो स्टेटमेंट हम पाकिस्तान से देंगे और आपने यहाँ हिंदुस्तान से देना है। आज हम चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो देश के अंदर जो जयचंद है, हम लोगों को उनसे भी मुकाबला करना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान चाहे जितना मर्जी कोई बोले, लेकिन पाकिस्तान कभी हमारा सखा जो है वो नहीं हो सकता। जो मोदी जी है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश की जनता ने उनको जो है वो वोट देकर जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के जो है वो विशेष नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी तो क्या आम लोग भी नहीं सहेंगे। आपने देखा गुजरात के चुनाव में जिन्होंने मोदी जी का अपमान किया था उनका सफाया कर दिया गया वहां के लोगों द्वारा। तो मोदी जी हमारे सिर के ताज हैं, जो उनके खिलाफ बात करेगा हम सड़कों पे भी आएंगे और जरूरत पड़ी तो इसके साथ हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से चीनी सैनिकों को खदेड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला गया है। उस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का वो छवि बिगाड़ना चाहता है। देखिए, मोदी जी की छवि आपने देखा पूरी दुनिया में, वो विश्व के नेताओं में जो है वो आते हैं, पूरी दुनिया में उनका एक मान और उनका सम्मान है, और मोदी जी के खिलाफ जो भी बात करता है उसके खिलाफ जनता हो जाती है। और आज हम देख रहे थे कि चाइना के साथ 1962 की, जब से 1965 की वार हो, चाहे 62 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, उसके बाद आज इस देश ने जो है वो सीमा पर कितना काम किया है, कितनी हजारों किलोमीटर मोदी जी ने 2014 के बाद सड़कें बनाई हैं। आज हमारा अमेरिका के साथ जो है वो सैन्य अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में अभी थोड़े दिन पहले हुआ। तो चाइना बुखला गया है हिंदुस्तान की ताकत को देखकर, हिंदुस्तान की शक्ति को देखकर, और आज ये हालात हुए हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर देश को जो है वो खराब कर रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पे पुतला भी जलाया गया और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया है। बिल्कुल, आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो रोष है पूरे देश में देखा जा रहा है। बैक टू स्टूडियो। And we are getting you visuals, Republic tracking that story of the protests that have erupted nationwide. The protests have been called by the BJP in protest against Pakistan's personal remarks made by Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto against Prime Minister Narendra Modi. Powered by Century Ply, आग से बचाए. ArcelorMittal, Nippon Steel India Limited, smarter steels, brighter futures. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. Magnificent picture, magnificent sound, magnificent experience, Magnifique. High performance TVs by Aiwa Japan, now in India. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है,
तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी ज़रूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा करके रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? भैया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। अगर मिठाई जंक फूड से है यारी, तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. जाग उठा एक राष्ट्र, करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा, उठा एक महायुद्ध। भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक अध्याय, एक संग्राम, और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। Welcome back, viewers. Once again, cutting across straight to these live images that we're getting in from Jammu, where the BJYM, in fact, the Bharatiya Janata Yuva Morcha, in fact, had supported and staged a protest against the Pakistan Foreign Minister Bhutto over his remark against the Prime Minister Narendra Modi. Now, remember, the party, in fact, had declared for protests across the country in all of the state capitals of the states, in fact, where this kind of a protest would be carried out. And this time, these images, in fact, that we are getting in from Jammu, and we see that the protesters, in fact, are also holding up placards and burning effigies, holding up placards condemning Pakistan, shaming Pakistan, and those are the kind of posters that we see in the hands of the protesters, specifically the party member workers as well, the Bharatiya Janata Yuva Morcha members as well, who are in fact carrying out this protest, can be seen in various parts of the country. Now, starting from these images from Jammu that we are getting in, where this kind of a protest in fact had been carried out against the Foreign Minister of Pakistan for making these kind of a statement, insulting statements rather, against the Prime Minister Narendra Modi, to which the people of the BJYM in fact have taken offense and have stated that they will be carrying out protests from across the country in the state capitals of each and every state, and that they will be condemning Pakistan and calling out the foreign minister for making these kind of a personal remark against the Prime Minister as well. All right, we also have our correspondent Lomas joining us over the broadcast. He is at the point where this protest in fact is also being carried out. Lomas,
Tell us more about this protest that you're seeing around you. We see effigies being burned. We see posters, in fact, that have been put up shaming Pakistan, calling out Pakistan. Tell us what you see around you and the kind of anger that we have seen in not just the party member workers, but the civilians as well about this statement by the Foreign Minister of Pakistan, Lomas. बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पे बिलावल भुट्टो का पुतला फूका गया। साफ तौर पे उनका कहना है कि उनके पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगाड़ना चाहते हैं, धूलमिल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के पूरे देश में रोज देखा जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं मौजूद, उनसे हम जानने की कोशिश करें। पाकिस्तान बौखला गया है, इस तरीके से बयानबाजी वो कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो राजनीति है वो खत्म होने की कगार पे है। बिलावल भुट्टो जी को कोई जानता नहीं है। उन्होंने उस बयान को देकर उन्होंने सोचा कि मैं वर्ल्ड वाइड लीडर बन जाऊंगा, लेकिन मोदी जी की छवि को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। उनकी साफ सुथरी छवि है। पाकिस्तान के जो जितने भी लीडर होते हैं, आप जानते हैं वो आईएसआई के एजेंट हैं। ये आईएसआई के इशारे पे ही उन्होंने जो बयान दिया होगा कि हमारा जो पाकिस्तान का ध्यान वो कहीं और जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो बैंक करप्ट भी हो चुका है, उसकी अपनी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी। पाकिस्तान बौखला गया है जिस तरीके से बिलावल भुट्टो के द्वारा बयान दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही लग रहा है कि इस तरह के बयान बिल्कुल सही नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान इस चीज़ की बहुत निंदा कर रहा है और जगह जगह बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस चीज़ की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, बिलावल भुट्टो के खिलाफ। ये बिल्कुल होना चाहिए। जिन्होंने कल जो एक बयान दिया था बहुत ही निंदनीय था। आप देखिए मोदी जी की छवि, आप G20 जो उसमें 20 देशों को प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं, तो आप देखो मोदी जी की छवि किस प्रकार ऊपर जा रही है। पूरा देश इनको माना है और इनके जो पाकिस्तान इस समय आपकी स्थिति देखो किस तरह, आटे का भाव देखो, हर दबका चीनी सैनिकों को जिस तरीके से खदेड़ा गया, उसके पास पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखला गया। उसको डर है कि भारतीय सेना उन पे कार्रवाई न कर दे। बिल्कुल, वो बुखलाया हुआ है। उनको लगता है कि कहीं हमारे हाथ से पीओके ना निकल जाए। इस तरह की बयानबाजी वो इसीलिए दे रहा है कि हम अपनी छवि को थोड़ा सुधार सकें, लेकिन मोदी जी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करके पाकिस्तान ने अपनी छवि और बिगाड़ दी है, ना कि उसने अपनी छवि संवारी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को ये मालूम है पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को सहारा देता है, लगातार उनको बढ़ावा देता है। आप पिछला रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को अपने वहाँ रखता है। आप लादेन को ले लीजिए, जब वहाँ पे अमेरिका ने उसको लादेन को वहीं पे मारा हुआ था, पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का मेन अड्डा है। बिल्कुल, पाकिस्तान आतंकियों का मेन अड्डा है। और बिलावल भुट्टो के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं किस तरीके से मानसिकता क्या है, पाकिस्तान में चल क्या रहा है? सर, ये तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने स्थिति को मतलब संवारने के बजाय दूसरों को पॉइंट आउट करना, ये कहाँ का मतलब राजनीति है। तो किस तरह के बयानबाजी से मतलब क्या करना चाहते हैं, अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल प्रियंका, आप यहाँ पे समझ सकती हैं जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा हमेशा से आतंकियों को सहारा दिया जाता है, आतंकी को बढ़ावा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला गया है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो के द्वारा ये बयान दिया जाए, वो पीएम नरेंद्र मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूलमिल करना चाहता है केवल। All right, Lomas joining us there on the broadcast, getting us those voices of the protesters, in fact, who have taken offense to the foreign minister's comments against the prime minister, and of course have also stated that these are comments which have also somehow turned into a personal in nature, and this is personally insulting to the prime minister as well. Thank you, Lomas, for joining us on the broadcast and getting us those details. Shifting focus now, viewers, to a company helicopter with 3 people, in fact, that had gone down in the Gulf. And the helicopters routinely transport workers to and from the oil platforms. And thankfully, the US Coast Guard rescued these 3 people after the helicopter crashed into the Gulf of Mexico while attempting to land on an oil rig platform as well. Here's all that you need to know on the same. US Coast Guard rescued 3 people. The 3 people were rescued after the helicopter crashed into the Gulf of Mexico while attempting to land on an oil rig platform. Watch how the Coast Guard comes in rescue after they were informed by a rotorcraft leasing company about the helicopter crash.
According to US Coast Guards, out of the three, one of them had back injuries. They further informed that the three occupants of the helicopter were found on a life raft about 30 miles south of the Louisiana coast in Terrebonne Bay, who were brought back to land. Meanwhile, the FAA and the National Transportation Safety Board will investigate the crash. The NTSB will lead the investigation and provide further updates. Agency report, Republic TV. Slipping into a very short break here now, viewers, getting you details on the other side of how Rahul Gandhi faces massive anger. Rahul says our soldiers are being beaten up by the Chinese troops. Stay tuned to Republic as we'll be back with updates on the other side. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your three favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा. अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है. समझा देते हैं. प्यार से समझाएंगे. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल बोलो जुबान केसरी. बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया. बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है. छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर. जियो मार्ट, हर घर का मार्ट. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है. इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है. अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ. जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं. पेंशन है तो टेंशन नहीं. एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. ये है गेहूं. जब इसमें जुड़ता है रागी, जवार, बाजरा और मेथी तो बनता है हेल्दी मन्ना मल्टी मिलेट आटा. ये है बेहतर आटा. Volkswagen Tygoon, India's safest SUVW. Volkswagen.
Welcome back, viewers. Once again, cutting across live to these images that we are getting in from Dundigal in Hyderabad, where the combined graduation parade, in fact, is being held at the Air Force Academy to mark the successful completion of the pre-commissioning training of the flight cadets of various branches of the Indian Air Forces. ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखूंगा और मैं भारतीय संघ की भारतीय वायुसेना में सेवा के प्रति वचनबद्ध रूप में ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ सेवा करूंगा और जहां भी आदेश किया जाए हवाई, भूमि या समुद्री मार्ग से जाऊंगा और अपनी जान की आखिरी सांस तक भारत के राष्ट्रपति और मेरे ऊपर रखे गए किसी भी अफसर के सभी आदेशों का मानूंगा और उनका पालन करूंगा। And once again, viewers, we see the combined graduation parade visuals, in fact, that are on your screens of the Air Force Academy in Dundigal in Hyderabad, where in fact this entire combined graduation parade was carried out to mark the successful completion of the pre-commissioned training of the flight cadets of various branches of the Indian Air Force. We're slipping into a very short break and we continue to get you these images on the other side. Will smart manufacturing complement traditional manufacturing processes or replace them entirely? India will be able to contribute approximately 5% of the global market in terms of when we talk about additive manufacturing. What kind of opportunities does it hold for the BTech students? Amrita University, I would say, is ideal for students who come into manufacturing, additive manufacturing. To know more, watch Amrita School of Engineering presents Shaping the Future of India at these times only on Republic TV. Life will test you. It will turn your world upside down. Again. And again. And again. The only way to hit back is to stand up. Stand up every time. And say, I'm not done. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। मेरा दोस्त है, वो हर बार मुझे बचा लेता है। घोस्ट को कैसे पता मैं अंधेरे से डरता हूँ? घोस्ट मेरा दोस्त है। मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं। ना आग पकड़े, ना जहरीली गैस छोड़े। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। Hey boss. Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया।
guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. Welcome back, viewers. Once again, cutting across to some breaking updates that we're picking up this time from Telangana, where in fact we have seen in Mancherial where 6 people, including 2 children, have lost their lives unfortunately in a fire accident. And those are the visuals of the fire as well that we're putting out on your screens. And because of this fire, in fact, we are learning the update that 6 people have unfortunately lost their lives. And of course, more shocking details of these 6 people that have lost their lives include 2 children as well that have lost their lives in this fire accident as well. We are waiting to get you the updates as far as the reason for this kind of a fire mishap is also concerned. We'll be getting you all the updates of this fire that had broken out in Mancherial in Telangana. Stepping into a short break now, viewers, getting you updates on the other side of Rahul Gandhi facing massive anger. Rahul says our soldiers are being beaten up by the Chinese troops. Powered by Century Ply, आग से बचाए. ArcelorMittal, Nippon Steel India Limited, smarter steels, brighter futures. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है. समझा देते हैं. प्यार से समझाएंगे. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल, बोलो जुबान केसरी. Mr. Blanc, you're the world's greatest detective, right? In your words, there has been a murder. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. Wow! Well, I'm out of here. Yeah, me too. Lock the doors. Stay in your rooms. Everyone is in danger. Are you calling me dangerous? Well, we'll see. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है. तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है. इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है. अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ.
जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं, एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं, एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Welcome back, viewers. Here's some news in brief from the world of sports. The Indian women team will face the Australian side today at Barburn Stadium, and Harmanpreet Kaur in fact are trailing the 5-match T20I series after losing their last match against the Aussies. But today they are aware that they need to play well to claim this trophy. The SAF U20 Women's Championship 2023 is scheduled to take place from February 3rd to February 9, 2023. The tournament will be played in Dhaka, Bangladesh, and India are slated to be playing against Bhutan, Bangladesh and Nepal in round-robin format before the top two sides of the face each others in the finals. ऑलराउंडर हम भी हैं। और तुम्हारा किचन? कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स, तो कभी पानी। आपकी किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100, टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर। MYK लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसा। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer, that person wins our game. This is truly delightful. There has been a murder. For one person, this is not a game. The killer wouldn't hesitate to kill again. You must be really great at clues. I'm very bad at dumb things. Glass Onion, a Knives Out mystery. उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Why did life test me? Why did it try to crush me, shake me, break me?
Why me? Because it knew if I could take this test, I could take anything and say, that was easy. मजबूती डाली रूट्स में बिखरा सबूत रे दूध से बना दूध रे शुरू हुआ सब दूध से बना दिया अटूट रे बिखरा सबूत रे दूध से बना दूध रे शुरू हुआ सब दूध से शुरू हुआ सब दूध से द्वारा यहाँ पर गुस्सा निकाला The headlines at this hour: Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults Prime Minister Modi. Protests across the country over Bilawal's remark. Death toll in Bihar Hooch tragedy rises to 65, yet CM Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other CMs to attend. Shraddha's killer, Aftab seeks bail. Delhi court to hear Aftab's bail plea. Over 70 missiles fired at Ukraine. The nation faces mega power outage. Welcome to this edition of Live in Breaking. I'm Rukma with you, and in breaking news that's coming in from Bihar. It's related to the terrible Hooch tragedy, which has so far claimed nearly 65 lives. And cases have increased to 65, as we've been telling you. That's the latest death toll as far as latest reports are concerned. Meanwhile, the tragedy has hogged headlines, more so because of the Chief Minister's insensitive remarks in this regard. Speaking exclusively to Republic TV, Chirag Paswan now has launched an attack on Nitish Kumar over the tragedy. He says Nitish must take the onus of these deaths due to spurious liquor. Not to give the compensation to the families of the deceased is wrong. Let's listen in. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और बिहार में जहरीली शराब से जो तांडव मचा है उस पर इनसे बातचीत करेंगे। चिराग जी, ये क्या है? शराब बंदी है बिहार में, लेकिन लगता नहीं है शराब बंदी है और जहरीली शराब से मौत हो रही है। भाई, शराब बंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। हम लोग बोलते तो कहा जाता है कि भैया हम लोग विपक्षी दल के हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, पर आज मुख्यमंत्री जी जवाब दें। मैं तो आज से नहीं, मैं तो पिछले 4 साल से निरंतर इस बात को बोल रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। 2016 में विपक्ष में होने के बावजूद मैंने इनके कानून का समर्थन किया था, पर जिस तरीके से इस कानून की विफलता की वजह से और इस कानून की आड़ में आज आप जाके देख लीजिए भाई, बिहार की जेलों में सिर्फ गरीब परिवार से आने वाले लोग इस शराबबंदी कानून की धाराओं के तहत जेल में बंद हैं सालों साल से, पर आज तक कोई एक गिरोह
जिन्होंने अवैध शराब का निर्माण किया हो या कोई एक तस्कर जो आयात करता हो सीमावर्ती इलाकों से, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री जी तो मानने को कभी तैयार नहीं होते कि भाई बिहार में इस तरीके से शराब बिक रही है, जबकि हकीकत है कि होम डिलीवरी तक बिहार में शराब की हो रही है और ये सबको पता है। पर मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से आंख कान इस पे बंद कर रखे हैं। परिणाम स्वरूप आए दिन बिहार में, मैं इनको मौतें भी नहीं भैया, मैं इनको हत्याएं कहता हूं, क्योंकि अगर आप किसी को जहर दे के मारते हैं तो वो हत्या होती है। और इतनी हत्याओं के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना इसकी समीक्षा करने को तैयार हैं, ना इस बात को सुनने को तैयार हैं। और अहंकार की चरम सीमा देखिए, अहंकार इनका देखिए कि सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। जितने लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं उसको उनको तो संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन देते हैं। भाई अगर एक आम बिहारी को पता है कि फलाना जगह पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है तो क्या स्थानीय प्रशासन को नहीं पता होगा? और अगर स्थानीय प्रशासन उसके बावजूद खामोश है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के गृह मंत्री होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन पे कार्रवाई नहीं कर रहे तो ये संलिप्तता दिखाती है। FIR किस पर होनी चाहिए चिराग जी? क्योंकि छोटे छोटे लोगों पर FIR हो रही है, जिम्मेदार कौन है इन मौतों का? भाई सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। भाई FIR इनके ऊपर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी पे FIR होनी चाहिए। भाई आप गृह मंत्री होने के बावजूद अगर आपके अंतर्गत आने वाला विभाग गृह व्यवस्था अगर नहीं आपसे संभल रही है, भारत का संघीय ढांचा, भारत का संविधान पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट इशू में जोड़ता है। अगर आपसे अगर नहीं संभल रहा लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपसे अपना ही बनाया हुआ कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, तो सीधा जिम्मेदार आप हैं। और इन तमाम हत्याओं का मुकदमा आप ही के ऊपर चलना चाहिए। So Chirag Paswan there speaking exclusively with Republic TV, attacks the Bihar Chief Minister, demands that the Bihar Chief Minister has to take responsibility for the huge death toll that this latest huge tragedy has claimed. The toll has risen to 65 since latest reports came in, and this is the latest tragedy. Spurious liquor has led to the death of 65 people. This is an incident from Saran of Bihar, and in the latest such incident, it has hogged headlines, more so because of the Bihar Chief Minister's insensitive remarks, who made comments such as, well, if you drink, you will die, and has refused to give compensation. And in latest, these are the latest visuals we are getting you about, well, latest reports that we're getting you, latest updates on the huge tragedy in Saran in Bihar. Latest reports suggest that 65 people have succumbed to the attacks that they suffered because of consumption of spurious liquor in Saran in Bihar. Earlier, the Bihar Chief Minister had created a furor with his insensitive remarks when he had said that there would be no compensation for victims of the tragedy. Anup joining us live from Patna. Anup, after those tragic loss of lives, we'd like you to give us an update on that situation. Also, the politics now, because political leaders of all parties are attacking Nitish Kumar. What is Nitish Kumar's reaction? What is his stand? Could you explain to our viewers? रुकमा, मैं आपको बताऊं कि देखिए जो अभी परिस्थितियां हैं वो नीतीश कुमार के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो फिर दूसरी पार्टी, तमाम लोग नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और उनके उस बयान की निंदा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा, जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। आज चिराग पासवान देखिए खुद मशरक जाने वाले हैं, थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत की हमने। और इसके अलावा देखिए सुशील मोदी भी आज मशरक जा सकते हैं, छपरा। इसके अलावा पॉलिटिकली मैं आपको बताऊं तो तमाम तरफ से नीतीश कुमार पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 70 को पार कर गया है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि 30 से 40 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। सियासत पुरजोर हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान को अब लोग उनके अहंकार से जोड़कर देख रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने शराब पी उसने गलती, लेकिन जो लोग मारेगा उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी क्या गलती थी? मुआवजा देना चाहिए था। और FIR अब नीतीश कुमार पर करने की मांग कर रहे हैं। ये शराब से मौतें नहीं है, इसे हत्या से जोड़ा जा रहा है। और आज देखिए, आज इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी होगा।
बीजेपी रोष मार्च निकालने वाली है 3 बजे। उसके अलावा जो रामविलास पासवान की पार्टी रालोचपा है, जो पशुपति पारस की पार्टी है, उनके लोग भी आज विरोध प्रदर्शन 11 बजे करने वाले हैं। यानी सियासत भी इस पर खूब हो रही है और निशाने पर नीतीश कुमार है। रुकमा। Right. Meanwhile, we'd like to know what Nitish Kumar has to say. Has he responded or does he stand firm in his belief? No sympathy for the victims of this particular tragedy. बिल्कुल रुकमा, जाहिर तौर पर जो बयान नीतीश कुमार का breaking update, Anup, that the death toll is risen. That the death toll has risen, Anup. जी देखिए, जो बयान जी 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 बिल्कुल, देखिए जो बयान सामने आ रहा है यही बता रहा है रुकमा कि नीतीश कुमार को कोई गंभीरता नहीं है इस मामले में और संवेदनहीनता दिखा रहे हैं वो, क्योंकि परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। ये बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं और अभी भी वो अपने ईगो पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं वो मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि ये जो शराबबंदी कानून है इसके तहत उन्होंने शराब पी थी, जहरीली शराब, तो ये कानूनन जुर्म है और जुर्म को लेकर वो कैसे मुआवजा देंगे। मुआवजा उन लोगों के लिए नहीं मांगा जा रहा जिन्होंने शराब पी है, उनके परिवार के लिए, उनके व्यवस्थाओं के लिए कि आगे जीवन यापन कैसे होगा, इसके लिए मांगा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया है, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी कहा। यानी सदन के अंदर कह दिया तो ये बातें रिकॉर्ड है। और नीतीश कुमार ये भी जरा समझिए कि वो चाहते हैं कि वो झुके नहीं, हारे नहीं। अगर वो मुआवजे का ऐलान करते हैं तो ये उनके ईगो पर हर्ट करेगा, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो इस पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। रुकमा। Right, and meanwhile, Anup, we are hearing that the death toll in this tragedy, in this latest huge tragedy to grip the state of Bihar, this happened in Saran district. The figure has risen to 70. That's the breaking news, Anup. That's come in now. So it seems the numbers continue to rise. Give us an update on that. How many people, as far as you know, still in hospital? जी वो नाम है जिनके नाम और नंबर, फोन नंबर तक मौजूद है। लेकिन ये आंकड़ा लोग जो वहां के स्थानीय लोग, लोकल्स लोग हैं, वो कह रहे हैं 100 के पार है। और आप जो अपडेट मांग रहे हैं, 30 से 40 लोग अब भी अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज उनका चल रहा है। उनमें से भी कई की हालत गंभीर है। एक और बड़ी बात आपको अपडेट दे दूं रुकमा की जो मौतें सिवान में हुई, बेगूसराय में हुई, उसे लेकर अब लीपा पोती भी चल रही है। हालांकि सिवान में जो मौतें हुई उसे लेकर कहा जा रहा है कि ये मौतें ठंड से हुई है, यह बताया जा रहा है। जबकि बेगूसराय की मौत को कहा जा रहा है कि कोई केमिकल है जिसकी वजह से, जिसके पीने की वजह से ये मौतें हुई। लेकिन 30-40 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती है, इनमें से कईयों की हालत अब भी गंभीर है। तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। रुकमा। Right, the numbers could be increasing. 30 to 40 people still in hospital, and we are also hearing of a number of arrests that have been made in this regard, even as the Bihar Chief Minister remains undaunted in his unsympathetic and insensitive stand, says piyoge to maroge. And it's a comment that has come in for major criticism from almost all political parties in the state, the BJP, and just a short while back, Chirag Paswan of the LJP too, slamming Nitish Kumar for that remark, saying that Nitish Kumar has to take responsibility. And our correspondent Anup there on the scene where it's happening. Anup, when we talk about the arrests, what updates on the investigation? And also Nitish Kumar saying that, you know, piyoge to maroge and no compensation. But this is not the first time that the state government has been called in to take responsibility for such a tragedy. Is it? बिल्कुल ये पहली बार नहीं है रुकमा, इससे पहले भी कई बार मौतें हुई और जहरीली शराब से ही मौतें हुई। ऐसे में सवाल इसीलिए उठ रहा था कि शराबबंदी वाले ड्राई स्टेट बिहार में आखिर ये मौतें शराब से क्यों हो रही है। नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं कि उनके प्रदेश में शराब की बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी भी होती है बाकायदा, और हॉस्पिटल में भी लोग ये कहते हैं कि हम हॉस्पिटल में भी शराब मंगा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, अगर एक्शन की बात करें तो जितना एक्शन इस कांड के बाद हुआ, इतना एक्शन अगर पहले होता रुकमा तो शायद ये जानें बच सकती थी।
200 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हुई है और शराब जो कच्ची स्प्रिट है वो भी बरामद की गई है। एक आदेश ये भी आया हुआ है कि जितनी भी बिहार में थानों में जब्ती हुए स्पिरिट की या फिर शराब की उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन अगर ये आदेश पहले आ जाता रुकमा तो ये मौतें नहीं होती, इतनी फजीयत प्रदेश सरकार की नहीं होती। गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो तस्कर हैं, शराब का धंधा करते हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये पहले होना चाहिए था। पहले एक्शन हो रहा है, जब रिएक्शन हो गया, मौतें हो गई, तब एक्शन हो रहा है रुकमा। ये एक्शन पहले होना चाहिए था। Right, clearly Anup, my colleague there on that story. Many thanks Anup for joining us there and for filling us in with all those latest updates. The death toll in the Hooch tragedy in Saran rising to 70. That's the breaking news at this hour. Meanwhile, Chief Minister Nitish Kumar maintains his stand, says piyoge to maroge, a statement that has come in for immense flack from all his political rivals in the state. Moving on to other news stories now. A series of violent clashes broke out between the ruling YSRCP and the opposition TDP workers in Andhra Pradesh's Palnadu district on Friday late evening. Meanwhile, the TDP has strongly condemned the damage caused to its party office and the vehicles of its leaders in the clashes. Here's more in this report. Notably, what led to the protest between the two is not yet known, but we are trying to fill you in with all the latest updates that we have in this regard. Take a look. Amid ongoing tensions between the ruling and opposition parties in Andhra Pradesh, another fresh violent clash has come to light. A fresh violent clash has been erupted between the TDP and the ruling YSRCP workers. The violent clash occurred in Machrela of Palnadu district of Andhra Pradesh. On camera, watch the leaders came face to face as vehicles were being burnt and stones were also pelted. Notably, the situation got intensified that the police were deployed at the site. Watch how police struggled to maintain law and order situation at the clash site. Several were reportedly injured in the clash. President of the state unit of TDP, Kinjarepu Naidu, strongly condemned the damage caused to the party office amid violence. The leader further called out the ruling YSRCP for not allowing the opposition to protest. He said, and I quote, "Machrela is not anyone's personal property and is not the Jagir of the MLA. Are the opposition parties not eligible to stage protest programs? While fresh clash has been escalated, tensions continue to soar between already rivals TDP and YSRCP in Andhra Pradesh. Bureau Report, Republic TV. And breaking news coming in now. We're getting in information of a mega crackdown on terror funding once again in Jammu and Kashmir. State Investigation Agency, the SIA, we are hearing to attach over a dozen properties of Jamaat-e-Islami. Properties in 4 districts of North Kashmir to be attached. Jamaat properties in Gandarbal, Baramulla, Bandipur and Kupwara to be attached. These properties were made from terror funding. We are trying to get more voices in so that we can understand what this means. But what we're hearing now that over 12 properties under the scanner in Jammu and Kashmir. It's a mega crackdown on terror funding. There have been a series of such crackdowns on terror in the valley, both in Jammu as well as in the Kashmir Valley in the past few months, as we've seen both by the NIA and the SI. And
For all the latest updates and a detailed report on this, we go across to my colleague Gursimran, who's joining us. Gursimran, it's over to you. It's another mega crackdown. But we are believing here that this is the next step in that crackdown, the attaching of properties. Which are these properties? What is the action that you're seeing there? See, around a dozen properties of Jamaat-e-Islami are presently being seized by the State Investigation Agency. We are told that this time the crackdown is in the north of Kashmir. Earlier it was in south of Kashmir, where the properties were attached in the districts of Anantnag and Shopian. There around over 20 properties were seized earlier, and now in the four districts, Bandipora, Baramulla, Ganderbal and Kupwara, the raids they are underway to seize these properties. The orders has been issued by the concerned deputy commissioners, and these properties are proceeds of terrorism. That is, the funding that was sent from across the border, generated locally for the act of terror, was used to build these properties, and now these properties are under scanner. We are told that this is not last in the list, but also many of the districts in the central Kashmir, as well as in the Pir Panjal and Chenab Valley of the Jammu, they are going to be seized very soon by the State Investigating Agency. Meanwhile, are you getting any reactions on this from members of the Jamaat-e-Islami, from anybody, in fact, from locals? Because, well, this is a major step towards breaking this nexus. Yes, see, Jamaat-e-Islami has been banned by the Union Home Ministry in 2019 February, and since then they have been carrying out their acts under the garb of various organizations. The education hands they have made earlier and other properties they are using to carry out the funds of terrorism. So that is something the Jamaat-e-Islami is working upon, but Jamaat-e-Islami has been banned by the union government, but they were trying to carry out the acts using these properties that they have built when they were not banned, and the proceeds of terrorism were used to buy these properties. So it's a major crackdown on terror funding in Jammu and Kashmir. Gursimran, my colleague there from the ground, reporting on this attaching of over 12 properties of the Jamaat-e-Islami. The Jamaat-e-Islami is banned, as Gursimran just informed our viewers, but well, they have been operating in the valley as well as in Jammu under various guises. Let's take a look now at other top stories that we're tracking. The BJP has condemned as highly shameful and derogatory remarks of the Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari against Prime Minister Narendra Modi, and has decided to hold nationwide protests. According to the BJP, the protests will be held in all state capitals across the country. Mormuga, the second of the 4 Visakhapatnam class destroyers to be commissioned into the Indian Navy in the presence of Defence Minister Rajnath Singh on the 18th of December at Mumbai. The ship is designed by Indian Navy's Warship Design Bureau and constructed by Mazgaon Dock Shipbuilders. More than 2,000 security personnel, including 2 additional commissioners and 5 deputy commissioners, will be deployed in Mumbai to keep an eye on the Mahavikas Aghadi protest march against the Eknath Shinde government and the governor of the state, Bhagat Singh Koshyari, over his controversial remark over Chhatrapati Shivaji. The Mumbai police has tightened security arrangements so that no law and order problem arises. Newly elected Himachal Pradesh MLAs are to take oath on the 22nd of December when the 3-day winter session of the State Assembly begins. A notification issued on Friday said this would be the first session of the 14th Vidhan Sabha. According to the notice, Speaker will be elected on the 23rd of December, which will be followed by the Governor's address, a debate on which would be held on the 24th of December, and it would be passed on the same day. Shraddha Walkar murder accused Aftab Poonawalla has moved an application in Delhi Circuit Court seeking bail, which the court is likely to hear today. Poonawalla, who has been arrested based on his confession to killing Walkar and chopping her body in 35 pieces to dispose of, was arrested last month and is lodged in Tihar jail. Union Home Minister Amit Shah will be attending the Eastern Zonal Council meeting scheduled to be held in Kolkata. Shah is slated to meet Chief Ministers of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha and Sikkim and hold discussions on unsettled issues between these 5 states, including those related to boundaries and completion of the Eastern Freight Corridor.
The GST Council in this meeting is expected to decide on a number of issues like decriminalization of offences under the GST law, setting up appellate tribunals and mechanism to curb tax evasion in pan masala and gutka businesses. And breaking news coming in, as we've been telling you, and just a short while back about the latest in the Shraddha Walkar murder case. Breaking news coming in now. Aftab is he's seeking bail, and he has applied in the Circuit Court in New Delhi for bail. And these are the latest updates. Breaking news coming in now regarding the killer Aftab's bail hearing has begun. Of course, we'll have to confirm that, but the news we are getting at this point is that his bail hearing in the Circuit Court has begun. Killer Aftab Amin Poonawala's bail hearing begins. And this is the shocking Shraddha Walkar murder case in which Aftab Amin Poonawala is the main accused. Shraddha's live-in partner, who is accused of having killed her and then chopped her body into 35 pieces and scattered the various body parts across the national capital in various abandoned areas, in Mehrauli in particular. Aftab has confessed. However, police are still piecing together a watertight case so that they can bring Aftab Amin Poonawala, or the killer of Shraddha Walkar, to justice. In a latest update, we are hearing that his Aftab Amin Poonawala's bail hearing has begun in the Saket Court, where he has applied for bail. It remains to be seen whether he will be granted bail. Meanwhile, Shraddha's family members are crying out for justice. Her father, yesterday speaking with Mumbai senior police, had said that they are seeking justice for their daughter, who was killed in the most brutal manner. US Coast Guard rescued 3 people. The 3 people were rescued after the helicopter crashed into the Gulf of Mexico while attempting to land on an oil rig platform. Watch how the Coast Guard comes in rescue after they were informed by Rotorcraft Leasing Company about the helicopter crash. According to US Coast Guards, out of the 3, 1 of them had back injuries. They further informed that the 3 occupants of the helicopter were found on a life raft about 30 miles south of the Louisiana coast in Terrebonne Bay, who were brought back to land. Meanwhile, the FAA and the National Transportation Safety Board will investigate the crash. The NTSB will lead the investigation and provide further updates. Agency report, Republic TV. And time now for a short break here on Live in Breaking. But on the other side, in news that we'll be tracking and bringing to you in terms of updates, protests erupt against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over his remarks, personal remarks against Prime Minister Narendra Modi. $5 lakhs. लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए, लोन सही मिलेगा यहीं. Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us.
अगर मिठाई जंक फूड से है यारी, तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Why did life test me? Why did it try to crush me, shake me, break me? Why me? Because it knew if I could take this test, I could take anything and say, that was easy. जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना। मातृभूमि विनाश के कगार पर खड़ी है। ये घड़ी है करो या मरो की। एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। Top stories at 10:30 viewers. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults the Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark. The death toll in the Bihar Hooch tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meeting. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern. In fact, Shraddha's killer Aftab seeks bail. Delhi court to hear Aftab's bail plea. Over 70 missiles fired at Ukraine. The nation faces mega power outage. And straight away going across to a breaking update that we're picking up on this edition of Live in Breaking, where in fact we are picking up the latest as far as the Hooch tragedy is concerned, where we have seen that unfortunately the death toll in this Hooch tragedy in fact has increased to 70 now. And we had been getting those numbers, viewers, since yesterday of how this entire spurious liquor has led to the death of various people. In fact, now the death toll has risen to 70. And even then, Nitish Kumar had continued to say that there is no sympathy for the people who consume liquor as well. And he had in fact also stated out and said that there will... But as far as the spurious liquor in fact is concerned, that we're showing you the visuals of, and how in fact people have lost their lives, how they had to be rushed to the hospitals as well. The visuals of which we are showing you on your screens right now, where in fact these people who had consumed this spurious liquor had led to various medical conditions as well. And now we are seeing that at least 70 people have lost their lives, even when Nitish Kumar still maintains that there is no sympathy for the people who consume this spurious liquor.
And then viewers, we have been tracking for you the latest as far as the spurious liquor is concerned. In fact, there are various voices that we are also picking out on this as well. There is an exclusive conversation that we have been able to also have with Chirag Paswan. Let's listen into that. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और बिहार में जहरीली शराब से जो तांडव मचा है उस पर इनसे बातचीत करेंगे। चिराग जी, ये क्या है? शराब बंदी है बिहार में, लेकिन लगता नहीं है शराब बंदी है और जहरीली शराब से मौत हो रही है। भाई, शराब बंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। हम लोग बोलते तो कहा जाता है कि भैया हम लोग विपक्षी दल के हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, पर आज मुख्यमंत्री जी जवाब दें। मैं तो आज से नहीं, मैं तो पिछले 4 साल से निरंतर इस बात को बोल रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। 2016 में विपक्ष में होने के बावजूद मैंने इनके कानून का समर्थन किया था, पर जिस तरीके से इस कानून की विफलता की वजह से और इस कानून की आड़ में आज आप जाके देख लीजिए भाई, बिहार की जेलों में सिर्फ गरीब परिवार से आने वाले लोग इस शराबबंदी कानून की धाराओं के तहत जेल में बंद हैं सालों साल से। पर आज तक कोई एक गिरोह जिन्होंने अवैध शराब का निर्माण किया हो या कोई एक तस्कर जो आयात करता हो सीमावर्ती इलाकों से, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री जी तो मानने को कभी तैयार नहीं होते कि भाई बिहार में इस तरीके से शराब बिक रही है, जबकि हकीकत है कि होम डिलीवरी तक बिहार में शराब की हो रही है और ये सबको पता है। पर मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से आंख कान इस पे बंद कर रखे हैं। परिणाम स्वरूप आए दिन बिहार में, मैं इनको मौतें भी नहीं भैया, मैं इनको हत्याएं कहता हूं, क्योंकि अगर आप किसी को जहर दे के मारते हैं तो वो हत्या होती है। और इतनी हत्याओं के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना इसकी समीक्षा करने को तैयार हैं, ना इस बात को सुनने को तैयार हैं। और अहंकार की चरम सीमा देखिए, अहंकार इनका देखिए कि सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। जितने लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं उनको तो संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन देते हैं। भाई, अगर एक आम बिहारी को पता है कि फलाना जगह पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है तो क्या स्थानीय प्रशासन को नहीं पता होगा? और अगर स्थानीय प्रशासन उसके बावजूद खामोश है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के गृह मंत्री होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये संलिप्तता दिखाती है। FIR किस पर होनी चाहिए चिराग जी? क्योंकि छोटे छोटे लोगों पर FIR हो रही है, जिम्मेदार कौन है इन मौतों का? भाई, सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। भाई, FIR इनकी उम्र होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी पे FIR होनी चाहिए। भाई, आप गृह मंत्री होने के बावजूद अगर आपके अंतर्गत आने वाला विभाग, गृह व्यवस्था अगर नहीं आपसे संभल रही है, भारत का संघीय ढांचा, भारत का संविधान पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट इशू में जोड़ता है। अगर आपसे नहीं संभल रहा लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपसे अपना ही बनाया हुआ कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, तो सीधा जिम्मेदार आप हैं। और इन तमाम हत्याओं का मुकदमा आप ही के ऊपर चलना चाहिए। There you have it, viewers. The update as far as the spurious liquor is also concerned, where at least 70 people unfortunately have lost their lives. That's the latest that we're picking up from Bihar. And of course, we have also seen Nitish Kumar time and time again stating that there is no sympathy for the people who consumed the spurious liquor. देखिए, लगातार घटनाएं घट रही है और ये कोई पहली और दूसरी घटना नहीं है। छपरा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मुख्यमंत्री मुआवजा देने के बजाय ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है। पलटी मारने वाला राज नहीं कर सकता है। अब पूरी तरह से फेल कर गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग मर गए और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और लोग डर के मारे दूसरे ज़िले में जाकर अपने शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। और आप दूसरे राज्यों से तुलना कर रहे हैं। क्या दूसरे राज्यों में 4 लाख लोग जेल में बंद हैं? क्या मध्य प्रदेश में या गुजरात में 4 लाख लोग जेल में बंद हैं? क्या आपने 4 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया। 3 लाख से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं और कन्विक्शन कितना हुआ? तो 1% भी लोगों को सज़ा नहीं हो पाई है। तो आपने पूरे बिहार को पुलिस राज में बदल दिया और ये निर्णय आपका व्यक्तिगत निर्णय था। आपने पहले घोषणा की और तब हमने साथ दिया। आज भी हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये घोषणा आपने पहले एक सभा के अंदर घोषणा की और तब उसके बाद आपने हम लोग से समर्थन मांगा। तो हम पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी।
और आप ही बताइए कि आखिर आई शराब कैसे? अरे जो पिएगा मरेगा। अरे जो पीने वाला आदमी है वो उस बेचारे को, जो गरीब आदमी अनपढ़ आदमी है, तो उसको जहरीली शराब कहाँ से आई? तो जहरीली शराब तो आपके शासन के कारण ना आई। अगर चाहे वो बाहर से आई हो, यहाँ लोकल बनी हो, तो आखिर ये शराब के सप्लायर कौन थे? कौन लोग थे जो आपूर्ति कर रहे थे? तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि एक राज्य के अंदर 100 से ज़्यादा लोग मर जाए और मुख्यमंत्री इतनी संवेदनहीनता दर्शाए और वो कहे कि जो पिएगा मरेगा, तो जिएगा, जो पिएगा वो मरेगा, तो जो पलटी मारेगा वो राज करेगा? ये नहीं हो सकता। And viewers, we have seen how there are several political voices coming out and talking about and condemning Nitish Kumar as well, and also supporting the prohibition policy there in Bihar, but also claiming that the implementation needs to be done properly as well. Joining me right now on the broadcast is also our correspondent Anup, who has had that exclusive conversation with Chirag Paswan as well. Anup, tell us more about the kind of, death toll that is increasing. 70 people, unfortunately, have lost their lives, and the political war of words that we are seeing is still continuing. Please tell us about what's really happening in Bihar. देखिए, जो आंकड़े 70 हम बता रहे हैं, आंकड़ा 70 के भी पार चला गया है जो आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों को अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो मौतें हुई हैं, प्रियंका, मैं बताऊं, लगभग 76 के आसपास। जो ये वो नाम, नंबर जिनके हैं, फोन नंबर्स हैं, नाम है, वो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इनमें भी अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये मौतें, जो इनमें से कई मौतें जो सिवान में मौतें हुई, उसे लेकर प्रशासन कह रहा है कि ठंड से मौतें हुई है, ठंड से इनको बताया जा रहा है। बेगूसराय में जो मौत हुई, उसे लेकर कहा जा रहा है कि वो कोई रासायनिक पदार्थ उसने पी लिया था, कोई केमिकल पी लिया था, उससे मौत हुई है, शराब से मौत नहीं हुई। यानी अब जो मौतों का आंकड़ा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और सियासत भी पूरी तरह से हो रही है। देखिए, जो लोग बिहार में थे, बिहार के नेता जो बीजेपी के थे या फिर जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने शुरू से ही नीतीश कुमार को घेरना शुरू किया। और उसके बाद जो लोग दिल्ली में थे, नीतीश कुमार के को लेकर जो दिल्ली में थे, वहां से भी बयानबाजी शुरू हुई। चिराग पासवान से मैंने अभी बातचीत की। चिराग मसरक जा रहे हैं, वहां परिजनों से मिलेंगे और खुद चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि एफआईआर मुख्यमंत्री पर होना चाहिए। ये मौत नहीं है, ये हत्या है और जहर से हत्या हुई है। इसके अलावा सुशील मोदी भी मसरक जाने वाली अभी जानकारी मिल रही है। और बीजेपी इस मामले पर पूरी तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं झुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अपने ईगो पर इस बात को लेकर चल रहे हैं कि वो मुआवजा नहीं देंगे। जो मौतें हुई हैं, वो मौतें इसलिए क्योंकि लोगों ने शराब पी थी, जो कानूनन जुर्म है। और इस पर अब सियासत हो रही है और बीजेपी की कहीं से भी इस मामले पर नीतीश कुमार को छोड़ने के मूड में नहीं है। अभी 12 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, यानी बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब उनको चिराग पासवान का भी साथ मिल रहा है। प्रियंका। Well, definitely, Anup, as you're also pointing out, how Nitish Kumar, in fact, has been coming out and defending this. And we also see him saying, "Piyoge to maroge." Stay on with us, Anup, as we also see various political voices joining us on the broadcast. I have Shehzad Poonawala of the BJP also joining me right now on the broadcast here. Shehzad, if you could speak about the kind of statements that Nitish Kumar has been making, claiming "Piyoge to maroge," and he's also refusing to give any kind of compensation to the people that have lost their lives. 70 people have lost their lives, Shehzad. You know, this is adding salt to the wounds of the victims. It is victim shaming and victim blaming instead of taking accountability. Today, Nitish Raj has become Nasha Raj and Jungle Raj, and therefore, he's saving the culprits and blaming the victims. But what I have also tweeted, if you can see the tweet, is that look at the absolute silence of Tejasvi Yadav. Now, there is a tweet of Tejasvi Yadav dated 31st of March 2021, where he was very vocal about the illicit liquor, huge deaths that took place in Bihar, when 8 people died. Today 70 people have died. ये सन्नाटा क्यों है भाई? ये इतना सन्नाटा कैसे है भाई? तेजस्वी यादव जी से और नीतीश कुमार जी से मैं आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज कौन जिम्मेदार है और कौन ये शराब माफिया को प्रोटेक्शन दे रहा है, संरक्षण दे रहा है? और जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप विक्टिम को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को शराबी कह देते हैं और आपा खो देते हैं और कहते हैं पियोगे तो मरोगे। उनके एक्साइज मिनिस्टर कहते हैं अरे अन्य राज्यों में भी होता है तो बिहार में हो गया तो क्या बड़ी बात है। उनके एक और मंत्री कहते हैं कि पावर बढ़ाओ ताकि शराब से बच सको। इस प्रकार के बेतुके बयान देने वाले और आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से बड़े विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूँ, अब उनका ट्वीट कहाँ है? अब उनकी बातें कहाँ हैं? जरा देखिए, उनका ट्वीट मैंने डाला है और बड़ा सन्नाटा है आज उनके ट्विटर हैंडल पर।
तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि 70 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं बिहार में। कुछ तो बोलिए उप मुख्यमंत्री जी, कुछ तो बोलिए मुख्यमंत्री जी, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी रखिए, कुछ तो जवाबदेही दीजिए। All right, Shehzad Poonawala, thank you for joining us on the broadcast and sharing your perspectives on this big story that we're tracking for you viewers from Bihar. And of course, I want to thank my colleague Anup for bringing us those details of the death toll of the Bihar spurious liquor case. And of course, the updates that we brought to you in as far as this spurious liquor is concerned, where 70 people have lost their lives and the political war of words still continues, viewers, where Nitish Kumar in fact claims that he will not be paying compensation to the people that have lost their lives, and has also said that there is no sympathy for the people that have in fact consumed this spurious liquor, claiming that there is a prohibition in Bihar and that they have done something illegal by consuming this liquor as well. But of course, the BJP hitting out at Nitish Kumar as well and claiming that there needs to be some kind of an investigation as far as the liquor mafia is concerned, and how the liquor mafia in fact is making these innocent people fall prey to spurious liquor as well. And cutting across now, viewers, to some fresh visuals, live visuals in fact coming in from Mumbai, where protests are also being carried out against Bilawal Bhutto for making those kind of statements against the Prime Minister yesterday itself, that we had seen that the BJP had also claimed that they will be carrying out protests across various states at the state capital as well. And one such protest we saw in Jammu, another such protest now coming out from Bombay. We can see the visuals where this protest in fact is being carried out. We can see the posters that are being also kept on display against Bilawal Bhutto, condemning Bilawal Bhutto, shaming Pakistan. These are the kind of posters that we see in the hands of the protesters coming out in large numbers, protesting against the statements that were made by Bilawal Bhutto. My colleague Sandeep is at the ground, on the ground, where this particular protest is also being carried out. Sandeep, tell us more. Pan your cameras, take us through the voices of the people who are carrying out this protest condemning Bilawal Bhutto, Sandeep. See, yes, a massive protest is in fact announced and carried out across the state of Maharashtra, not just in Maharashtra, but it is a nationwide protest. Specifically speaking about Pakistan, now you can see in the visuals, Bilawal Bhutto posters has been raised out. He's been given, he's been given a face of a pig, and in fact slogans and the placards are being raised against Pakistan. Remember the statement given by Bilawal Bhutto yesterday at the UN platform, and after that this protest was taken out. Now it is not just a protest against Bilawal Bhutto, but also against the Maha Vikas Aghadi. Remember the statements that were made by the Shiv Sena leader, Uddhav faction Shiv Sena leader Sushma Andhare, insulting the Hindu gods. And for the same reason, a massive protest has been carried out at Mumbai's Dadar. Will try to speak to few people who have the poster banners of Bilawal Bhutto. बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट आया है उसको लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है? देखिए, उनका जो मौला था वो बोलना था और बहुत बेशर्म था। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता के बारे में उनको बोलना था, उसके लिए हम लोग निषेध कर रहे हैं, उनका पुतला जलाएंगे यहाँ पे। लेकिन बिलावल भुट्टो का आप बैनर लेके आए हैं। बिलावल भुट्टो ने कल स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात का कसाई जो है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त के बाहर था। देखिए, उनको देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उनका जो बोलना है बहुत बेशर्म है। अगर दिला और पेशार रहते तो यहाँ पे हम लोग को चप्पल से मारते। just heard the reaction out here. You just heard the reaction, and my video journalist Neeraj Sharma will show you the visuals. Massive protest has been called out by Bharatiya Janata Party, and in fact, defamatory statements were also given
against the Warkari Samaj, and in fact, for the same reason, the Warkari community people are also here and reciting bhajans to give a message to Mahavikas Aghadi. But remember, this is the crowd. A massive crowd has in fact gathered out here at Dadar to protest against not just against Bilawal Bhutto, but also against Mahavikas Aghadi. Remember, on the other hand, Mahavikas Aghadi is also carrying out protest in the city. But so far, BJP seems into the action, and massive protest is called out at Dadar. In fact, we'll try to speak to few of the leaders. जिस प्रकार का स्टेटमेंट महाविकास आघाड़ी के नेता सुषमा अंधारे हो या संजय राउत हो, कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, महापुरुषों का अपमान है। जो पार्टी शिवसेना के जो स्थापना जिन्होंने की थी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, वो नाम में ही हिंदू सम्राट है। तो आज सोचिए, वो पक्ष के जो कार्यकर्ता है, उनके मन को और बाला साहेब की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। उनके जो स्टेज से जो प्रमुख वक्ता अंधारे बाई को जिया है, जो हिंदू द्वेष नहीं है, आज भी हिंदू द्वेष करती है, आगे भी करेगी। जहाँ पद्धति से वो अपने देव देवताओं के बारे में पहले बोली है, वो देखो, पार्टी बदलने से किसी का विचारधारा नहीं बदलती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब 2 खासदार था, तभी भी हमारा जो विचारधारा थी वही था। आज 303 है, तभी भी वही है। महाविकास आघाड़ी के साथ जाने के बाद शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है, पूरी तरह से छोड़ दी है। जैसे अभी 15-20 दिन पहले ही सामना में उद्धव जी ने बोला था कि आगे आने वाले कॉर्पोरेशन में हम लोग मराठी और मुस्लिम ये गणित को लेके हम लोग जीतेंगे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अगर उनको हिंदुत्व किंवा हिंदुओं के भावना की थोड़ा भी चिंता रहती, आज ये जो औरत को नीच औरत है, जिसको स्टेज पे रहने की उनको ये परमिशन नहीं मिलती। So anger over Sushma Andhare's statement has been, protested, and in fact, for the same reason, a massive protest is called out here at Dadar, and you can see in the visuals. My DJ will show you in the visuals that a massive protest has been called out, and Bilawal Bhutto. Posters has been in fact raised out, has been given an image of a pig. So definitely a massive protest is called, and protest over Bilawal Bhutto's statement, protest over Sushma Andhare's statement, protest over Sanjay Raut's statement, and the rest of the Mahavikas Aghadi leaders' statement. And for the same reason, the protest is carried out here. Life will test you. It will turn your world upside down. Again. And again. And again. The only way to hit back is to stand up. Stand up every time. And say, I'm not done. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं?
वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. Magnificent picture, magnificent sound, magnificent experience. Magnifique. High performance TVs by Aiwa Japan. Now in India. News in brief, viewers. The teacher who attacked class 5 girl with scissor pushed off from the first floor has been suspended with immediate effect. Meanwhile, the Municipal Corporation of Delhi will bear all expenditure on the medical treatment of the student. A combined graduation parade was held at the Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad to mark the successful completion of the pre-commissioning training of the flight cadets of the various branches of the Indian Air Force. Apex child rights body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. According to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. BJYM supporters staged protest against Pakistan Foreign Minister Baliwal Bhutto over his remarks against the Prime Minister Narendra Modi. Effigies were burnt and slogans were raised by angry protesters against Pakistan. Six members of a family were burnt alive after a fire broke out in their house in Telangana's Mancharilya district. A fire brigade team rushed to the spot, but the time that they reached, all the family members, including 2 children, had died. Further investigation is underway. Time now here for a short break, viewers, getting you updates on the other side of the Pakistan Foreign Minister Baliwal Bhutto, in fact, insults Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark. And also getting you updates of how the death toll in Bihar Hooch tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy for the people who consume that liquor. Ladies and gentlemen, you expected the puzzle, but for a law person, this is not a game. Explain it to us, detective. Holy! Everyone is in danger. All right, when's the murder mystery start? Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now.
अब पापा देखिए, आप लोग को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। छोड़ने की बात कौन कर रहा है? अरे यहीं पास में कोई एक घर देख लो। वैसे भी हम कब तक तुम्हें झेलते रहेंगे? सच्चा दोस्त वही जो आपके बारे में सोचे। होम लोन्स फ्रॉम IDBI बैंक। बैंक ऐसा, दोस्त जैसा। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो। एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, NPS में। NPS में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। NPS कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना NPS अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। NPS में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. Was? बॉल। खट्टे मीठे घूट कटक के ले दूध को ठूस। Just let loose. Limonata. Just let loose. It's 11 a.m. and here are the headlines. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar, huge tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy for the people who consume the liquor. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meeting. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend. Shraddha's killer Aftab seeks bail. Aftab's bail plea in the court begins. Over 70 missiles fired at Ukraine. The nation faces mega power outage. And cutting across now, viewers, to some live visuals that we're picking up once again from Mumbai, where the protest, in fact, by the BJP workers, in fact, is still carrying out against Bilawal Bhutto over the kind of statements that he had made against the Prime Minister, and to which the BJP had responded and stated that they will be carrying out these kind of protests from across the country in various state capitals across the states. These kind of protests are seen today, and we had seen those visuals from Jammu also arriving, and now we are looking at those visuals from Mumbai. Let me also bring in my colleague Sandeep, who's right there at the protest site as well. Sandeep, it's over to you. Tell our viewers about the kind of protest that is being carried out there. Speak to some workers to understand how there really is an anger against the kind of statements that Bilawal Bhutto had made against the Prime Minister specifically, and how the workers are also saying that these were personal remarks that were made against the Prime Minister.
See, definitely very low level of statements been given by Pakistan, especially Bilawal Bhutto, and in fact you can see the pictures of Bilawal Bhutto. He has been given an image of a pig, and in fact women are out here. We'll try to get their reaction. बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहीं ना कहीं अपमानजनक बराबर है। देश के हमारे पंतप्रधान मोदी जी सबके लिए लड़ रहे हैं और उनका अपमान हमारा अपमान है, हमारा देश का अपमान है। और जो हमारे हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे रहते तो आज इनके किसी की मजाल नहीं होती थी। आज ये सब एक साथ रहे हैं और हमारा साधु संतों का जो अपमान कर रहे हैं उसके विरोध में So Bharatiya Janata Party is protesting out here, and they have clearly mentioned that they won't tolerate the statement given by in fact Bilawal Bhutto, and you can see heavy crowd, huge crowd is out here, and are in fact protesting against Bilawal Bhutto. Bilawal Bhutto का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट द्वारा किया है। उनकी औकात नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोले, जो पूरे देश में नहीं, भारत देश में नहीं, पूरे इस पे राज करता है। उसकी औकात क्या है जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताए। So you just heard the statement. We'll speak to few more party workers. बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका बयान आया है कि गुजरात का कसाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भारी संख्या में आप लोग उतरे हैं। आज पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे पाकिस्तान के खिलाफ, भुट्टो के खिलाफ एक बड़ा विशाल आंदोलन कर रही है। वो भारत पाकिस्तान को जगाना चाहती है, बताना भी चाहती है पाकिस्तान ऐसी गलतियां न करे, जन जन तक उसके खिलाफ हो जाएं। अभी कुछ लोग उसकी तरफ हैं, ऐसा न हो कि सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएं। You just heard that Pakistan has been left nowhere in the world, and making such statement on the international level, this will corner Pakistan at one end, and in fact you can see heavy protest has been called out here at Dadar, and in fact a massive crowd have gathered out here, and this is not just happening in Mumbai, but nationwide protest has been called by in fact Bharatiya Janata Party, and heavy security is also deployed by Mumbai police to make sure that nothing goes wrong in the city. And in fact there you see my video journalist Neeraj is showing you, there you see the Bilawal Bhutto banners, posters, Bilawal Bhutto's banners, posters is being slapped. His banner posters are being teared out here. He's been slapped. His posters are being slapped by shoes. So definitely this is the kind of anger of Bharatiya Janata Party after Bilawal Bhutto made such a low level of statement against Prime Minister Narendra Modi. Sandeep, stay on with us, and also I implore you to keep panning your cameras, because these are quite dramatic images that we are also seeing from Mumbai, where this protest is also being carried out. I implore you to keep panning your cameras and keep getting us more voices on the ground as far as what do they think of the statements that had been made by the Foreign Minister of Pakistan, and what are their really thoughts of the kind of statements that had been made targeting the Prime Minister as well, Sandeep. Yes, definitely will bring more and more voices. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इतनी घटिया किस्म का स्टेटमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो ने दिया है। आपका क्या सोच है? आज आप भारी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद हसन, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल का वार्ड अध्यक्ष हूँ और वार्ड 206 से मेरा। आप बताएं कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो स्टेटमेंट किया गया है उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
बहुत गलत है हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जो इस देश के लिए किए, भारत के लिए एक भारत एक संविधान, जैसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जो संविधान था उसके खिलाफ में जो संजय राउत ने स्टेटमेंट दिए, उन लोगों को तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और जो पाकिस्तान के मंत्री है, ये सब एक मंत्री गांधी जी के 3 बंदर है, ये गांधी जी के 3 बंदरों को माफ़ी मांगना चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखाना चाहिए हमको। कहीं ना कहीं जो बात कांग्रेस पार्टी कई सालों से कहना चाह रही थी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंत्री ने कही, आपको लगता है ऐसा? कांग्रेस पार्टी जो बात कहना चाहती थी, प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहती थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान के मंत्री का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है? हिडन एजेंडा ही है और ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बुलवाया गया है। आप देखिए हमारे सैनिकों ने कितने मार के भगाया, वीडियो वायरल हो रहा है, फिर भी वो कहते हैं कि हमारे सैनिक मार खाएं। ऐसे तत्ववादी जो कांग्रेसी हैं देश को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। देश को जो नाम मोदी जी का आज इंटरनेशनल लीडरशिप में आ गया है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं, बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक कसाई से कर देना अनुचित है? पाकिस्तान का हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता या बड़ा से बड़ा नेता को कोई पूछता नहीं है, इसलिए उनका पहला टारगेट होता है कि हम कम से कम मोदी जी का नाम लेके मीडिया में चले और लोगों इस तरह के देखें। इनका और कोई वजूद नहीं है, सिर्फ मोदी जी के ऊपर पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मंत्री नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी होंगे तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, ये लोग वहां के चाहते हैं। आप बताएं कि जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है अनुचित है? उचित नहीं, ये एकदम अनुचित है। गधा बेच करके पाकिस्तान में नमक रोटी खाने वाला देश वो इंडिया की तुलना कर रहा है, मीडिया में आने के लिए, देश में आने के लिए हर पूरे विश्व में रो रहा है कि हम कंगाल हो गए हैं, भूखा मर रहे हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान देश की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में बोलता है, देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का। आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, ना कि भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए? पाकिस्तान को अपने पूरे देश के प्रति काम करना चाहिए। इकोनॉमी उनकी, उनको जीडीपी का मुझे लगता है पता ही नहीं होगा विदेश मंत्री को, तो अपनी इकोनॉमी पे काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, ना कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कुछ बोले। So you just heard the reactions, and in fact, I would request my video journalist Neeraj to show you the visuals. The heavy crowd has gathered, in fact, out here at Dadar, and we got several reactions from the Bharatiya Janata Party, workers, and they have mentioned their anger over the statement. And in fact, a few of the workers also mentioned that this is the hidden agenda of Congress Party. The kind of statement that was made by Bilawal Bhutto, they also blame Congress Party for this. They say that this is the statement that Congress Party wanted to give from long time, but it is now Bilawal Bhutto who had given such a low level of statement against the Prime Minister of India. And in fact, this cannot be tolerated, and for the same reason, in fact, the party workers, the BJP workers are in fact protesting. A massive protest has been called out here at Dadar, and they are in a mood to not to tolerate the statement given by the Foreign Minister of Pakistan, Bilawal Bhutto. Yes, Sandeep, their viewers getting us the voices, the latest as far as this entire controversy is concerned, where the Foreign Minister Bilawal Bhutto's statements in fact have been taken offense to, and the BJP had stated that they will be carrying out these kind of protests across the country in all of the states, in the state capital as well. And those are the images that we had just seen from Bombay as well. Cutting across now to another huge development that we are getting as far as the Tawang controversy is also concerned, where the Defence Minister Rajnath Singh in fact has made a huge statement, and he has stated that whether it's Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. Now this of course is a huge statement by the Defence Minister Rajnath Singh, as he is speaking about Tawang, and has also made a reference to the Galwan Valley, and of course has also stated that be it either Galwan or Tawang, that our defence forces have proved their bravery and valour. And we also see how
there were several voices imploring for the government to come out and give a statement on this. And of course, we have also seen how Rahul Gandhi himself had also been dragged in this entire controversy. He himself had also insulted our forces, and now we see that in the latest, as far as the Tawang is concerned, where the Defence Minister Rajnath Singh has come out and made a huge statement in support of the Defence Forces and has stated that then be it Galwan or Tawang, our Defence Forces have proved their bravery and valour time and time again. And of course, viewers, we had seen that undated video that we're also putting out on your screens right now, where we had seen the Indian Jawans really fighting against the enemy army as well. And of course, now we see that Rajnath Singh has also come out and defended and has stood by the troops and has stated that then be it Galwan or then be it Tawang, our forces are standing strong and they in fact fight with bravery and valor as well. We have various voices, viewers, that are coming in on this big story that we're tracking for you. We also have Major Gaurav Arya, who's joining me on the broadcast right now. Major Gaurav Arya, how do you really see Defence Minister Rajnath Singh's statement, where he has now come out and stated that be it Galwan or be it Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour time and time again? No, this is nothing to be stated. We know the defence forces have been proving their valour ever since they were created. So there is, I don't say anything new in the statement or anything fresh that needs to be quoted or needs to be celebrated. That is what the armed forces are there for, and that is what they will do. They will do that 1,000 times over, because that is why they have been created. That is the mindset, that is the professionalism, that is the courage, that is the DNA of the Indian Army and the other armed forces, Navy, Air Force also. So there is nothing surprising. It's a matter of fact statement, and I think people should stop doing politics over it. That's it. But we do see, we do see that there is politics that is being fought over this. We do see how the statements that were coming out from Rahul Gandhi as well. We see the kind of statements that are coming in from the opposition, trying to politicize the entire Tawang incident as well. Speak to us a little bit about that, because as you say that there is no politics to be done over these kind of statements by Rajnath Singh, but the opposition continues to do so. See, the soldier at the border is not interested in what the opposition is saying. He's only interested in where the enemy is and what his senior officer is saying. So it does not impact us at all. That is number one. Number two, all these statements made by politicians, is all for benefit. They hope. All right, Major Gaurav Arya, sorry to cut you short there. I'm only just short of time. We're cutting across to a press conference by Gaurav Bhatia as well. जो जवान पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है, तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और इस मंच से मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो जयचंद हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि
किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है, असंभव है। यह कहने के बाद मैं एक बात पे खासा जोर डालूंगा। जब जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। क्यों आपकी छाती 6 इंच की हो जाती है राहुल गांधी जी, जब देश के नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है? क्या यह पहली बार हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, करारा जवाब हमारी वीर सेना ने दिया। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोली, कोई प्रमाण तो दो सेना, कैसे मान ले? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। यही राहुल गांधी और कांग्रेस बोली, कोई आतंकवादी नहीं मरा है, पेड़ पे कौए बैठे थे वो मरे हैं। और आज फिर से पुनः जब देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया, संख्या में चीनी सैनिक ज्यादा, लेकिन मनोबल हमारी सेना का ऊंचा। बताते हैं 300 के आसपास वो थे, संख्या हमारी कम हो सकती है। दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। गलवान में चीनी सेना ने जब प्रयास किया कि वो भारत की सीमा पे घुसे, नहीं भूलना चाहिए कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान जिन्होंने शहादत दी। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है, सरेंडर मोदी। सुन लो राहुल गांधी, देश भारत के 135 करोड़ नागरिक, भारत की वीर सेना और भारत का प्रधानमंत्री एक हैं और कभी समर्पण नहीं करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के वक्तव्य इसलिए देते हैं कि हमारी वीर सेना का मनोबल टूटे, भारत को नीचा
दिखाने का प्रयास होता है। और ये उनका एक और ट्वीट है। वो कहते हैं, गद्दारों ने भारत माता को चीर कर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। तो जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी जी जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा सके। लेकिन एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का हिस्सा जरूर लेके आया हूं। और क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, यह राहुल गांधी को दिखा के पूछना चाहिए। इसमें 21 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन का कब्जा है। तो ये कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ये कांग्रेस शासन में चीन ने कब्जाई और इसके बाद 5,180 स्क्वायर किलोमीटर और 1963 में कब्जाई गई। कुल मिला के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ये कांग्रेस शासन में गई। लेकिन ये आप भूल गए। दूसरी बात जो आज बार बार उठनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यही सही वक्त है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देश को देना होगा। मेरे हाथ में यह तस्वीर है। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। यह समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह समझौता सार्वजनिक इसलिए नहीं हुआ है, और अगर यह समझौता अभी भी सार्वजनिक नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी देश से गद्दारी कर रही है। राहुल गांधी ने गद्दारी की है और यह प्रतीत हो रहा है कि समझौते में यह स्पष्ट लिखा है, जब जब देश की सेना अपनी वीरता दिखाएगी तो उसका मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता करेंगे। हमारे देश के वीर सैनिक भारत माता की भूमि से बंधे हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस समझौते से बंधी है। और यह भी प्रतीत होता है कि इस समझौते में यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी कभी चीन की निंदा नहीं करेगी, आलोचना करेगी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की, सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बुलाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगेगी, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कौवे मरे हैं कहेगी, लेकिन चीन की निंदा नहीं करेगी। वो वक्तव्य मैं ढूंढता रहा, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कभी चीन की निंदा करी हो, राहुल गांधी ने एक शब्द कहा हो, खड़गे जी ने कभी एक शब्द कहा हो, वो मिल नहीं पाया। लेकिन हां, ये कहते हुए राहुल गांधी को बड़ा गर्व होता है कि समझौता जो मैंने चीन से किया
उसका पालन करते हुए मैंने भारत की वीर सेना के लिए कहा, हमारे जवान पिट रहे हैं। एक बात उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. मजबूती डाली रूट्स में, दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, बना दिया अटूट रे, दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, शुरू हुआ सब दूध से। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। अरे आप इतनी दूर हमारे लिए? आपकी मेहनत कहां से कहां पहुंच रही है। मैं आपके एक साइन के लिए यहाँ नहीं आ सकता? हो गया आपका अकाउंट ओपन। हर बंद राह ओपन हो सकती है, लगता है सिर्फ दिल। धन्यवाद। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता हूं। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। पूछे जाने पर कि भाई चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया एके एंटनी जी द्वारा, द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, undeveloped borders are safer than developed borders. ये इनकी नीति थी कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया? डीएसडीबीओ ब्रिज, दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। आप सब जानते हैं, भारत की वायु सेना को लड़ाकू विमान चाहिए थे। 10 साल सत्ता में ये रहे, राफेल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बिना कमीशन लिए कोई काम करता ही नहीं है। 2013 के अंत में 14 में एके एंटनी जी बोले,
रुपया नहीं है ये इस वित्त वर्ष में। आज जब लड़ाकू विमान राफेल सरहद पर गड़गड़ाता है तो चीन को पता चलता है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। एक इच्छा शक्ति है, एक स्पष्ट नीति। आज चिनूक, अपाचे, ये हेलीकॉप्टर आए हैं। हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। आईएनएस विक्रांत, ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। अपना पराक्रम, अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी है, हर नागरिक खड़ा है। एक बात और स्पष्ट बताना बड़ा आवश्यक है। हमारे सैनिक कांग्रेस की सरकार में मांग करते रहे, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो। और जिन सैनिकों के लिए आज राहुल गांधी ने कहा कि वो पिट गए हैं, हमारी वीर सेना वो सेना है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट आपने नहीं दी, लेकिन वीवीआईपी चॉपर आप अपने लिए ला रहे थे। और वो सैनिक कहता था, भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, आप बुलेट प्रूफ जैकेट दें या ना दें। और आज ये गर्व की बात है, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट जो कांग्रेस के समय में हमारा सैनिक मांगता रहा और नहीं आई, क्योंकि इनकी प्राथमिकता वीवीआईपी चॉपर थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं सैनिकों के लिए। आज वो बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई है। यह सोच का फर्क है। आपके समक्ष ये बात जो रखी है, तथ्यों के आधार पे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और तस्वीर दिखा के मैंने रखी। और इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि हर भारतीय नागरिक का खून खौलता है जब इस तरह के वक्तव्य राहुल गांधी द्वारा दिए जाते हैं। यह मांग इस मंच से हम लोग करते हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम यह पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक मां पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष आप हैं। भारत की विपक्षी पार्टी आप हैं। आपकी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को आप पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते? इस बयान के लिए जो भारत को नीचा दिखाता है, जो हमारी सेना का मनोबल तोड़ता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि यह राहुल गांधी का केवल बयान नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। और कांग्रेस पार्टी, हम सब जानते हैं, आज एक राजनीतिक दल कम है और भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा ज्यादा है।
ये कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। एक एक करके प्लीज। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट एक बात कर दूं, भारत की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट देती है। जो उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाएगी। और भारत की सेना पूरे विश्व में सबसे वीर सेना है। एक मजबूत नेतृत्व, एक वीर सेना यह सुनिश्चित करती है कि भारत को किसी से कभी कोई खतरा ना हो। लेकिन डोकलाम की क्योंकि आपने बात करी, मैं इतना जरूर कहूंगा, डोकलाम में भी जब भारत की सेना मजबूती से करारा जवाब दे रही थी चीनी सेना को, तब हक्का नूडल्स कौन खा रहा था? टेंट के नीचे छुप छुप के। सब जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा यह राजनीतिक दल कम है, भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा ज्यादा है। आत्मचिंतन की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। अभी आपने कहा कि खड़गे जी राहुल गांधी को पार्टी से निकाले, लेकिन खड़गे जी तो इनके बयान से सहमत दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने उसको और आगे बढ़ा दिया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सेना के लिए इतना कुछ किया है तो पार्लियामेंट में डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? चाइना पे चर्चा कब करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, ऐसा है कि भारत के नागरिकों को भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री पे पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 1,35,00,000 रुपए जिस पार्टी ने रिश्वत ली हो, जिसने एक MOU पार्टी टू पार्टी साइन किया हो, ना वो अपने प्रधानमंत्री पर, ना देश की जनता पर और ना वीर सेना पर भरोसा करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. मजबूती डाली रूट्स में दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, बना दिया अटूट रे, दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, शुरू हुआ सब दूध से। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। जाग उठा
एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायुद्ध। भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक अध्याय, एक संग्राम, और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। Thank you for staying tuned. And amid the BJP escalating that attack against Rahul Gandhi, Defence Minister Rajnath Singh has made a big statement. He said whether it is Galwan or it is Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. Listen into that statement in detail. विरासत को सुरक्षित कल पे हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना यह कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। यह तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई अब रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट्स थे जो पुराने थे, जिनका की कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया है। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। With that, it's time for us to slip into a short commercial break. On the other side, Home Minister Amit Shah is in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers are also to be in attendance. We'll get you details after this short breather. Stay with us. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी,
तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Beto's diabetes care program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Hey boss, Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया। Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया। मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं। Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया। There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. ये है गेहूं। जब इसमें जुड़ता है रागी, जवार, बाजरा और मेथी तो बनता है हेल्दी मन्ना मल्टी मिलेट आटा। ये है बेहतर आटा। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. The teacher who attacked a 5th class girl with scissor and pushed off from the first floor has been suspended with immediate effect. Meanwhile, MCD will bear all the expenditure on the medical treatment of the student. A combined graduation parade was held at the Air Force Academy in Dundigal in Hyderabad to mark the successful completion of pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. Now, according to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites with customers alleging that they were exploited and deceived. We are stepping into a very short commercial break. On the other side, we are keeping a close eye on Amit Shah's visit to West Bengal. He is there for the Eastern Zonal Council meeting, where several chief ministers are present.
5 lakhs. लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। लोन सही मिलेगा यहीं। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना। मातृभूमि विनाश के कगार पर खड़ी है। ये घड़ी है करो या मरो की। एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। देख सकते हैं आप, पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पर बिलावल भुट्टो का यहाँ पर, और साथ ही पाकिस्तानी झंडे को भी यहाँ पे रखा गया, उसको भी जलाया जा रहा है। जो यहाँ पे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइव तस्वीरें, यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के तमाम। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और भी कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं बयान को लेकर के। हाय 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 हाय। देखिए, बिलावल भुट्टो का पुतला लाया गया, उसको भी जलाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों में काफी रोष है, जो कार्यकर्ता हैं काफी रोष में है। पूरे देश में बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यह जम्मू की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश बिलावल भुट्टो के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हाय 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 पाकिस्तान। देखिए, बौखला गया है पाकिस्तान, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं बौखला गया पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं डर है उसे कि जिस तरीके से चाइना
कुछ पैसे बोरो करने थे। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। A movement transforming millions of lives in rural Maharashtra. An initiative empowering communities to transform their own lives. A journey that is changing the face of rural India. A holistic area where we want to make impact across everything that affects people's life, with the holy grail being livelihood to sort of empower them. Catch the stories of aspiration on Swadesh Foundation's Swa Se Bane Desh at these times only on Republic TV. बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer, that person wins our game. This is truly delightful. Holy There has been a murder. For one person, this is not a game. The killer wouldn't hesitate to kill again. You must be really great at clues. I'm very bad at dumb things. Glass Onion, a Knives Out mystery. Did you see the Chinese soldiers running away? Did you see the look of fear and confusion in their faces when they were confronted by Indian Army soldiers? When the Indian Army soldiers went on an attack, they ran away. This is what Chinese courage looks like. They run away when confronted by a more aggressive and superior force. Next time when the Chinese come, we must make sure none of them go back alive. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Industry leaders, the policy forces, he says, be it Galwan or Tawang, forces proved valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologize. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults the Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilal's remark across the country. Death toll in the Bihar Hooch tragedy rises to 70, yet the Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend. Thank you for staying with Republic viewers. Straight away cutting across to the breaking updates that we're picking up. Now this time the protest visuals that we have been seeing coming in
from across the country, the protest, in fact, that was being carried out against Bhutto, the foreign minister of Pakistan, and how the BJP, in fact, had come out and stated that these are personal remarks that are being made against the Prime Minister, and of course claiming that this is something that they have taken offense to, and that there will be massive protests across the country through the day in various capitals of the states that will be carried out. And one such protest is what we're looking at right now. Viewers, these are images coming in from Jammu, where we are seeing that the protesters, in fact, are continuing their protest with burning the effigies, marching around with the posters as well that have been made, condemning Pakistan, condemning the foreign minister, shaming Pakistan as well, claiming that the Pakistan, in fact, needs to introspect when it comes to the kind of terrorist activities that it procreates, but not just target the Prime Minister and personally target the Prime Minister as well, is something that the protesters had been stating. Viewers, our correspondents have been on the ground getting you these images and voices from across the protest across the country as well. Let's take a look at this one report filed by my colleague Lomas there at the protest site. मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जम्मू में मौजूद हूं और जम्मू में आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कर्मी हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा यहाँ पर गुस्सा निकाला जा रहा है। साफ तौर पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो बिलावल भुट्टो ने बातें कही है वो आपत्तिजनक है और वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको यहाँ पे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर रोज देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना? पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान, उसका बिलावल भुट्टो जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ओछी बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। आज लानत भेजते हैं उस बिलावल भुट्टो को हम इस प्रदर्शन के माध्यम से। पाकिस्तान बौखला गया है जिस तरीके से बयानबाजी उसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के कल जो फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान किया है, तो मुझे लगता है कि ये कंडेम करने के लायक है, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद अपने गिरेबान में झांके अगर, क्योंकि वो एक आतंकवादी देश और पूरे वर्ल्ड ने उनका बॉयकॉट किया है। तो मुझे लगता है कि आज जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि राहुल गांधी ने भी वही स्टेटमेंट दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है वो राहुल गांधी के साथ कोई ऐसी सेटिंग थी कि जो स्टेटमेंट हम पाकिस्तान से देंगे और आपने यहाँ हिंदुस्तान से देना है। आज हम चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो देश के अंदर जो जयचंद है, हम लोगों को उनसे भी मुकाबला करना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान चाहे जितना मर्जी कोई बोले, लेकिन पाकिस्तान कभी हमारा सखा जो है वो नहीं हो सकता। जो मोदी जी हैं वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश की जनता ने उनको जो है वो वोट देकर जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के जो है वो विशेष नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी तो क्या आम लोग भी नहीं सहेंगे। आपने देखा गुजरात के चुनाव में जिन्होंने मोदी जी का अपमान किया था उनका सफाया कर दिया गया वहां के लोगों द्वारा। तो मोदी जी हमारे सिर के ताज हैं, जो उनके खिलाफ बात करेगा हम सड़कों पर भी आएंगे और जरूरत पड़ी तो इसके साथ हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से चीनी सैनिकों को खदेड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला गया है। उस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का वो छवि बिगाड़ना चाहता है। देखिए, मोदी जी की छवि आपने देखा पूरी दुनिया में, वो विश्व के नेताओं में जो है वो आते हैं, पूरी दुनिया में उनका एक मान और उनका सम्मान है, और मोदी जी के खिलाफ जो भी बात करता है उसके खिलाफ जनता हो जाती है। और आज हम देख रहे थे कि चाइना के साथ 1962 की, जब से 1965 की वार हो, चाहे 62 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, उसके बाद आज इस देश ने जो है वो सीमा पर कितना काम किया है, कितनी हजारों किलोमीटर मोदी जी ने 2014 के बाद सड़कें बनाई हैं। आज हमारा अमेरिका के साथ जो है वो सैन्य अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में अभी थोड़े दिन पहले हुआ। तो चाइना बुखला गया है हिंदुस्तान की ताकत को देखकर, हिंदुस्तान की शक्ति को देखकर, और आज ये हालात हुए हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर देश को जो है वो खराब कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पे पुतला भी जलाया गया और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया है। बिल्कुल आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो रोष है पूरे देश में देखा जा रहा है।
Now, viewers, we have been seeing at the images of protest across the country by the BJP and various civilians as well who are carrying out this protest. Another such report filed by my colleague Lomas there in Jammu, where the Dokra protest, in fact, had also been carried out. Let's take a look. अरे बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये संधि, ये तुम्हारा न्याजी, घुटने टेकना, और उसके बाद में हमारा जनरल अरोड़ा घुटने टेक करके साइन करवाए। अरे ये न्याजी की बंदूक अभी हमारे पास रहन रखी हुई है, और तुम हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री को कसाई करने का प्रयास कर रहे हो। 93,000 कैदी हमने पकड़े, 200 पैटर्न टैंक तुम्हारे उड़ा दिए। तुम्हारी औकात क्या है? हमारी देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया, और अब हम करेंगे। अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। चाइना को जिस तरीके से खदेड़ा भारतीय सेना ने, उससे बौखला गया है पाकिस्तान। चाइना को खदेड़ने के बाद, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की अम्मा है, सांप पालने वाले को सांप ही डसेंगे। वो ये विचार करके चल रहा है कि सांप उसको डसने वाले नहीं, जो सांप को दूध पिला रहा है वही उसको डस रहे हैं। जो लाडेन की हालत हुई बाकी सबकी होने वाली है, इंतजार कर। ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, इसको हम हथियाने वाले हैं और पाकिस्तान को दो फाड़ करने वाले हैं। ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कसाई कहने वाला, अरे तुम्हारी औकात क्या है? 100 रुपए की एक रोटी तुम्हारे वहाँ बिक रही है। तूने जितना ब्याज लिया है उस पर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के ऊपर भी देने के लिए फिर ब्याज लेता है। तुम्हारी औकात नहीं है। पाकिस्तान इस तरीके बयान दे रहा है, आपके हाथ में बिलावल भुट्टो की तस्वीर है और लगातार इसको लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अब कुछ ना कुछ हाल होना चाहिए। अरे एक ही बड़ी स्पष्ट शब्द है जी, एक ही बात। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पूरा देश रोष में है, पूरा देश गुस्से में है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान माफी मांगे, पीएम मोदी से, भारत से माफी मांगे। हम दूसरे भी जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम जानने की बात जानेंगे। बिलावल भुट्टो बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ, किस तरीके से? देखिए, मानसिकता खराब हो चुकी है ना। 34 साल के लड़के को आपने वहाँ यूनाइटेड नेशन में भेज दिया रिप्रेजेंट करने को। एक ऐसा लड़का जिसे राजनीति जो है कटोरे में परोस करके दी गई थी। अरे वहां पर पाकिस्तान गया है 34 साल के लड़के के माध्यम से भीख मांगने। वो भीख मांगे, अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। और तुम एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में वक्तव्य दे रहे हो जो जमीनी स्तर से चुन करके आया, 2 बार आया, तीसरी बार भी आने वाला है। और एक बात याद रखना, तुम हमला करते थे, तुम्हें उसका जवाब दिया जाता था। ऐसा ना हो इस प्रकार का वक्तव्य जो है वो तुम्हें इस दुनिया के मैप से तबाह करके खत्म करके रख दे। And there you have it, viewers. Multiple images coming in from multiple cities across the country. One from Mumbai, Pune, and of course we have also gotten those visuals from Jammu as well. We had been showing you those reports from Jammu. And we see the kind of anger on the streets in the protesters, in the party member workers who have been on the streets carrying out this protest through the day in various states of the country, in various state capitals, is where they had declared they will be carrying out these protests, images of which are on your screens from Mumbai, Pune and Jammu. And of course, we are seeing how the BJP cadre has taken offense to the kind of statements that had been made by Bilawal Bhutto. And of course, we had seen the kind of statements from the Foreign Minister S. Jaishankar himself, who had also come out and condemned these statements, had said that you are not fooling anybody and that Pakistan, in fact, is the epicenter of terrorism. Cutting across now, viewers, to some breaking updates that we are picking up from the Delhi court, where in fact the Delhi court has reserved the order in the cattle smuggling case that had been going on. And we are also getting you updates that the court in fact is set to pronounce the order on Monday as well. So that is the latest as far as the Delhi court is concerned. And we see how the cattle smuggling case had been going on, and the Enforcement Directorate in fact had also presented their arguments before the court and had also looked into several leads as far as the Enforcement Directorate case is also concerned.
including Anuprata Mondal. In fact, at the kind of investigation that had also created a lot of controversy around Anuprata Mondal, around the TMC, around the West Bengal government machinery as well. And of course, now we see that the cattle smuggling case is going to be heard now on Monday, where the order will also be pronounced by the Delhi court. Mayuk, my colleague, is also joining us right now on the broadcast. Mayuk, please tell us more about the kind of hearing that has just culminated in the Delhi court, where they have said that the order has been reserved for Monday, Mayuk. Well, absolutely, yes. The order regarding Anuprata Mondal's going to Tihar jail has been reserved. ED wants Anuprata Mondal to be taken to Tihar jail because of the fact that Anuprata Mondal is an influential person, and in some way or the other, Anuprata Mondal or his friends and acquaintances may use influence to create some kind of trouble in West Bengal. Today, in Rao's Avenue Court, her hearing was on one hand, Kapil Sibal was the lawyer of Anuprata Mondal, and ED has time and again said that Anuprata Mondal's presence is required for the probe to continue in Delhi, and this is the sole reason why they want Anuprata Mondal to be taken to their custody in Delhi in Tihar jail. On the other hand, we have seen that Kapil Sibal said that this is not the right way of taking someone into custody when he is already serving the jail term in different cases in Bengal. That also includes case of a central agency like CBI. On the other hand, ED said that police can require the custody for investigation, and in this case, court has to issue a production warrant. And here comes the part where the court said that the court listened to both of the sides and then said that they are going to reserve the order for today. Tomorrow is a Sunday, and they are going to pronounce the order on Monday. So on Monday, we can clearly know whether Anuprata Mondal is coming from Asansol to Delhi, or Anuprata Mondal is going to stay in Asansol jail only in West Bengal. And Mayuk, stay on with us because we also see that during the course of the investigation done by the Enforcement Directorate, there were several leads that had also come to light, and those have also been presented before the court as well. The arguments that had been presented before the court. Take our viewers through the overview of this entire cattle smuggling case, the order of which is now going to be coming out on Monday, Mayuk. So basically, for our viewers to understand, Anuprata Mondal, one of the strongmen of Trinamool Congress, he's a strongman from Birbhum in West Bengal and close to Mamata Banerjee. He is accused in cattle as well as in different other cases that involves coal smuggling and most importantly, stone smuggling in West Bengal. So here, Anuprata Mondal has been framed in cattle smuggling charges, and he, the Central Investigating Agency, CBI, has clearly said that Anuprata Mondal is one of the omnipotent facilitator of this entire racket who deals with cattle smuggling in West Bengal and Jharkhand. And this way, the whole network has been controlled by Anuprata Mondal. So they have taken Anuprata Mondal in their custody earlier. And right now, Anuprata Mondal is in Asansol court. Earlier also, Anuprata Mondal filed bail petition, and the Kapil Sibal was there on behalf of Anuprata Mondal as the lawyer, defending Anuprata Mondal and seeking plea of bail petition. But in Calcutta High Court as well as in other courts, Anuprata Mondal's bail plea was rejected on the grounds of him being an influential person, and several times it has been mentioned in court and outside court also that Anuprata Mondal has also been charged of threatening lawyers, threatening even the judge of a lower court, and most importantly, several other cases that includes cases of post-poll violation, cases of murder charges are there against Anuprata Mondal. So Anuprata Mondal is a strong man, and ED right now has appealed to Rao's Avenue Court after the Delhi High Court said that Rao's Avenue Court to take up this matter and they are not going to interfere in this matter. And then Rao's Avenue Court is now hearing the matter where ED is pleading to take the case of Anuprata Mondal and to question him in their custody in Delhi, and also to keep Anuprata Mondal in Tihar jail and not in any of the jails in West Bengal.
All right, Mayuk Ranjan Ghosh, our senior editor of the sister channel Republic Bangla, in fact, with those details, breaking down the updates as far as the arguments inside of the court are concerned. The case so far, for your understanding as well, and of course, we are going to be tracking Monday as far as this court order is concerned. That will be coming out on Monday itself, and we will see how the court's order will be either more trouble for Anubrata Mandal or not, because we have seen very high-profile leaders of West Bengal, in fact, who have also been summoned by the Enforcement Directorate during the course of the investigation, and that included names like Abhishek Banerjee, his wife, his sister-in-law, and in fact, we had also seen how the TMC leaders had disregarded this entire investigation and had said that this is nothing except political vendetta that is being carried out by the union government. But of course, we have seen during the course of the arguments before the court of law, where pieces of evidences in fact had been presented against Anubrata Mandal as well. And of course, all eyes on Monday when the court order will be dictated. And cutting across now to some more breaking updates that we're picking up for you viewers. Union Home Minister Amit Shah has chaired the 30th Southern Zonal Council meeting, and the Union Home Minister, in fact, in his opening address, extended Onam greetings to the people of Kerala and the abode of natural beauty, and said that Onam is a major festival not only in Kerala but in the Indian culture. Now, in the 30th meeting of the Southern Zonal Council held in Thiruvananthapuram, today, in fact, the 26 issues were discussed, 9 issues were resolved, 17 issues were reserved for further consideration, out of which 9 issues were related to the reorganization of Andhra Pradesh, is something that was said by Amit Shah himself. So those are the meetings, in fact, that we had been tracking for you. The 30th Southern Zonal Council meeting that had been chaired by the Union Home Minister Amit Shah. Let me also go across to our correspondents on the ground. Bhaskar Basu, in fact, is also joining me on the broadcast right now. Bhaskar, tell us more about this Southern Zonal Council meeting that had been chaired by Amit Shah. What really was on the agenda? What has been achieved over discussions? Because he's also stated that one of the issues was the reorganization of Andhra Pradesh as well. What were some of the key highlights of this meeting, Bhaskar? All right, Bhaskar, if you can hear me, speak to us a little bit about the Southern Zonal Council meeting that had in fact been chaired by the Union Home Minister Amit Shah, and the issues that had been resolved. Speak to us the highlights of the Southern Zonal Council meeting that had been chaired today. All right, we'll connect that audio line with Bhaskar in just a bit. But these are the details as far as the Southern Zonal Council meeting is concerned now, viewers, where the Union Home Minister Amit Shah, in fact, had chaired this meeting. And post the meeting, in fact, has also stated that there are various issues that have been resolved. At least 26 issues that had been discussed in this Southern Zonal Council meeting, out of which 9 issues, in fact, had been resolved and 17 issues were reserved for further consideration. And out of that, 9 issues were related to the reorganization of Andhra Pradesh as well, that had been conveyed by the Union Home Minister Amit Shah himself as far as this particular meeting is concerned. And this is, of course, to reiterate, the 30th Southern Zonal Council meeting chaired by the Union Home Minister Amit Shah. And Bhaskar Basu, I believe, is back with us on the broadcast. Bhaskar, if you can hear me now, speak to us a little bit about the meeting that had been chaired by Amit Shah, the kind of agendas that had been discussed on it, and the kind of issues that have already been resolved in this particular meeting, Bhaskar. Well, Priyanka, and also on the other hand, another meeting is going on in West Bengal, in Nabanno, the state administrative headquarters in Nabanno, and I would like to show you some visuals
that the 25th meeting of the Eastern General Council is now going on, where the Union Home Minister Amit Shah is now chairing the meeting, along with the Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, and other two ministers from Bihar. And now also, this is also a very important meeting for the eastern states. And as we know, the BSF issue may be discussed again in this meeting with Amit Shah. And as we know, the Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and her government already questioned the issue on BSF, where the BSF area had been increased, and now also there is a possibility, and there is also another possibility that Amit Shah and Mamata Banerjee will meet separately after this Eastern General Council meeting, and various issues can be discussed. As we are getting from the sources that Mamata Banerjee may ask again Amit Shah about the central agencies, and on the other hand, Amit Shah may question Mamata Banerjee, the Chief Minister and also the Home Minister of West Bengal, about the law and order situation in West Bengal. Because as we know, various BJP leaders questioned the role of police in West Bengal in different cases. There had been bomb blasts, there had been the huge recovery of arms ahead of the Panchayat election. And so Amit Shah, the Union Home Minister, may ask Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, about the law and order situation ahead of this Panchayat election. Back to you, Priyanka. Right. And that, of course, Bhaskar, what you're telling us becomes extremely important about this meeting, since they are also telling us that there will be a one-on-one meeting with Amit Shah and Mamata Banerjee as well. All eyes on that, and we trust you to keep us ahead on the updates that we get from these meetings as well. For the moment, thank you for joining us on the broadcast. And here's some news in brief. The teacher who attacked the class 5 girl with scissor and pushed her off from the first floor has been suspended with immediate effect. Meanwhile, Municipal Corporation of Delhi will bear all expenditure on the medical treatment of the student. A combined graduation parade was held at the Air Force Academy, Dundigarh, Hyderabad, to mark the successful completion of the pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned the EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure the parents and children to buy their courses. According to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. BJYM supporters staged protest against Pakistan Foreign Minister Balewal Bhutto over his remark against Prime Minister Narendra Modi. Effigies were burned and slogans were raised by angry protesters against Pakistan. Six members of a family were burned alive after a fire broke out in their house in Telangana district. A fire brigade team rushed to the spot, but the time that they reached, the family members, including two children, had died, and further investigation is underway. Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, Defence Minister Rajnath Singh applauds the forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces proved valour. And BJP wraps up the attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologise for their comments. Getting you all the updates on the other side. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो
Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा-थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Volkswagen Tygoon, India's safest SUVW. Volkswagen. ऑलराउंडर हम भी हैं। और तुम्हारा किचन? कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स, तो कभी पानी। आपके किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100, टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर। MYK लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसा। चाहे गलवान हो तो तवांग। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Defense Minister Rajnath Singh applauds the forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces prove valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologize. जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults the Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar, huge tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend.
And cutting across straight to viewers to another breaking update that we are picking up from the Defence Minister Rajnath Singh, who has now made a huge statement, and he has stated that whether then be it Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. Now this is a huge statement by the Defence Minister Rajnath Singh addressing the entire incident in Tawang as well, and we had seen various voices from the opposition coming out and condemning this entire incident as well, including Rahul Gandhi, to which we see that Gaurav Bhatia, in fact, in that press conference, had also stated that he needs to come out and apologize. And the backdrop of this entire controversy, now we see that Defence Minister Rajnath Singh has made a huge statement, and he has stated that whether then it be Galwan or then be it Tawang, our defence forces have proved that they are brave and they are working with their bravery and valour, is something that Rajnath Singh has now stated about our defence forces. And of course, we had seen how the Congress leaders, including Rahul Gandhi, had stated that this is in fact had insulted the security forces, and now we are seeing post the undated video that is on your screens right now. We have seen that the opposition leaders had been making various statements insulting our security forces, and to this this is a response of sort that we also see from Defence Minister Rajnath Singh, who has made a huge statements in support of our defence forces. And then he had also stated and reminded the people of the country as well, then that be it Galwan or then be it Tawang, what has really happened in Tawang. The video, in fact, on your screens is from Tawang, the undated visual that had been making the rounds as well. And our defence forces have proved that they work with bravery and valour, is something that Rajnath Singh has come out in defence of our forces. रखना ये हमारा संकल्प है, हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना ये कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट्स थे जो पुराने थे, जिनका कि कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इस समय सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है।
And there you have it, viewers. We just listened in to what the Defence Minister Rajnath Singh also had to say about the people, in fact, who have been insulting our forces, and has said, in fact, giving out a big message to the people of the country, claiming that be it Galwan or be it Tawang, our defence forces have proved that they give the message of defeat to the enemy country. And now we also have Colonel Rohit Dev, who is also joining us on the broadcast. Colonel Rohit Dev, if I could come to you over the statements that we just heard in from the Defence Minister Rajnath Singh, who has stated that they are, of course, standing by their forces, by our forces, and that then be it Galwan or be it Tawang, our defence forces have proved that they work with bravery and with valour. And do you also see this as a response to various leaders who have been coming out and insulting our forces at a time like this, sir? See, I quite agree with what Shri Rajnath Singh has just spoken publicly. And it's gracious of a defence minister of our country to laud the sacrifices and the commitment of the forces. And that's how it's supposed to be, and that's how it's supposed to be in any country of any stature. However, I'm deeply pained and I'm quite appalled at the conduct of people, and I don't know why people don't take names. I will take a name today because I generally don't take names. A person called Rahul Gandhi, who was cheekily saying in some press conference last afternoon or sometime that हमारे जवानों को पीट रहे हैं, if I heard it correctly. I mean, who's this man? And does he have a job to ridicule India? Does he get paid for it? What is his commitment to the country? He's been on the Parliamentary Committee for Defence Affairs for the longest time and done nothing. He has been in the Parliament and trying to do Bharat Jodo Todo, whatever he's doing. But I don't like such people. These kind of people are creating an ilk around them who are detrimental to the national security. They are detrimental to the national interest. Which defense minister of which developed country or a meaningful army is the whole goes on record publicly to the masses over a media channel to tell them what they are doing diplomatically, economically or militarily against or for any nation across the world. Nobody does that. So what are they saying? Too many TV debates have happened in the last 4 or 5 days post that video of the last year. And I'm quite appalled at these people. You want to do politics by all means, but you want to politicize the efforts and trivialize the efforts of the armed forces. I mean, you're a junkie. I mean, I have no other words. This is a very mild word I can use as a junkie because I want to be absolutely clear to these people that just because you adorn the political mantle in this country, you don't have the bloody right to ridicule the forces. And you can be anybody. You can have any money in your pocket. Right. You can have any fancy. You can have any power. But if you ridicule the sacrifices of the soldiers and the pain their families go through beyond that, and you who have done nothing for galvanizing the forces in terms of the accretion or wherewithal, their military equipment for the last 30, 40 years, you have the bloody gall to come and speak publicly about people getting hit by the Chinese. You don't even know that unarmed combat is a form of an art of tactical warfare. You have signed agreements. You want the army to escalate it to fire a missile tomorrow morning? Are you so foolish and naive? You don't know as a politician what to say, what not to say? And then these are the people being prompted by the media of the world. Colonel Rohit Dev, I request you to stay on with us and hold on to your thoughts. Since we also have various other voices also joining us, we have Brigadier Hemant Mahajan, who's also joining me on the broadcast right now. Brigadier Hemant Mahajan, we see, the anger with which these kind of insulting remarks from leaders like Rahul Gandhi are being met. And we just saw the defense minister also coming out and stating and reiterating the bravery and the valor of our forces. And isn't it also a little sad that the defense minister has to come out and reiterate something that we all as Indians also know? How do you see this statement coming in from the defense minister? What we have to understand is that there are some politicians and some in the media are of the view that Indian Army was at the receiving end of it because they could not use their weapons. Now, what you have to understand is the Peace and Tranquility Agreement which was signed between 2001 to 2004, and 4 such agreements were signed, if I remember the number clearly. And it was decided that no weapon will be used on the border to resolve any issue. So government which was there between this period is
is the one which is responsible for signing a very stupid argument, because if you have an army on the border and if it cannot use its weapon, obviously you have made the army powerless. I mean, you have to now fight there with the help of dandas and barbed wire and teasers and such like. So firstly, this agreement was signed, which was the wrong thing to sign. It was called the Peace and Tranquility Agreement, but it was peace for Chinese, but not so much of a peace as far as the Indian army is concerned. Second issue is what you have to understand is what happened at Tawang or at Yangtze. There is no doubt at all that the Chinese were at receiving end, because the movement of Chinese was detected well, the reinforcement went in time, and Chinese were given quite a bloody nose as far as this incident is concerned. Exactly something similar had happened in Galwan also, but Galwan we lost 20 brave soldiers, including Colonel Babu, commanding officer of 16 Bihar. But Chinese have suffered more than 70 factory casualties there, you know. So therefore, if some people think that the Indian army is at the receiving end of the Chinese, that kind of a sympathy they should just take away with. Indian army has a moral ascendancy as far as the Chinese are concerned, and they more than adequately respond to anything that the Chinese do. The only thing that we have to understand is that in a time like this, we as a nation have to stay united, be it in media, be it in political parties, and stand behind the Indian army. If we show that we are divisive, we can, in fact, quite a few of them are speaking the language of global times, which is the actual mouthpiece of China. Such kind of a language should not be spoken just because you have an enmity with the government in the power. But that does not mean that gives you right to talk something ill about the armed forces, talk ill about the Indian army, because Indian army is more than capable of taking care of any such situations that arise on the border, be it at Tawang or be it anywhere else, because what we have to understand is this is not the last of the situation that we have seen. Many such things will keep on happening. And I would just like to add one more point before I hand over the mic to you. One of the same opposition leaders has said that China is preparing for a war, and what are we doing? Let me tell you straight away that what he's saying is wrong. We are in the month of December. There's a heavy snowfall as far as Tawang and the Chinese border is concerned, and no major war can take place during this time. So his appreciation that China will start a war in a short while is completely wrong, and we would like to remind our viewers that yesterday was 16th of December and the 52nd anniversary of our victory over Pakistan. Why was this war fought in December? It was fought in December because that time the Indo-China border gets covered with snow and no major battle can take place. And therefore, Field Marshal Manek Shah had decided to go to war in Bangladesh, Liberation Bangladesh War, from 3rd of December to 16th of December. So this basic thing should be understood by the politicians. Just because they want to say something against the party in political in power, that should not make them say something against the army. And what we have to understand is you may be of any political thought process, you may be from any part of the media, but as far as national security is concerned, there should just be one way of talking, and that is talking the language of Indian army or talking the language of the nation. There can be no two opinions as far as national security is concerned, because if you do that, then you're giving an opening to the Chinese. Because while Chinese voices can be heard in our media, Chinese language can be heard from our politicians. That's true. Can we? Does these kind of articles will they ever be written in global times? Will these kind of tweets and all, will they ever go on the Chinese social media? So Chinese are immune to anything that India says. They will hear only the government views. Well, as far as India is concerned, because of some people, some politicians and some people in the media, we hear the language of Chinese. I would almost call them as Chinese agents. And this may not affect the Indian army as such, but it does affect some
patriotic Indians who sincerely think, oh my God, so-and-so newspaper is saying, so-and-so channel is saying that Chinese have the Indian Army jawans were beaten up and all that kind of a thing. So they get worried. Some genuine people, some innocent people, some innocent citizens who are not aware because... Brigadier Hemant Mahajan, you know, you're making some very important points. In fact, you have called out these people and you call them Chinese agents as well. These people, in fact, who come out and insulted the security forces. Stay on with us as we are breaking those fresh images of Kiran Rijiju as well on your screens right now, viewers, where we see Kiran Rijiju, in fact, has taken to social media. He's tweeted out this image as well and has talked about how the Yangtze area, in fact, in Tawang, Arunachal Pradesh, is fully secure now due to the adequate deployment of the brave jawans of the Indian Army. Now, those are the visuals on your screens right now of Kiran Rijiju as well, along with our defense forces, and has now also stated, along with this visual, in fact, Kiran Rijiju has come out and stated that the Yangtze area of Tawang of Arunachal Pradesh is fully secure now due to the adequate deployment of the brave jawans of the Indian Army, and those are the visuals on your screens. On one side, we also see Rajnath Singh coming out and making those statements, the very strong statements, and stating that the bravery and the valor of our defense forces, in fact, is always going to be there. And we also see now that Kiran Rijiju also coming out and sharing these images from Tawang and have stated that now due to the adequate deployment of the brave jawans of the Indian Army, the entire area has also been secured. Viewers, we've been getting you various voices through the day over the defense experts of various experts as well, as far as the entire Tawang incident is concerned. And we also see the kind of political war of words that has also broken out on this, the kind of opposition leaders that have come out and insulted our security forces as well. And now we are looking at the kind of answers that the defense minister is coming out and giving to these kind of people who have in fact insulted the security forces as well. We also have Major General S.P. Sinha, who's joining us on the broadcast right now. Major General, if I could come to you over the statements that we have been hearing, the statements in fact that are quite insulting of our security forces as well, to which now we see the defense minister coming out and stating that this is the bravery and the valor of our defense forces. And now we also look at Kiran Rijiju sharing that very important visual, claiming that the entire area is in fact secure because of the adequate deployment of our troops there. And this comes in the backdrop of these kind of insulting statements that are being used for our defense forces, sir. You see the irrelevant comments by certain political leaders of the parties. I personally see it as a manifestation of frustration. When they are out of power, they have, and even when they were in power, I remember that they never give proper dues to Indian Armed Forces. You must be remembering that when surgical strike was carried out, they asked for proof. When Balakot airstrike was carried out, they asked for proof. They said, we don't believe, we want proof. So here are certain people in political system who do not believe then what DGM, Director General Military Operation, briefs about surgical strike and Vice Air Chief briefs about Balakot airstrike. They still want proof. That means they don't believe armed forces. If this is the thought process of these political leaders, I really feel very hurt and very, very sad on the attitude of these people. And these people, they are saying that Chinese troops thrashed our jawans. It is purely a figment of imagination. It is not true. It is far from truth. The truth is that our 100 soldiers bashed the hell out of these 300 PLA troops. And they ran away. And they asked for flag meeting. Flag meeting means two military commanders of both the sides sit down and thrash out the issue. So both of the military, PLA requested for flag meeting. And flag meeting was held, and the issue got resolved. Now, wherever there were certain gaps were there, we have secured that, plugged that gap. But the unfortunate part is, how can political leaders make such stupid statements, irrelevant statements, and try and insult armed forces? They have no respect for armed forces. Don't they know the valor of Indian Army? Don't they know what Indian Army did in Kargil at 18 degree in gradient? Can you say Tawakar and launch an attack? Even a
boy of 35 years of age, if he takes 8-9 steps because of lack of oxygen, he will start panting. And here were our troops, Jawans, who were climbing up the hill and shouting Dhawakar, Jai Maa Kali, and things like that, our war cry. And we won the victory. So I think anybody in this country who raises a finger on the valor and bravery of our Indian Armed Forces and Indian Army, I think it is a misguided missile. They don't know what they're talking about, and it has other connotation, other links. It is totally irrelevant from Indian capability of Indian Armed Forces. And it is very sad. And I think they should not cross this Lakshman Rekha. There is a Maryada. Because Indian Armed Forces are apolitical in nature. They have nothing to do with politics. These people, one person from the Congress party told them Rawat is Sarak ka Gunda. Now, can you imagine a political person is abusing Chief of Army Staff? What has Chief of Army Staff done to justify Sanjay Dixit calling him Sarak ka Gunda? So I think they have crossed the limits. And they have to be within limits. It is not good for the political health of this country if Indian Armed Forces are getting insulted day in, day out. There is a limit to tolerance. Let's not cross that limit. Let's respect each other's territory. Your territory is political system. Our territory is fighting. So let's not cross the dividing line. It is bad for the morale, bad for the political health of political system. And if you continue insulting, then I think things won't be good. Indirectly, I'm trying to have. I hope you understand what I'm trying to hint at. True. It is not good. It's not good. True. Major General SP Sinha, I request you to stay on with us. We also have Major General PK Sehgal as well joining us on the broadcast. Major General PK Sehgal, if I could come to you over these statements that are coming to light. And of course, there are several voices now coming out and condemning these opposition leaders who come out and make these kind of statements insulting our security forces, that the defense minister also has to come out and reiterate the bravery and the kind of work that the security forces also do. And now we are looking at, several opposition leaders, including Rahul Gandhi, completely unapologetic about the statements that they've already made. The people of the country are very alive to the fact that the Indian Armed Forces are doing a stunning job. They have emerged as the guardian angel of India's homogeneity and integrity. No soul in the world today has any doubts on the capability and professionalism of the Indian Army. Unfortunately, certain political leaders, including Rahul Gandhi, casting aspersions is making them look like clowns in the eyes of the people of India. People of India are very mature and they fully understand, and they will show them their place when the next election takes place. More such statement means they are digging their own party into a deeper and deeper. And by the next election, they will be reduced to almost a single digit in case they continue to do such things. Their statements are condemnatory, they're extremely damaging, and unfortunately, where the Indian Army needs to be appreciated. They have really appreciated the Indian Army. Today, they are the most revered, the most regarded, most respected, and most professionally competent army. And pointing fingers at them tantamounts to insulting yourself. It only indicates how little Rahul understands what is warfare. Absolutely. Absolutely. Major General PK Sehgal, I want to thank you for joining us and sharing that perspective on this very big story that we're tracking for you viewers. As far as the Defense Minister Rajnath Singh is concerned, who had to come out and reiterate the bravery and the way, in fact, that our security forces work, and had also, now we are seeing Kiran Rijiju also sharing those visuals of Tawang, claiming that because of the adequate deployment of our troops is that this entire area is also now secure. And of course, as we track these developments from Tawang, we see that the BJP carrying out the protest across the country, in fact, as well, and also how Rahul Gandhi is completely being unapologetic for his comments. Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, death toll in Bihar, huge tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. And Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend as well.
Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Magnificent picture, magnificent sound, magnificent experience, Magnifique. High performance TVs by iWork Japan, now in India. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी, तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Very good afternoon and thank you for tuning in. You're watching the news at 1 p.m. I'm Suesha Sawant, and the top story we are focusing at this afternoon after Rahul Gandhi made that comment demoralizing the forces over the situation at the LAC. The government responding in full force. A lot of reactions that are coming in, that and much more. First, a quick check of the headlines. A day after Rahul Gandhi insulted the army, Rijichu has tweeted a picture. It is a big message to Congress doubters. गलवान हो तो तवांग। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, ये शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Defence Minister Rajnath Singh applauds forces. He says be it Galwan or Tawang forces proved their valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologize. जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan FM Bilawal Bhutto, who's insulted Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar Huj tragedy has now risen to 70. Yet, Chief Minister Nitish Kumar, who says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers in attendance. And well, after Anurag Thakur hit out at Rahul Gandhi, he said Rahul Gandhi was seen having soup with Chinese officials during Doklam incident, whereas Indian army was fighting with the Chinese troops. When Indian army did the surgical strikes, even then they questioned us.
Rahul Gandhi and Congress does not have faith in our army. This is not the India of 1962. This is the India of 2022, of 2014, where India is moving forward under the leadership of Prime Minister Modi. UPA government could not purchase fighter jets, bulletproof jackets or even snow boots for our army in 10 years. What did you do for the army, asks Anurag Thakur, who's attacked Rahul Gandhi after he made that statement against the centre, demoralizing our forces over the situation at the LAC. You saw how Union Minister Kiran Rijiju also posted that picture where he met with the soldiers and said that all is safe in Arunachal Pradesh. And Defence Minister Rajnath Singh, who also lauded our forces and said not an inch of land can be taken. This is the latest statement coming in from Union Minister Anurag Thakur, who's hit out at Rahul Gandhi. He's questioned the Congress party on what they did in their reign for the army, of how they could not even provide basics for the army, of how they've always demoralized our forces and they continue to do that. In that detailed statement, Anurag Thakur has said that the UPA government could not even purchase fighter jets, bulletproof jackets or snow boots for the Indian army in 10 years. The BJP is now questioning the Congress on what they've done for the Indian army. Let's listen into Anurag Thakur and what he said. राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। So you see how the BJP in a full frontal attack has asked Rahul Gandhi to apologize for what he said, as the BJP is saying that it is Rahul Gandhi who is spreading a lot of confusion and demoralizing our forces by making the statement that he's made. You would remember how Rahul Gandhi during the Bharat Jodo Yatra has said that China is preparing to wage war against India, and BJP hitting out in full force saying that this is not Nehru's India, this is Modi's reign. And the reigning government is ensuring that not even an inch of land that will go to China. Most importantly, the BJP also questioning the Congress on what the Congress has done for the Indian army in all these years. In the 10 years that they were in power, basics that they could not even provide to the army. Shahzad Poonawala from the BJP is with me on the phone line. Shahzad, that's the BJP asking Rahul Gandhi to apologize, saying that he's spreading utter confusion, but most importantly, he continues to demoralize our forces, and that's what the Congress has been doing, rather questioning what the Congress did for the forces. Firstly, let me take the opportunity and your platform to thank the government of India and particularly Kiran Rijiju ji to go there and to stand with our forces, and we stand with the forces at the time and they've given a befitting response to China, whether it's Galwan or whether it's Tawang. But on the other hand, it's a shame that the leader of the Congress party behaves like the editor of Global Times. He peddles Chinese propaganda, perhaps because he has the MOU with China, because he has taken Chinese money, and he lies and tries to demoralize our forces. And don't forget, this is not the first time. You remember surgical strike was called Pinky Dalali, Balakot airstrike, they said Chil Kawamare, and they called our army chief Sadak Ka Gunda. This is the true face of the Congress party. INC does not mean Indian National Congress. It means I need Chinese MOU, I need Chinese money, I need Chinese propaganda. Absolutely, and we also heard that news conference by Gaurav Bhatia, where the BJP is now asking Rahul Gandhi to apologize. But most importantly, Rahul Gandhi must come clear, because fact is, Shahzad, that a responsible leader in the opposition, before making such a big statement, especially when it is related to war, must also come out. इसलिए अब दुनिया ने क्या
देश ने तो पहले ही कर दिया, दुनिया भी अब उनको कोई सीरियसली नहीं लेती है। सर, पिछले दिनों पार्लियामेंट में मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी स्पष्टीकरण दिया, तमाम सारी चीज़ें बताई, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का इस तरीके का बयान कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है, पत्रकारों से कहना कि चाइना पर तो आप लोग प्रश्न पूछेंगे नहीं, कैसे देखते हैं? बार बार एक ही टॉपिक पर मैंने कहा ना कि कोई सीरियस लेता नहीं है, उनके बातों का कोई औचित्य नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या बयान था सब जानते हैं। देश और दुनिया हमको मानती है। आज दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी बात को पूरी दुनिया मानती है, वो मोदी जी हैं। वो पच नहीं रहा है लोगों को। कई लोग कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, और वो हमको लाओ नहीं कह पा रहे हैं। ये स्लोगन के साथ कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में वही बात हुई। जो भी हमने भले काम किए उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। हमारे पड़ोसी देश जो सवाल पूछते थे वही सवाल हमारे विपक्ष के लीडर्स पूछते रहे हैं, जो दुर्भाग्य है। जबकि हम लोग प्रजातंत्र के दो पहिए होते हैं, कोई भी आए सत्ता में जो विपक्ष में हो। अटल जी ने 71 के वार में साफ साफ कहा था कि आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं। देश की रक्षा सुरक्षा जब होगी तब हमारा प्रजातंत्र रहेगा, तब हम पक्ष और विपक्ष होंगे। लेकिन आज तो सोच ही नहीं है। विपक्ष इतना बचकाना है, इतनी गैर जिम्मेदाराना के बयान देते हैं, जिसे देखकर हम सब लोग प्रभु से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, विपक्ष को भी सद्बुद्धि दीजिए। Sardar RP Singh now joining us on the phone line. Well, it is the BJP not only asking Rahul Gandhi to apologize, but also the very fact that since they have not been able to gather enough force to come to power, now they're just doing anything and everything to run Modi down. But really, Sardar RP Singh, for a responsible leader in the opposition to run the government down, is it fair to make such statements that hold the kind of gravitas and can not just scare local citizens but demoralize the army? Well, in politics it's still acceptable to run the government down, but they can't run the armed forces down. They can't run the valor of the armed forces down. When they do so, it means they are doing disservice to the nation. That's the problem with Rahul Gandhi. Because they want to hit the ruling party or the Prime Minister Modi ji, they go to any extent. They go to extent of appeasing terrorism, to appease terrorists, as Mr. Shiv Kumar has done in Karnataka. They go to extent of demoralizing or downgrading the valor of the army. That's the problem. And they have to understand, our army stands at the border by the courage of the people of the country, and they safeguard the people of the country. And this government has always supported, the President Modi government has always supported and given free hand to the armed forces. Unlike in their regime in UPA, when after 26/11 the Air Force Chief asked for the retaliatory attack, and he was refused to go ahead and attack the Pakistan forces. So it's seen as change, but as Rahul Gandhi is, he does it on behalf of the Chinese Global Times or someone else in China. Whatever he speaks on behalf of the Chinese Communist Party of India. So that's how he is. I mean, and it's very sad that he tried to demoralize the Indian forces, Indian armed forces. Absolutely, and no answers coming in from the Congress when the BJP questions them on their link with the Chinese, on the Chinese funding that came. Anurag Thakur also put out a statement saying how Rahul Gandhi was having soup with the Chinese officials during Doklam. So those statements are never addressed from the top leadership of the Congress party. But when it comes to making statements of this nature, and that to something that can really have an impact on the entire country,
not backed by any proof, not backed by any statement, not backed by any document or nothing in black and white, but they go on to say this for mere politics. Well, if you remember, after the abrogation of Section 370 and 35A, Mr. Rahul Gandhi very next day made a statement that, oh, there's a bloodbath happening in Kashmir, although there's nothing which was happening in Kashmir. So again, I mean, either he speaks on behalf of Pakistan or on behalf of China. That's the problem. He amplifies whatever Pakistan or whatever suits Pakistan or China. And then he tries to demoralize the forces or the administration here in the country. That's the sad part. And I'm hopeful the people of the country will understand that why Rahul Gandhi every time comes and speaks the language of the Chinese Communist Party. Absolutely. Sardar R.P. Singh, thank you for speaking to Republic this afternoon. Also, once again, playing out that statement by Defence Minister Rajnath Singh, where he's lauded our forces and spoken about the valor and courage of our men. लेकिन सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना यह कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। यह तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई अब रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट्स थे जो पुराने थे, जिनका की कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इस समय सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही हैं। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है। झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है।
So those are the responses coming in from the BJP as they demand that Rahul Gandhi must apologize, also making it very clear that this is not Nehru's India, this is the India under the Modi government, and they will ensure not an inch of land is taken by anyone, as national security is supreme for them. But also in the many responses coming in, BJP is questioning as to what the Congress has done for the Indian army in all these years during their reign, while they continue to demoralize the forces every single time. Also, a quick check of the other big stories we are tracking for you this afternoon. While addressing the FICCI annual convention and AGM in the national capital, Defence Minister Rajnath Singh made a huge statement. He said that whether it is Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Protests were staged in Jammu against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over his remark against Prime Minister Modi. Effigies were burned and slogans were raised by angry protesters. Shame on Pakistan posters were burned as a huge protest took place in Mumbai. Protesters demanded strict action being taken against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over the remark that he made against Prime Minister Modi. A school teacher attacked a class 5 student with scissors and pushed her off from the first floor. She's now been suspended with immediate effect. Meanwhile, the MCD will bear all the expenses of the medical treatment for the student. A combined graduation parade that was held at the Air Force Academy, Dundigal in Hyderabad, to mark the successful completion of pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. Now, according to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. 6 members of a family were burnt alive after a fire broke out in their house in Telangana's Mancharle district. A fire brigade team that was rushed to the spot. However, by the time they reached, all family members, including 2 children who had died. Further investigation is underway. Where you see how effigies are being burnt of Foreign Minister Bilawal Bhutto in Pakistan. This over his statement on Prime Minister Modi. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto, who made that remark against Prime Minister Modi, has ever since been facing a lot of backlash, with protests happening in literally every part of the country. Sporadic protests that we see where protesters are demanding that Bilawal Bhutto must apologize, and that this is not just an insult to the Prime Minister but also sentiments of the entire country that are hurt. Listen in. भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वह घोर आपत्तिजनक है और भारत की मर्यादाओं के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है और उनको इस बात का मलाल है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने शिकस्त खाया था उनके नाना के नेतृत्व में और उस मलाल को आज तक भुला नहीं पाए
अगर उनको औकात है तो फिर से एक बार भारत से आजमाने का काम करे। जब जब वो भारत से युद्ध करने का काम पाकिस्तान ने खाया है, हर बार वो शिकस्त होने का पाकिस्तान शिकस्त हुआ है। आगे भी इस प्रकार का युद्ध करने की अगर उनमें क्षमता है तो आके फरमा ले। All right, so we keep cutting across to these various live sound bites that have been coming of protests that have been staged in various parts of the country as offense taken against that remark made by Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto against Prime Minister Modi, and anger is escalating over this very remark, where you see how they're expressing their anger, demanding that Bilawal Bhutto has hurt the sentiments of India, and that there must be an apology. Another reaction coming in dissonant. रक्षा परिषद की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए एक आरोप लगाया, कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह से अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, उससे पूरा देश शर्मसार है और आक्रोशित है, उद्वेलित है। जो पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में एक फेलुअर देश के रूप में स्थापित हो चुका है, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का प्रोड्यूसर है, उस पाकिस्तान का विदेश मंत्री हमारे देश के लोकप्रिय नेता के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। इससे पूरा का पूरा आम जनमानस आंदोलित है, गुस्से में है। उसी गुस्सा का प्रतीक के रूप में आज हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से और आम युवाओं को लेकर के एक विशाल पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। ये वो रोष पाकिस्तान की असफलता का रोष है, ये रोष पाकिस्तान को लगातार जो विश्व मंच से लौटाया जा रहा है उसका रोष है, और ये रोष भारत के माध्यम से दिखा करके, जला करके वो अपने देश में ओछी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। उसे उनकी देश की जनता भी जानती है, और हमारा देश का एक व्यक्ति आप अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। All right, so those are the many reactions that are coming in as we see sporadic protests across the country. Anger is mounting over that remark that was made by Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto against Prime Minister Modi. And this is India expressing its anger over the offense that has been taken after the insult to Prime Minister Modi. You see how effigies are being burnt and protesters going all out, standing with placards, demanding that this is and has been taken very, very badly in India. Bilawal Bhutto Zardari had no business to make that statement against Prime Minister Modi, and that India is angered after that insult to the Prime Minister. Yes, we've shown you pictures from Jammu, from New Delhi, from Mumbai. These are pictures from Ranchi. You see those live shots of how effigies are being burnt on camera, and these are अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी,
उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है, उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। So that's the latest reaction coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath, who's once again gone on to slam Rahul Gandhi over that statement he made, demoralizing our forces, as the BJP in an all-out attack has demanded that Rahul Gandhi must apologize. With that, we are slipping into a short commercial break. On the other side, we get you details as Chief Minister Nitish Kumar still says no sympathy. This despite the death toll in the Bihar Kuch tragedy that has now risen to over 70. Ladies and gentlemen, you expected the puzzle, but for a long person, this is not a game. Explain it to us, detective. Always! Everyone is in danger. All right, when's the murder mystery start? अरे आप इतनी दूर हमारे लिए? आपकी मेहनत कहां से कहां पहुंच रही है। मैं आपके एक साइन के लिए यहाँ नहीं आ सकता? हो गया आपका अकाउंट ओपन। हर बंद राह ओपन हो सकती है, लगता है सिर्फ दिल। धन्यवाद। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। मेरा दोस्त है, वो हर बार मुझे बचा लेता है। घोस्ट को कैसे पता मैं अंधेरे से डरता हूँ? घोस्ट मेरा दोस्त है, मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स, जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं। ना आग पकड़े, ना जहरीली गैस छोड़े। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। After Rahul Gandhi insults the army, the Jiju has tweeted a picture. It's a big message to Congress doubters. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।
Defense Minister Rajnath Singh applauds forces. He says, be it Galwan or Tawang, our forces prove valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi, saying Rahul Gandhi and Congress must apologize. जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto has insulted Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar, whose tragedy has risen to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers attend. Thank you for staying with Republicana. A big story we are tracking this afternoon. It is that comment that was made by Rahul Gandhi yet again, where he said that China is preparing to wage war against India and the centre is doing nothing about it. But in all this, he goes on to insult and demoralizes our forces yet again. This has led to a lot of anger mounting against Rahul Gandhi, where the BJP has also come out in full force and demanded that Rahul Gandhi must apologize. BJP has continued to question Congress when it comes to their links to the CCP, when it comes to Chinese funding, and in the latest reaction by Union Minister Anurag Thakur, who's also said that Rahul Gandhi was seen having soup with Chinese officials during the Doklam incident. It is the BJP also now questioning the Congress as to what they did in their raid for the Indian army, and why is it that the Congress continues to demoralize and insult the army over and over again. It is one thing to be critical about the government and its moves, but it is another to run down the Indian army. And as the BJP continues to question the Congress and demand an apology from Rahul Gandhi, we have several responses coming in from union ministers who have slammed Rahul Gandhi over this very statement that he has made. Defense Minister Rajnath Singh, who once again lauded the valor of our forces and said that be it Doklam or Tawang, our forces stand strong at the LAC. Listen into the statement. देखिए, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना यह कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। यह तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई अब रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट्स थे जो पुराने थे, जिनका की कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है। थोड़ा सा भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं।
प्रेस के हमारे मित्रों। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पे, और साथ ही पाकिस्तानी झंडे को भी यहाँ पे रखा गया, उसको भी जलाया जा रहा है। जो यहाँ पे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइव तस्वीरें, यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के तमाम यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भी कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं बयान को लेकर के। हाय 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 हाय। देखिए बिलावल भुट्टो
का पुतला लाया गया, उसको भी जलाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों में काफी रोष है, जो कार्यकर्ता है काफी रोष में है। पूरे देश में बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जम्मू की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश बिलावल भुट्टो के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हाय हाय पाकिस्तान, 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 हाय 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 पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान। देखिए बौखला गया है पाकिस्तान, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं बौखला गया पाकिस्तान और कहीं ना कहीं डर है उसे कि जिस तरीके से चाइना रहे हैं। इसमें तमाम बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, शराब ठेकेदार जो जिनकी पेनल्टी माफ नहीं हुई है वो है, सीएचए के स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार हैं और तमाम लोग यहाँ पे आप देखेंगे। ये आप रोड देखेंगे, इस तस्वीर को देखने के बाद समझ सकते हैं सारी चीज जो है, सब कुछ जो है वो यहाँ पे स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। और ये तमाम जो आप तस्वीर है, एक लॉन्ग शॉट मैं कहूँगा विजय महेश से एक बार दिखाएं कि कितनी तादाद में और कई किलोमीटर लंबी ये अचानक से समर्थक जो किरोड़ी के हैं वो पहुंचे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जो हैं वो सीधे के सीधे आए और बेरोजगारों को साथ लेकर के आए, महिलाओं को साथ लेकर के आए, किसानों को साथ लेकर के आए। और किरोड़ी लाल मीणा से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना यही था कि हमने पूरी तरीके से यहाँ पे राहुल से सवाल और जवाब करने का मन बनाया है। किरोड़ी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफिला, पुलिस का लंबा काफिला जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। लंबा जाम पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन वापस से लोगों से बात करने के लिए मैं एक बार जाऊँगा, लोगों से बात करूँगा। हाँ, क्या समस्या है आपकी? सर, हम कोरोना में काम कर रहे थे तो गहलोत सरकार ने हमको 31 मार्च को निकाल फेंका। जब से हमारा धरना चल रहा है हम दर दर की भटक रहे हैं रोडों पे और पुलिस प्रशासन द्वारा हमको धमकाया जा रहा है, डंडी लाठी चार्ज किया जा रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो बोल रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स को हमारी सरकार आएगी तो नौकरी देंगे, और राजस्थान में वही कांग्रेस सरकार है फिर भी कोरोना वॉरियर्स को हटा रखा है। पीएम मोदी ने 100 दिन काम करने पर हमको कुछ बोनस अंक या नौकरी देने की बहाली की थी, परंतु गहलोत सरकार हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ। सर, हमारे कोरोना काल में हम लोगों ने दारू नहीं पिला पाए, लोगों को जबरदस्ती दारू पिलाने के लिए सरकार बोली, उसके बदले में हम लोगों यहाँ पे आप देखिए तरीके जो है, तरीके यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस कदर में किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पे लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये यात्रा जो है उसको आप देख रहे होंगे किस तरीके से यात्रा कंटिन्यू चल रही है। और ये विरोध यात्रा, सरकार हमारी जमीन नीलाम कर रही है। कोरोना काल में जो दुकानें बंद थी तो हम दारू किससे पिलाए, शराब नहीं पिलाने। तो यहाँ पे आप सब सारी चीजें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें ये तस्वीरें दिखाएं। महेश, एक बार तस्वीरें ये दिखाएं किस तरीके से यात्रा है। हाँ। यात्रा नहीं हुआ, भारत जोड़ो नहीं हुआ, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठेकेदारों की जमीन नीलाम हो रही है या भारत तोड़ो यात्रा हो रही है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज एक एक करके बताइए सर, राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत तोड़ो यात्रा चल रही है। हम शांतिपूर्वक हमारी मांगे रख रहे हैं। पुलिस हम पे बर्बरतापूर्वक डंडे बरसा रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से जाएंगे। हम हमारी मांगे रख रहे हैं, तो क्या हमें ये अधिकार नहीं है? इस देश में स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है? ये बताइए पुलिस कैसा हमारे पे अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी एक तरफ पे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार ने अग्निपथ को लेके 4 साल में नौकरी से निकाल दिया था लात मार के। लेकिन वही बात मैं कहना चाहता हूं कि सीएचए के साथ कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उन्होंने तो 9 महीने के अंदर ही काम लेके लात मार के निकाल दिया, जबकि अन्य राज्यों में कोरोना की। यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे दूसरी तरफ। So those are live scenes from a BJP protest in Dausa, where BJP is raising their voice against the Gehlot government.
questioning why they are not being allowed to stage this peaceful protest, as they pose multiple questions to the Gehlot government over the issues that are being faced in the state of Rajasthan. On that note, we step into a very short commercial break. We'll also take a quick check of what's lined up on the other side. Yes, the big stories we're tracking for you this afternoon is how Chief Minister Nitish Kumar continues to say no sympathy, this despite the death toll in the Bihar Hooch tragedy having risen to 70. Also, Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet, where Mamata Banerjee and other chief ministers are also in attendance. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। आर्थिक विकास एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए निवेश का उत्कृष्ट गंतव्य स्थान बनकर उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Addressing the FICCI annual convention and AGM in the national capital, Defence Minister Rajnath Singh made a huge statement. He said that whether it is Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, ये शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Protests were staged in Jammu after Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto made that remark against Prime Minister Modi. Effigies were burned, slogans were raised by angry protesters. Slipping into a short commercial break, on the other side, details of the Hooch tragedy where the death toll has risen to 70. Will smart manufacturing complement traditional manufacturing processes or replace them entirely? India will be able to contribute approximately 5% of the global market in terms of when we talk about additive manufacturing. What kind of opportunities does it hold for the BTech students? Amrita University, I would say, is ideal for students who come into manufacturing, additive manufacturing. To know more, watch Amrita School of Engineering presents Shaping the Future of India at these times only on Republic TV. Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer,
that person wins our game. This is truly delightful. Holy There has been a murder. For one person, this is not a game. A killer wouldn't hesitate to kill again. You must be really great at clues. I'm very bad at dumb things. Glass Onion, a Knives Out mystery. Hey, boss. Rahul? How come you're here? शाहरुख ने बताया. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना. मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायुद्ध. भारतवर्ष के अमर शूर वीरों में एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन. प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है. हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे. यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वह भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है. मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में यह देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है. यह उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Volkswagen Tygoon, India's safest SUVW. Volkswagen. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा. अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है. इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है.
जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। मजबूती डाली रूट्स में, दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, बना दिया अटूट रे, दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, शुरू हुआ सब दूध से। कुछ पैसे बोरो करने थे। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. Fast. Ball. खट्टे मीठे घूट कटक के ले तू दिल को ठूस, just let loose, लिमोनाटा, just let loose। क्या हुआ चैंपियन? दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहाँ तो रात को स्टेडियम ही बंद हो जाता है। एक काम करो ना, चेन छोड़ छोड़ के लगाना। पापा अब करो दिन रात प्रैक्टिस। चैंपियन। एक्स्ट्रा सेफ पॉलीकैब ग्रीन वायर, आपके सपनों को रखे सेफ। Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. A day after Rahul insults the army, Rijiju tweets a picture. It is a big message to Congress doubters. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, Defense Minister Rajnath Singh applauds forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces prove valor. ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologize.
जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto has insulted Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar Huj tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers attend. And we continue to get you pictures coming in from various parts of the country over the protests that are being staged after Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto made that insulting remark against Prime Minister Modi. That has evoked a lot of anger, where you see protesters expressing their anger. Effigies have been burnt, and these are the latest pictures coming in from Srinagar. So far until now, not only is it New Delhi or Mumbai, but also Ranchi, Srinagar, Jammu, Patna, where protests are being staged. Arawat is with me from Srinagar. Arawat, what are you picking up from the protesters there? What are they saying? Right now I am here in Srinagar and BJP state headquarters. Right now I have with us Mansoor Bhatt. Please tell us about this incident that happened with yesterday the statement came out. देखिए, जैसे आपको पता है, जो कल एक बेहुदा और बेशर्माना बयान कल पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क की तरफ से जो बिलावल जरदारी भुट्टो ने दिया है हमारे चहीते वजीर आजम के खिलाफ, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा आज देश भर के कार्यकर्ताओं ने पूरे मुल्क में, पूरे भारत में प्रदर्शन किए हैं, सड़कों पे निकले। यहाँ पर भी आपने देखना हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो गुस्सा है वो सड़कों पे दिखाया। और आप देख रहे हैं जो एक बौखलाहट पाकिस्तान में आई है, ये साफ संकेत देती है जो इन 3 सालों में जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के हालात बदल दिए हैं हमारे वजीर आजम साहब ने। जो एक टेररिज्म का ग्राफ आज 0 हो चुका है, टूरिज्म का ग्राफ 100% हुआ है, स्टोन पेल्टिंग गायब है, यहाँ पर हड़ताल स्ट्राइक कॉल्स गायब हो गई है। अब ये जो बौखलाहट है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आ रही है, और जिसकी वजह से ये जो बेहुदा और बेशरम वाले बयान दे रहे हैं इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर हमें अफसोस होता है कि हमारे कांग्रेसी नेता जो पाकिस्तान से जो बोली बोली जाती है वो उस बोली को यहाँ बोलते हैं। जहां पर हमारे एक जो ड्रामा राहुल गांधी की तरफ से वो भारत जोड़ो यात्रा, मैं समझता हूँ भारत तोड़ो यात्रा है, जो 70 साल से हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ नहीं जोड़ पा रहे थे, वो क्या भारत जोड़ेंगे। इन 4 सालों में देखिए जो माहौल आज जम्मू कश्मीर का बदल चुका है। एक मैदान, एक संविधान, एक प्रधान है, एक तिरंगा है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस का मकाम वहां पर है। कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पूरे विश्व के नेता माने जाते हैं, ना कि हमारे मुल्क के। उन्होंने आज जो हमारे भारत की जो एक इमेज पूरे दुनिया में बदल दी है, उसके लिए अगर हम मर भी मिटेंगे हमें कोई फर्क नहीं है। हम सड़कों पे सारे कार्यकर्ता आज इस चीज को लेकर इस तरीके का जो बयान है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप पाकिस्तान को, जो आपका आज प्रोटेस्ट यहाँ पे था? देखिए, साफ लफ्जों में मैंने कहा कि वो हमारे चहीते वजीर आजम है, जिसने आज कश्मीरी के हाथ में लैपटॉप दिलाया है, कलम दिलाया है, एजुकेशन दिया है, स्पोर्ट्स दिया है। उस जैसे वजीर आजम के खिलाफ इस तरीके के आप शब्द इस्तेमाल करोगे वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सारे कार्यकर्ता कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के लोग भी आज इस बयान को लेकर काफी गुस्सा है, भावुक है। आपने देखा जो बाहर आपने प्रदर्शन देखा किस तरीके से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि देश के नागरिक को, हर एक देश के नागरिक, भारत के देश के नागरिक को अब जागना पड़ेगा। और आज आपको यकीनन ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस बल्कि मुल्क दुश्मन पार्टी है, और जो पाकिस्तान से बोली जा रही है उसको यहाँ पर कांग्रेसी समर्थन करते, बहुत अफसोस का मकाम है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताइए आपकी क्या मांग रहेगी जो आपका प्रोटेस्ट आज यहाँ पे था? प्रोटेस्ट के हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जो कल वजीर खारजा ने बयान दिया है
आज का प्रोटेस्ट इसी लिहाज से था, हम आलमी दुनिया को बावर कराना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी हमेशा यही बयानबाजी पर अपने उस टेररिज्म मुल्क को डिफेंस करने की कोशिश की है। जो जिस तरह कल वज़ीर ख़ारजा ने हमारे महान वज़ीर आज़म पर कुछ अल्फाज, नाजायज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम उसको कंडेम करते हैं और साथ ही हम आलमी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक वो आलमी दुनिया को माफ़ी ना मांगे। जी बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने किस तरह से हमारे साथ यहाँ पे बात की, तो काफ़ी गुस्सा उनमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे। जी, बैक टू स्टूडियोज। All right, so those are the very many voices coming in from Srinagar, and this is particularly symbolic. Arawat, I want to stay with you and talk to you about this because we see how people are expressing their anger. They don't want to take it lying down. They don't want to avoid this as yet another political statement that has been made, and people across the country are saying it in very many words that this sort of an insult against the Prime Minister will not be tolerated. All right, not too sure if Arawat can hear me. We'll try and reconnect that line with him. But this is really to give you a broader picture of what is happening across the country after that comment that was made by Bilawal Bhutto that has clearly not gone down well. And Arawat, I believe you can hear me now. We've seen how effigies have been burnt. Protesters have come out in full force. And they are saying that we will not tolerate such an insult against the Prime Minister. And particularly important to talk because this is Srinagar where you're reporting from. These are the voices coming in from the ground where Pakistan continues to project that the people on this land are not with India, but that is far from the truth because the people are now appreciating the development and the changes that the Modi government has brought about in Jammu and Kashmir, and they are openly and in very many words saying that not only do they stand by India and with India, but they are under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and that is exactly what they want as far as the way forward in Srinagar is concerned. जी, आपने देखा किस तरह से यहाँ पे काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ के बीजेपी के फेल्ड राष्ट्र के और जिसका पूरा भट्टा बैठ गया है, जो दिवालिया है, ऐसे राष्ट्र के एक मंत्री इस प्रकार की बात करते, लेकिन उसी समय उसी प्रकार की बात अगर हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी करे तो उनके लिए राष्ट्र बड़ा है या राजनीति बड़ी है, ये सवाल उठता है। उन्होंने तो आगे बढ़कर बिलावल भुट्टो की भर्त्सना करनी चाहिए थी, निंदा करनी चाहिए थी, उन्होंने उसकी नहीं की। और मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल जी को, इस देश का भूभाग जो चीन को मिला उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? आप ही के परिवार के लोग जब जब प्रधानमंत्री बने तब तक कई बार चीन ने हमारी जमीन पर, हमारे भूभाग पर कब्जा किया। आपकी पार्टी के समय कब्जा किया। अरे मोदी जी के समय तो हमने बाहर जाकर डोकलाम में चीन को रोकने का काम भारत ने किया है, और हमारे सेनाओं ने जिस प्रकार से चीन को रोका है, चीन को ये कहना पड़ता है कि हम उनकी सीमा में नहीं आई, वो हमारी सीमा में आके उन्होंने हमारे साथ विवाद किया। ये चीन को कहना पड़ता है। 1 इंच भारत की भूमि चीन को मोदी जी के काल में नहीं मिली। इसलिए राहुल गांधी जी जरा इतिहास पढ़िए और उसके बाद बोलिए। अशोक चव्हाण या मोर्चाला नव्हते ते मला माहित नाही। थँक यू। So that's a statement that just came in from Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, as we see how the BJP has gone on in a full frontal attack against Rahul Gandhi, where they go on to say that Rahul Gandhi must apologize. We also heard in that news conference that was held a short while ago by Gaurav Bhatia, where the BJP is saying that such an irresponsible statement without any ground should not be made by any leader of opposition for mere politics or to run down the government in power. And apart from this and above all this,
insult to the army will not be tolerated because all the Congress is doing is demoralizing our forces. The BJP has gone on to question Rahul Gandhi and the Congress of what they did in their reign for the Indian army. And you've heard those many reactions coming in from union ministers as BJP has hit back at Rahul Gandhi very, very strongly, slamming the opposition leader for that statement that was made that insults our forces yet again. We're trying to get you more voices as we've heard those very many responses coming in from the BJP, where union ministers have gone on to slam Rahul Gandhi over that comment that he had made, where he said that China is preparing for war and the centre is not doing enough about it, where not only has the centre rubbished the statement but also said that Rahul Gandhi has no business to demoralize or insult our forces. It is one thing to run the government down, it is one thing to play politics, but any insult to our forces will not be tolerated. Also, you heard from most of the leaders as they go on to question the Congress as to what they did for the Indian army in their reign. You would remember how Rahul Gandhi had made that statement yesterday, where the BJP is saying that Rahul Gandhi is creating confusion and is also must be responsible while making a statement like this that holds a lot of weight and should not be made lightly. And in the latest attack that has been launched by the Congress party against Prime Minister Modi, Adhir Ranjan Chaudhary has said that the Prime Minister is busy flaunting red kurta in Bali rather than showing the red flag to China. So this is the latest insult coming in from the Congress party against the Prime Minister, where it is a personal attack that they are now raising against PM Modi. We've heard the very many abuses and insults that have been hurled against the Prime Minister time and again by the Congress party, and this time it is a personal remark that has been made, where Adhir Ranjan Chaudhary has said that Prime Minister Modi was busy flaunting the red kurta in Bali, but what about showing the red flag to China? So Congress really going all out when it comes to the tension at the LAC, questioning the government, but here it is not just limited to how they're questioning the government, but also making personal remarks against the Prime Minister. And this is yet another remark that has been made, this time by Adhir Ranjan Chaudhary of the Congress. This after the BJP, in an all-out attack against the Congress, has gone on to question Rahul Gandhi and said that he must apologize over the comment that was made by the Congress party. Now, BJP has questioned the Congress as to why they demoralize our forces, but this comment and a personal remark made against the Prime Minister is by Adhir Ranjan Chaudhary of the Congress party. Let's listen it. देखिए, हम तो विपक्ष में रहते हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता मानते हैं। विपक्ष के तरफ से अगर सरकार को किसी विषय पे अगर सचेत किया जाते हैं, सतर्क किया जाते हैं, तो ये क्या गुनाह है? चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? सरकार ये कह सकते। अगर घुसपैठ नहीं किया होते तो जयशंकर जी को क्यों ये कहना पड़ता कि यथास्थिति बहाल होने तक संपर्क में सुधार आना मुश्किल है? बताइए। तो 16 दफे दोनों फौजों के बीच क्यों वार्ता जारी रहते हैं? सैटेलाइट में दिखाया जाते हैं कि पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं। देमचौक में, देपशांग में हमारे फौज जहां गश्ती लगाते थे, 10, 11, 12, 13, 14 पेट्रोलिंग पॉइंट हुआ, हमारी गश्त को बाधित किया जाते हैं, पेट्रोलिंग अभी नहीं कर पाते हैं, और इसके चलते
डीओबी दौलत बेग ओल्डी जो रोड है और जहां हमारे एयरफोर्स की छोटा सा एयर स्ट्रिप है जो स्ट्रैटेजिक, ये डीओबी दौलत बेग ओल्डी रोड खतरे में आ गया, मतलब चीन की निशाने पे आ गए, क्योंकि देपसंग और देमचक में वो हमारे पेट्रोलिंग जहां करते थे सारे जगह बंद कर दिया। वो कहीं 12-14 किलोमीटर अतिक्रमण कर रहे हैं और इसके लिए खतरे में क्या होगा जानते हैं? सियाचिन ग्लेशियर में जो आपूर्ति होते हैं, ये आपूर्ति होने में दिक्कत पैदा होने की संभावना है। जो अगर चीनी फौज ने डीओबी के ऊपर निशाना साधने का मौका मिले तो, आज नहीं तो कल वो खुद कोई भी हरकत कर सकते हैं। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में हमारी फौज कब्जा किए थे। ये काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और ये सियाचिन ग्लेशियर की आपूर्ति ये डीओबी से होते हैं। पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं, डिवीजन बना रहे हैं, चीनी फौज को तैनाती हो चुके हैं, हमारे फौज हुआ डटे हैं। क्यों? अगर चीन की इरादे में कोई खोट नहीं रहते तो हमारी फौज क्यों डटे रहते हैं अभी तक? इसका मतलब चीन की नापाक इरादे हैं, ये साबित होते हैं। So cutting across to Anila Singh from the BJP, who's with us on the phone line. Anila Singh, while the Congress party is bent upon proving that the Modi government is not handling the China situation well, the kind of comments that they make against the Prime Minister, from calling him Ravan to hurling insults to hurling abuses, and now this personal attack on what he was wearing and linking it to showing the red flag to China. When we talk about Adhiranjan Chaudhary, Adhiranjan is like a chained dog in front of your house. It keeps on barking just to please the master. This is what Adhiranjan is. He dares talk about the Prime Minister of our country, a Prime Minister, because of his leadership and because of his strong political willpower. Today, China is isolated. But a world-class infrastructure has been made of the borders of Indo-China. We have got best equipment with warfare techniques with our armed forces. We know it very well that China cannot dare do anything. This is Congress party who has gifted almost 40,000 square kilometers of land to China. And what nonsense he is talking about? तो ये वो श्रीमान जी हैं जैसे मालिक जो है घर के बाहर अपने कुत्ते को चेन से बांध देता है, कुत्ता भौंकता रहता है मालिक को खुश करने के लिए। अधिरंजन का काम वही है। ये प्रधानमंत्री जी के विषय में उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको गालियां देते हैं और सोचते हैं कि इससे बहुत महान बन जाएंगे। They are abusing armed forces. They are not abusing Narendra Modi ji. So they should very well understand what they are saying, what they are doing, and the way they are behaving. It is the insult towards the armed forces of our country, because our armed forces is so strong. They know it very well that how they have to deal with the ELA. And if they can't understand one simple thing, it is their problem. पर ये जरूर बता दें कि ये जो so called fake गांधी परिवार है, इनका रिश्ता क्या है चीन के साथ? Oh yes, and not a single answer that has come in on that front, as the BJP has been questioning them over their link with the Chinese. Anila Singh, I want to thank you for talking to the Republic this afternoon. We move on to play out some other stories in brief. और इसके चलते While addressing the FICCI annual convention and AGM in the national capital, Defence Minister Rajnath Singh made a huge statement. He said that whether it is Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour.
चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Protest staged across Jammu and Kashmir over the comment that was made by Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto. Anger that has been expressed, effigies were burnt and slogans were raised as this insult against Prime Minister will not be tolerated, say the protesters. Shame on Pakistan. Posters were burned as a huge protest happened in Mumbai. Protesters demanded strict action be taken against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto. A school teacher attacked a 5th standard student with a pair of scissors and pushed her off from the first floor of the school, where she's now been suspended with immediate effect. Meanwhile, MCD will bear all the expenditure of the medical treatment to the student. A combined graduation parade that was held at the Air Force Academy in Hyderabad to mark the successful completion of the pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. Now, according to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. 6 members of a family were burnt alive after a fire broke out in their house in Telangana's Manchalyala district. A fire brigade team rushed to the spot. However, by the time they reached, all the family members, including 2 children who had died, further investigation is underway. And the death toll has now risen to over 70 in the huge tragedy in Bihar, where Chief Minister Nitish Kumar continues to say that he has no sympathy for the victims. This as BJP is questioning the Nitish government. We'll get you details of the huge tragedy on the other side and what is happening in Bihar as the opposition is questioning Nitish Kumar. Also, we're tracking that meeting chaired by Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. This has several chief ministers, including Mamata Banerjee, who are in attendance. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now.
India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी, तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. It's 2:30 and here are the headlines. A day after Rahul insults army, Rijiju tweets picture. It's a big message to the Congress doubters. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जीत। Defense Minister Rajnath Singh applauds the forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces proved valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up attack on Rahul Gandhi. Says Rahul Gandhi and Congress must apologize. जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ओछी बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in the Bihar Hooch tragedy rises to 70, yet the Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other Chief Ministers to attend. And viewers, we are tracking for you all the latest in this edition of Live and Breaking, and straight away getting you updates of the Maharashtra hearing
In fact, that had been there in the Supreme Court. Now we're getting the latest as far as that hearing in the Apex Court is concerned. It's a big win for the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde. The Bombay High Court, in fact, has dismissed the plea filed against him over the Dussehra rally, and the High Court has dismissed a plea filed seeking to investigate the amount of money spent on the Dussehra rally organized by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde. While dismissing the plea, in fact, the court opined that the nature of the petitioner's prayers meant that it should have been filed as a PIL rather than a writ petition. Now, that is the latest as far as the hearing in the Bombay High Court is concerned. And for more on this, let me go across to my colleague Alisha, who's joining us from the Mumbai newsrooms. Alisha, take us through the entire legal arguments that had been put forth before the Bombay High Court, and eventually what exactly did the court also had a ruling for? What did the court opine as well? Take our viewers through all of these details. Well, it's a PL that was, it was a petition, writ petition that was filed by an advocate clearly seeking an investigation over the money that has been spent on the Dussehra rally, which was organized by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde on 5th of October. While hearing this matter, where the Bombay High Court today has dismissed the writ petition that was filed, clearly mentioning if you want to know the amount of money that was spent in a Dussehra rally, that has to be taken into the public litigation, public interest litigation, that is a PIL, and not to be filed as a writ petition. After which Bombay High Court has clearly mentioned that it has to be dismissed because the petitioner who has been seeking the investigating over the money that is spent for the Dussehra rally by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, that has to be put forward as a PIL, and Bombay High Court has clearly dismissed. So even talking about the petition that was filed, which clearly mentioned that there are 1,700 Maharashtra state transport that was used to get the people. That was, we know that on the 5th of October, where there was a Dussehra rally that was organized by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, where around 2 lakh people have been gathered to the BKC ground. But also there are 10 crore has been spent from the government office is what has been mentioned in the petition. But what the Bombay High Court has clearly mentioned that it has to be taken into the PIL rather than filing a writ petition. But Alisha, also take us through the details of this kind of an expenditure that had also been mentioned in this writ petition that had been filed in the court. The arguments as well that had been put forth before the court as well, to which the court finally had opined that this should have been filed as a PIL and not as a writ petition. And who had been the petitioner, and speak to us a little bit about this Dussehra rally as well and where we are on that. Well, Priyanka, it was a petition that is filed by Advocate Nitin Satpute, clearly mentioning that there should be an investigation over the amount that has been spent in the Dussehra rally on 5th of October, which was organized by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde. Moreover, what has been mentioned in the petition that there are around 1,700 buses that belongs to Maharashtra State Transport that has been taken over to get the people, because we know that there were around 2 lakh people have gathered in the same BKC ground where this Dussehra rally, which was organized by Chief Minister, and we even saw the amount of people. There are a number of people, a massive crowd that was gathered in the same BKC ground. After which there was a PIL, because it has also been mentioned that there are more than 10 crore has been spent from the government office for this for the one-day Dussehra rally, and this is something has to be investigated, is what the petitioner claimed. But what Bombay High Court has mentioned that this is something, the petition, the prayer that has been given by the petitioner is something comes under the public interest litigation, and rather than filing a writ petition, after which the two bench of Justice Gadkari and Karnik, who has dismissed the petition that has been filed by Advocate Nitin Satpute. That's right, Alisha there breaking down the details of this big hearing that had also taken place in the Bombay High Court. And of course, the court has now opined that this entire writ petition should have been filed as a PIL. Thank you, Alisha, for joining us and sharing those details with us. And moving on now, viewers, to some more breaking updates that we are picking up for you with respect to the kind of meeting that was expected to take place between Mamata Banerjee and Union Home Minister Amit Shah as well. Now, of course, we remember that Union Minister Amit Shah, in fact, had been chairing
the 30th Southern Zonal Council meeting as well. And of course, there were several issues on the agendas as well that had been discussed, in the backdrop of which we now see that Mamata Banerjee and the Union Home Minister Amit Shah's private meeting, in fact, is underway in Nambana as we speak. And the meeting is currently going on in Mamata Banerjee's office room in Nambana in West Bengal. So those are the latest that we are picking up as far as these meetings on the sidelines of this Southern Zonal Council meeting, in fact, is concerned. We had been getting you the latest, viewers, as far as this council meeting is concerned, where Amit Shah, in fact, had also addressed various issues that had been talked about, including that of reorganization of Andhra Pradesh as well, that had been mentioned by the Union Home Minister Amit Shah as well. And of course, we were also expecting that two leaders, Mamata Banerjee and Union Home Minister Amit Shah, will also be having that closed-door meeting. And that particular meeting, in fact, is underway right now. We will be trying to get you the visuals and the latest as far as this particular meeting is concerned in the sidelines of the Eastern Zonal Council meeting. And of course, we were getting you the updates as far as this zonal meeting is concerned. And of course, now we are looking at how there is a meeting that is also being carried out in the sidelines of this Eastern Zonal Council meeting, where various issues, in fact, had also been discussed. And now we see in the sidelines of that Amit Shah meeting with Mamata Banerjee as well. And of course, this is happening. This is a closed-door meeting that is happening in the offices of Mamata Banerjee in Nambana as well in West Bengal. And of course, we will be getting through to our correspondents on the ground, who are going to be getting you all the updates as far as these meetings on the side, in the backdrop of the East Zonal Council meeting, in fact, is also concerned. And of course, we will be going across to Bittu, I believe, is also joining us on the broadcast. Bittu, please tell us about this meeting that is currently underway between the Union Home Minister Amit Shah and the West Bengal Chief Minister as well. And of course, what exactly has been on the agenda for the two leaders to discuss? प्रियंका, देखिए इजेडएससी के मीटिंग के बाद अमित शाह ने 2:10 नागाद नवान्न के जो 14th तला में जो सीएम का ऑफिस है, उधर मीटिंग में बैठे हैं दोनों। अभी 20 मिनट तक मीटिंग चला है, जो खबर सूत्र के मुताबिक हमें खबर मिल रहा है अभी। तो ये सीएम के साथ क्या क्या बारे में मीटिंग होगा, ये इसको लेकर बहुत सारा बातें हो रहा है बाहर। एक बात है जो कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, मतलब सीबीआई, ईडी, इन लोगों का जो भूमिका है इधर, इन लोगों का जो काम है स्टेट में, वो लेकर शायद मीटिंग होने वाला है, ऐसे हमें पता चल रहा है अभी अमित शाह थोड़ी देर पहले नवान्न से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के तरफ। और एयरपोर्ट में अभी जो अमित शाह को रिसीव करने के लिए अभी जो लोग खड़े हैं, अभी अमित शाह के सामने जो अभी लोग हैं वो शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मुजुमदार, उसके अलावा अग्निमित्र पल सभी एयरपोर्ट में अमित शाह का इंतजार कर रहा है अभी। इसके पहले जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, नवान्न में इजेडएससी का मीटिंग चल रहा था। जिस मीटिंग में जो बीएसएफ का जो इधर का काम है, वो काम के बदौलत जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो प्रॉब्लम को लेकर इधर बात हुआ कुछ देर पहले। मीटिंग के बाद 2:10 बजे नवान्न में जो 14th फ्लोर में सीएम का ऑफिस है, उधर मीटिंग हुआ। मीटिंग 20 मिनट तक चला और मीटिंग का जो मेन मुद्दा है, हमें पता चल रहा है सूत्र के मुताबिक, नवान्न में अभी जो मीटिंग हो रहा है उसके मूल जो साफ जो विषय वो ईडी सीबीआई को लेके स्टेट गवर्नमेंट का जो रोष है, जो कॉम्प्लेन्स है, वो कॉम्प्लेन्स सब कुछ अमित शाह के सामने उठाने वाली है ममता बनर्जी, ऐसे खबर मिल रहा है। तो इस तरह से स्टेट और सेंट्रल का जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को लेकर अभी बात होंगे, ऐसे पता चल रहा है। प्रियंका। All right, Bittu, you know, you're telling us very important issues that will also be discussed in this closed-door meeting between the Union Home Minister Amit Shah and Mamata Banerjee as well. And of course, if there are going to be discussions over the investigating authorities, it's going to be extremely important to watch out for. And we trust you to keep us ahead on that story, Bittu. For the moment, thank you for joining us on the broadcast.
And time now here for a short break. Viewers, coming up on the other side, Defence Minister Rajnath Singh applauds the forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces proved valour. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. कुछ पैसे बोरो करने थे। हेलो, लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। Hey boss. Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। मजबूती डाली रूट्स में, बिखरा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, बना दिया अटूट रे, बिखरा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, शुरू हुआ सब दूध से। जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना। मातृभूमि विनाश के कगार पर खड़ी है। ये घड़ी है करो या मरो की। एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है।
Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, a day after Rahul insults army, Rijiju tweets picture. It's a big message to the Congress doubters. And also getting you updates of the Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults the Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remarks across the country. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो। एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call DEN toll-free number 1-800-419-2020 now. Welcome back, viewers. Some news in brief for you. Addressing the FICCI annual convention and the AGM in the national capital, Defence Minister Rajnath Singh made a huge statement. He said that whether it is Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, ये शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Union Minister Kiren Rijiju shared a picture of meeting with the Indian soldiers in Tawang, Arunachal Pradesh. He said that the Yangtze area is fully secure due to the adequate deployment. BJP lashes out at the Congress leader Rahul Gandhi. Bharatiya Janata Party spokesperson Gaurav Bhatia said that if the Congress President Mallikarjun Kharge is not remote controlled and if the opposition party stands with the country, then Gandhi should be expelled for his comments and Congress must apologize. राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है।
ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। Union Minister Anurag Thakur attacked Rahul Gandhi for his comments. He said that Rahul Gandhi was seen having soup with the Chinese officials during the Doklam incident, whereas Indian army was fighting with the Chinese troops. He further added that Rahul Gandhi and Congress doesn't have faith in our army. जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, Defence Minister Rajnath Singh applauds the forces. He says be it Galwan or Tawang, forces prove valor. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to ₹30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. क्या हुआ चैंपियन? दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहाँ तो रात को स्टेडियम ही बंद हो जाता है। एक काम करो ना, चेन छोड़ छोड़ के लगाना। पापा अब करो दिन रात प्रैक्टिस। चैंपियन। एक्स्ट्रा सेफ पॉलीकैप ग्रीन वायर आपके सपनों को रखे सेफ। Welcome back, viewers. Once again, we are cutting across to these visuals. In fact, these are visuals that are coming in from Mumbai in Ghatkopar, more specifically where a massive fire had broken out in Ghatkopar in the Vishwas building specifically. And the fire engines, in fact, have been rushed to the spot is the latest that we're picking up. And we are also learning that the level of the fire is yet to be declared, but you can see those visuals on your screens of this massive fire that has in fact broken out in the Ghatkopar area of Mumbai, where we can see that this is a fire in fact that has erupted in the Vishwas building in the Ghatkopar area itself, and a massive fire for that which has in fact broken out. And we see that the fire tenders in fact have been rushed to the spot, and the level of the fire is yet to be declared, and we are waiting to get more details as far as the investigation in the same is concerned. Did you see the Chinese soldiers running away? बस एक ही है, चलो आगे।
Did you see the look of fear and confusion in their faces when they were confronted by Indian Army soldiers? When the Indian Army soldiers went on an attack, they ran away. This is what Chinese courage looks like. They run away when confronted by a more aggressive and superior force. Next time when the Chinese come, we must make sure none of them go back alive. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम. Get Beto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है. इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है. अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ. जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं. पेंशन है तो टेंशन नहीं. एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. বাইরে সিকিউরিটি আর নিজের বাড়িতে এইসব. दादा, बचा लिया आपने. बेफिक्र कोलकाता जाओ, इंटरव्यू अच्छा ही होगा. हर बंद राह ओपन हो सकती है. लगता है सिर्फ दिल. एक्सिस बैंक, दिल से ओपन. You're watching Superfast 50 at 3 p.m. I'm Suesha Sound. Beginning with the first story, addressing the FICCI annual convention and AGM in the national capital, Defence Minister Rajnath Singh made a huge statement. He said that whether it is Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valor. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है. Union Minister Kiran Rijiju shared a picture of the meeting with Indian soldiers in Tawang. He said that the Yangs area is fully secure due to adequate deployment. BJP lashed out at Congress leader Rahul Gandhi. Bharatiya Janata Party spokesperson Gaurav Bhatia said that if Congress President Mallikarjun Kharge is not remote controlled and if the opposition party stands with the country, then Gandhi should be expelled for his comments and Congress must apologize. एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है,
135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। Union Minister Anurag Thakur attacked Rahul Gandhi for his comments. He said that Rahul Gandhi was seen having soup with Chinese officials during the Doklam incident, whereas Indian army was fighting with the Chinese troops. He further added that Rahul Gandhi and Congress does not have any faith in our army. जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी राहुल गांधी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। Minister of Defence Ajay Bhatt also questioned the intention of the Congress party. He further added that the opposition is doing dirty politics and Rahul Gandhi is demoralizing our Indian army. ने हमेशा जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया है। सब जग जाहिर है, कोई कदम आज तक 8 सालों में देश के अहित में उठाया हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो कोई बताए। UP Chief Minister Yogi Adityanath slammed Congress leader Rahul Gandhi for demoralizing the efforts of the Indian Army and demanded that Rahul Gandhi must apologize. पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला। Nationwide protests were held against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over his remark against Prime Minister Modi. Effigies were burnt and slogans were raised by angry protesters against Pakistan. Shame on Pakistan posters were burned as a huge protest took place in Mumbai. Protesters demanded strict action against Bilawal Bhutto after the remark that he made against Prime Minister Modi. The death toll in Bihar's Hooch tragedy has mounted to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar is not showing any remorse. He says that he has no sympathy towards the victims. On the other hand, LJP Supremo Chirag Paswan demanded the registering of an FIR against Bihar Chief Minister Nitish Kumar for the Hooch tragedy. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना इसकी समीक्षा करने को तैयार हैं, ना इस बात को सुनने को तैयार हैं और अहंकार की चरम सीमा देखिए। अहंकार इनका देखिए कि सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। Union Home Minister Amit Shah chaired the Eastern Zonal meeting in Kolkata in West Bengal. He also, in that meeting, had in attendance Chief Minister Mamata Banerjee along with several other chief ministers, where they held discussions on various unsettled issues. Supreme Court dismissed the review petition filed by Bilkis Bano challenging the early release of the 11 men convicted for gang raping her and murdering her family members in 2002. The 11 men who were convicted in 2008 in the case walked out of the Godhra sub-jail on the 15th of August after the Gujarat government allowed their early release under its remission policy. Combined graduate parade was held at Air Force Academy in Hyderabad to mark the successful completion of the pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. Now, according to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived to buy their products. 6 members of a family were burnt alive after a fire broke out in their house in Telangana's
Mancharyalai district, a fire brigade team that rushed to the spot, but by the time they reached, all the family members, including 2 children, had died. Further investigations are underway. It's a mega crackdown on terror funding that took place in Jammu and Kashmir. State Investigation Agency is to attach over a dozen properties of Jamaat-e-Islami from 4 districts of North Kashmir. Sources claim that these properties were reportedly made from terror funding. Second of the 4 Visakhapatnam class destroyers to be commissioned into the Indian Navy in the presence of Defence Minister Rajnath Singh. The ship is designed by Indian Navy's Warship Design Bureau and constructed by Masgaon Dock Shipbuilders. Newly elected Himachal Pradesh MLAs will take oath on the 22nd of December when the 3-day winter session of the State Assembly begins. A notification issued on Friday stated the same, that this would be the first session of the 14th Vidhan Sabha. Now, according to a notice, the Speaker will be elected on the 23rd of December, which will be followed by Governor's address, a debate on which would be held on the 24th of December, and it would be passed on the same day. 48th meeting of GST Council began in New Delhi and is being chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Issues like decriminalization of offences under GST law, setting up appellate tribunals and mechanisms were discussed. CBI challenges former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh bail granted in the Supreme Court. The CBI sought cancellation of that bail to Anil Deshmukh by the High Court. The High Court had given CBI 10 days to file an appeal against the bail order. Delhi court reserved its order in the cattle smuggling case. Now, sources reveal that the court is set to pronounce its order on Monday. According to ED officials, Anubrata Mondal's presence is required for the probe to continue. A huge protest rally that is taking place today across Mumbai. MVA allies, Shiv Sena Party, NCP and Congress took to the streets of Maharashtra against the injustice meted out to Maharashtra, insults of the state's icons like Shivaji Maharaj and Mahatma Phule, and atrocities against Marathi speakers. Shraddha Walkar murder case accused Aftab Poonawala moved an application in Delhi Saket Court seeking bail. Now, according to the latest developments, the court hearing had begun in Aftab's bail plea and is being done through video conferencing. Congress launched another attack on Prime Minister Modi. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary went on to say that the Prime Minister was busy flaunting his red kurta in Bali, whereas he should have shown the red flag to China. बना रहे हैं, डिवीजन बना रहे हैं, चीनी फौज को तैनाती हो चुके हैं, हमारे फौज हुआ डटे हैं। क्यों? अगर चीन की इरादे में कोई खोट नहीं रहते तो हमारी फौज क्यों डटे रहते हैं अभी तक? इसका मतलब चीन की नापाक इरादे हैं, ये साबित होते हैं। Ghazipur police has sealed the properties belonging to jailed gangster Mukhtar Ansari. Police officials claim that 2 plots worth 5 crore rupees and 3.5 crore rupees respectively belonging to Mukhtar Ansari's kin have been sealed. Russia fired more than 70 missiles at Ukraine, which is one of the biggest attacks since the start of the war, forcing Kiev to implement emergency blackouts nationwide. Russia's persistent attacks on Ukraine's energy grid have at least temporarily left millions of civilians without electricity, heat, water and other critical services. A thunderous crush of soil and debris killed 21 people at campground in Malaysia. More than 400 rescuers as well as tracking dogs are set to work to find the dozen people still missing. Elon Musk's abrupt suspension of several journalists who cover Twitter widens a growing rift between the social media site and media organizations that have used the platform to build their audiences. Individual reporters with the New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America and other news agencies saw their accounts go dark. Three people were killed and at least 13 were taken to the hospital after a missile hit a 4-story building in
central Ukraine, in President Volodymyr Zelensky's hometown, the barrage targeted critical infrastructure in cities including Kiev, Kharkiv, and others. 4 people were hospitalized in critical condition after hundreds of people forced their way into a London concert venue during a performance by Nigerian Afrobeat star Asake. Police said that 8 people were taken to hospitals after being caught in a crowd of people trying to get into O2 Brixton Academy. 2 others were injured and people were treated at the scene. Lebanese caretaker Prime Minister Najib Mikati landed in southern Lebanon to pay his respects after an Irish UN peacekeeper was killed and several others were wounded when unidentified attackers opened fire a convoy. Mikati extended his condolences, saying Rooney's death is not only a loss for the international peacekeepers but also for Lebanon. Starbucks workers around the US have started a 3-day strike. The walkouts are part of their effort to unionize the coffee chain stores. Starbucks Workers United says more than 1,000 baristas and 100 stores are planning to walk out. The strike is said to be the longest in the year-old unionization campaign. Starbucks workers around LA have also started their 3-day strike. This is the second major strike in a month by Starbucks US's workers. On the 17th of November, workers at 110 Starbucks stores held a 1-day walkout. More than 264 of Starbucks' 9,000 company-run US stores have voted to unionize since late last year. Starbucks workers shut CEO Howard Scull's home store in Seattle as they launched the first of 3 days of strikes. The workers at the Madison Park store joined more than 1,000 baristas. King Charles danced with Anne Frank's stepsister on a visit to a Jewish community centre in London. Charles visited the centre on Finchley Road and spoke with students who were preparing presents and food hampers for families around Camden, alongside Holocaust survivors like Scots and refugees. U.S. Secretary of State Antony Blinken welcomed Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard at the State Department. The two ministers expressed they have a great deal to discuss during their bilateral meeting, including the North American Leaders Summit, migration and regional security. Marcelo Ebrard here at the State Department, and we have a lot of work that we're doing almost every single day between us, but it's particularly good to get a chance to catch up in person. SpaceX launched its Falcon 9 SES-03B power mission to medium Earth orbit from Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The first stage booster supporting this mission previously launched CRS-22 Crew 3, Crew 4 and other. Following stage separation, the first stage landed on a shortfall of Gravitas drone ship. This is stationed in the Atlantic Ocean. Many worshippers walked barefoot, pushing heavy carts loaded with tobacco, candles, statues of the Catholic San Lazaro to ask for the blessing of Saint Lazarus in Cuba. Saint Lazarus is revered throughout Cuba as the saint of good health, and its popularity is also due to the blend with African roots religions. Peru's President Dina Boluarte said that her transitional government was listening to the demands of Peruvians who have legitimately raised their voices. Although protests continued across Peru demanding Castillo's freedom, Boluarte's resignation and the immediate scheduling of elections to pick a new president and Congress. Truck drivers continue to strike in Jordan after launching a strike last week to protest against high fuel prices in the Arab Kingdom. The strike and protests have spread to several cities now. Clashes have erupted with police using tear gas to disperse them. A few hundred protesters gathered in front of the Serbian presidency building in Belgrade to show their support for Serbs in Kosovo. Protesters held flags reading "No Surrender" and a banner that read "Kosovo is heart of Serbia," demanding security forces return to the province of Kosovo.
Indian women's team will face the Australian side today at Brabon Stadium. Harmanpreet Kaur and company are trailing the 5-match T20I series after losing their last match against the Aussies. But today they are aware that they need to play well to claim this trophy. SAF U20 Women's Championship 2023 is scheduled to take place from February 3rd to February 9th in 2023. The tournament will be played in Dhaka in Bangladesh. India is slated to play against Bhutan, Bangladesh and Nepal in a round-robin format before the top two sides face each other in the finals. France and Argentina are all set to meet on Sunday night for the all-important World Cup clash at Lusail Stadium. Both countries are bidding for their third title, with the French having the chance to become the first back-to-back champions since Brazil in 1962. FIFA President Gianni Infantino announced the introduction of a new 32-team men's club World Cup to launch in June 2025. Infantino stated that the FIFA Council have resolved to replace the 24-team competition that was initially scheduled for 2021 but was postponed due to the pandemic. Morocco gears up before they take on Croatia in the World Cup third-place playoff as they look to round off their historic campaign with a win. Morocco became the first African nation to reach the semi-finals after a run which included wins over Belgium, Spain and Portugal. 2018 World Cup finalists Croatia finalized their preparations ahead of the third-place match at the 2022 edition. Croatia will face the tournament surprise package Morocco for third place after the Atlas Lions created history by becoming the first African side to reach the last four at a World Cup. France squad continued to be hit by illness in the build-up to Sunday's World Cup final, with 5 players missing the latest training session. Central defenders Rafael Varane and Ibrahima Konate were the latest players to fall victim to the virus, which is sweeping through the squad ahead of the final against Argentina. Indian hockey team won a tough semi-final shootout against Ireland in Valencia, Spain to advance to the Women's FIH Nations Cup 2022 final. This victory keeps India's chances of being promoted to the FIH Pro League for the 2023-24 season alive. Wellington Phoenix beat Adelaide United 3-1 to move up to the 4th position in the A-League standings. The result also meant Phoenix ended their 4-game winless run against Adelaide. Pakistani batsman Azhar Ali announced his retirement from Test cricket as Pakistan began their third Test against England in Karachi today. Azhar will finish 3 Tests shy of passing the 100 Test milestone and move up to 5th place on Pakistan's all-time run scoring list. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी
तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Beto's diabetes care program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जाग उठा एक राष्ट्र, करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा, उठा एक महायुद्ध। भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक अध्याय, एक संग्राम, और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पे, और साथ ही पाकिस्तानी झंडे को भी यहाँ पे रखा गया, उसको भी जलाया जा रहा है। जो यहाँ पे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइव तस्वीरें, यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो तमाम यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और भी कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं बयान को लेकर के। हाय हाय पाकिस्तान, 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 हाय हाय। देखिए बिलावल भुट्टो का पुतला लाया गया, उसको भी जलाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों में काफी रोष है, जो कार्यकर्ता हैं काफी रोष में है। पूरे देश में बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जम्मू की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश बिलावल भुट्टो के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हाय हाय पाकिस्तान, 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 हाय 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 पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान। देखिए बौखला गया है पाकिस्तान, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं बौखला गया पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं डर है उसे कि जिस तरीके से चाइना सोच रहा हूँ कमेंट्री ट्राई करूँ। मैच का आखिरी बॉल, तेज तूफानी डिलीवरी, एक धमाकेदार शॉट, और ये गया छक्का। छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MY के लेटिक्रीट
टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharti Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Hey boss. Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया। Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया। मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं। Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया। There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया। बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। Anger over Rahul Gandhi's insult to the army, demanding an apology. Government's hard-hitting response silences Congress doubters who questioned army deployment. राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करता है। BJP tears into Rahul and company over army insult, says Rahul must read history. पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो From Srinagar to Ranchi, mega protests erupt against Pak Minister Bhutto after insult to Prime Minister. In Kolkata, Amit Shah and Mamata Banerjee hold 20 minutes long one-on-one meeting. And a day after Rahul Gandhi's insult to the Indian Army, the BJP has now claimed expose on the Congress-China link. BJP has alleged that then Prime Minister Manmohan Singh had gagged the media in 2009 and 2013, saying that India does not want escalation. This is coming at a time when Rahul Gandhi is questioning the ruling dispensation over the tension
at the LAC and how the government is dealing with this entire issue. This is the BJP claiming that instead it is the Congress having gone soft on China and gagging the media in 2009 and 2013. The BJP time and again has been questioning Congress's link with China and funding coming in from China, especially when it is about that deal between the Congress party and the CCP. And this is the latest coming in, where they say that in 2009, UPA had said that media is exaggerating LAC tension. Manmohan Singh government had gagged the media in 2009 and 2013. In 2013, UPA had said that India does not want to escalate. And why was UPA hiding incursion after the 2008 MOU is the question that the BJP is now asking. The Congress at that time had tied the hands of the Indian Army. Then why is it on attack mode now? Those are the questions that the BJP is asking as it claims to have exposed the Congress party, demanding an apology from Rahul Gandhi over the statement made. Listen in. The true face of the Congress party has been exposed. In 2009 and in 2013, multiple news reports show how the Congress party not only filed FIRs against journalists or threatened to file FIR against journalists for reporting on China border incidents, but also Prime Minister Manmohan Singh, no less, kept saying that भारत चीन की घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहता, मीडिया बड़ा चढ़ाकर बता रही है. In the sense that the incidents of incursions by China, and there were several as described by Shyam Saran's book, were downplayed deliberately, and this was happening after the Rahul Gandhi Chinese MOU was signed and the funds of China started coming into the RGF trust or the Gandhi Parivar NGO. The question is that why were economic interests, territorial interests of India being surrendered, and why was the media being asked not to report on it, and why was it being downplayed? Back then the armed forces' hands were tied by the UPA government, and today the same Rahul Gandhi and the Congress party tries to attack the manobal of the armed forces. This is when in Galwan or in Tawang, when we have given a befitting response, a haddi-tod response to the Chinese troops, to the PLA, Rahul Gandhi says कि हमारी सेना पिट कर आ गई. This is the attack on the manobal. Back then they attacked our sena by tying up their hands, by not making infrastructure along the LAC, and today they attack our sena either by doubting surgical strike, Balakot air strike, calling army सड़क का गुंडा, or by doubting their bravery in Tawang. मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक ही दिन बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी ये दोनों मोदी जी के ऊपर बोलते हैं. ये कौन सा रिश्ता है भाई? और सवाल ये उठता है कि बिलावल भुट्टो तो एक फेल्ड स्टेट के मंत्री है. पाकिस्तान जिसको आतंकवादी राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया ने करार किया है, ऐसे आतंकवादी राष्ट्र के, फेल्ड राष्ट्र के, और जिसका पूरा भट्टा बैठ गया है, जो दिवालिया है, ऐसे राष्ट्र के एक मंत्री इस प्रकार की बात करते हैं. लेकिन उसी समय उसी प्रकार की बात अगर हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी करे तो उनके लिए राष्ट्र बड़ा है या राजनीति बड़ी है, ये सवाल उठता है. उन्होंने तो आगे बढ़कर बिलावल भुट्टो की भर्त्सना करनी चाहिए थी, निंदा करनी चाहिए थी, उन्होंने उसकी नहीं की. और मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल जी को, इस देश का भूभाग जो चीन को मिला उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? आप ही के परिवार के लोग जब जब प्रधानमंत्री बने तब तक कई बार चीन ने हमारी जमीन पर, हमारे भूभाग पर कब्जा किया. आपकी पार्टी के समय कब्जा किया. अरे मोदी जी के समय तो हमने बाहर जाकर डोकलाम में चीन को रोकने का काम भारत ने किया है. और हमारे सेनाओं ने जिस प्रकार से चीन को रोका है, चीन को ये कहना पड़ता है कि हम उनकी सीमा में नहीं है, वो हमारी सीमा में आके उन्होंने हमारे साथ विवाद किया. ये चीन को कहना पड़ता है. 1 इंच भारत की भूमि चीन को मोदी जी के काल में नहीं मिली. इसलिए राहुल गांधी जी जरा इतिहास पढ़िए और उसके बाद बोलिए. राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है. भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है. जब जब देश पर संकट आया है,
भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वह भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। प्रवक्ता के बयान जैसा है। ऐसा लगता है जैसे चीन को इंतजार था कि जल्दी से राहुल गांधी को बुलाया जाए। शायद उन्होंने कुछ इसी तरह से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है राहुल गांधी के अंदर कि ऐसे समय में जब पूरा देश गौरव कर रहा है, चीन के सैनिकों को हमारे भारत के सैनिक जो तवांग बॉर्डर पे हैं
वो जिस तरह से उनको दौड़ा दौड़ा के पनिश किए हैं सीमा का उल्लंघन करने के लिए, थोड़ी दूर भी जो आए थे अपनी लाइन से। और ये बात तब देश अच्छी तरह समझ सकता है जब मैं उसको बताऊंगा कि सीमा के जो बॉर्डर पे होता है हमेशा वहाँ क्या होता है, खाली जोन छोड़ा जाता है, 0 पॉइंट से एक निश्चित दूरी दूसरा देश और फिर हम भी, तो जो 0 पॉइंट में ही आने पे झगड़ा हुआ है। जब उस 0 पॉइंट में आने के बाद हमारे देश के सैनिकों का जो बहादुरी दिखी है, जो उनका साहस शौर्य दिखा है और जिस प्रकार से चीनी सैनिक भागते दिखे हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी का ये बयान सेना को हमारे छोटा दिखाना, मैं समझता हूं इसको मात्र हम कंडेम नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये देश के खिलाफ ये डायलॉग है और ऐसे व्यक्ति को के ऊपर संवैधानिक रूप से देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या पनिशमेंट किया जा सकता है। ये सामान्य हंसी की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर अभी पीछे राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा लेने का मामला चल रहा है। तो क्या ऐसे ही कार्यों के लिए पैसा लेते हो आप कि अपनी देश की सेना का मनोबल गिराओगे, देश का मनोबल गिराओगे? And cutting across to breaking news coming in after launching a fresh attack on Nitish Kumar, former aide Prashant Kishore has now said that Nitish's credibility is such that does not even deserve to be the chief minister. He said that he should forget about the prime minister's post. He further added that Tejasvi Yadav should be made the chief minister right away and not wait until 2025. Let's listen in to what Prashant Kishore has said. ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई दी। जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूं कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि वो 3 साल उनके पास काम करने का अवसर रहे और जनता के पास भी अवसर होगा कि वो देख पाएगी कि 3 वर्ष में तेजस्वी यादव ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो तो जनता उनके कामकाज के आधार पर, उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट कर सके। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है, महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूं कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि वो 3 साल उनके पास काम करने का अवसर रहे और जनता के पास भी अवसर होगा कि वो देख पाएगी कि 3 वर्ष में तेजस्वी यादव ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो तो जनता उनके कामकाज के आधार पर, उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट कर सके। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है,
Well, so that's the statement coming in from Prashant Kishore, who was the former aide of Nitish Kumar, where he goes on to say that prime ministerial post is far. He doesn't even hold the credibility to now be chief minister. And why wait until 2025 to induct or make Tejashwi the front runner for the chief ministerial post in Bihar? That should be done now as well. So that is Prashant Kishore slamming Nitish Kumar. Remember, at a time when the Hooch tragedy takes center stage and the insensitivity of the Bihar chief minister is what has caught the attention of the people, while the opposition continues to question Nitish Kumar. This is Prashant Kishore also saying that Nitish has lost that stealth. With that, it's time for us to slip into a short commercial break. We'll take a quick check of what's lined up on the other side. From Srinagar to Ranchi, mega protests being staged against Bilawal Bhutto after that insult to Prime Minister Modi. Also in Kolkata, Amit Shah met with Mamata Banerjee. They had a one-on-one meeting that lasted for 20 minutes. We'll get you inside details on the other side. Stay with us. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा-थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. क्या हुआ चैंपियन? दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहाँ तो रात को स्टेडियम ही बंद हो जाता है। एक काम करो ना, चेन छोड़ छोड़ के लगाना। पापा? अब करो दिन रात प्रैक्टिस। चैंपियन। एक्स्ट्रा सेफ पॉलीकैप ग्रीन वायर, आपके सपनों को रखे सेफ। वो ऐसे मंचों से और ऐसे पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। भारत के नागरिक अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं और ये बिलावल भुट्टो का बयान ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना निराशा का वातावरण है, हताशा का वातावरण है और कुंठित होकर वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बार कहना चाहता हूं, कल ही 16 दिसंबर बीती है। ऐसी मानसिकता के कारण ही पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने किए। भारत के
वीरों को, उनकी शक्ति को, उनके शौर्य को परखो मत। ये भारत बदला हुआ भारत है। ये जवाब देना जानता है। इससे पहले भी 2 बार आतंकवादी घटनाएं हुई। हमने स्पष्ट कहा था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और पुलवामा और बालाकोट इसका साक्षी है। भारत किसी भी रूप में अपमान नहीं सहेगा। ये बिलावल भुट्टो का बयान मैं समझता हूं ISIS की भाषा है, ISI की भाषा है। अपने आप को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली स्थिर करने के लिए वो वहां की पाकिस्तान की सेना और ISI के गुर्गों को खुश करने के लिए, अपने मालिकों को खुश करने के लिए ऐसी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ये बिलावल भुट्टो जी, जिस ISI ने, जिस पाकिस्तान की सेना ने, जिस कट्टरवाद ने आपके नाना को फांसी पर चढ़ाया, आपके माताजी को हत्या की, आपको अब भी उसी ISI के हाथ खेल रहे हो। अब उसी ISI का, उस पाकिस्तान की सेना का हथियार बन रहे हो जिसने आपकी माताजी और आपके नाना की हत्या की थी। ठीक है, अब अपने आंखों को खुश करिए। भारत अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री, जिसे देश की जनता अभिभावक के रूप में मानती है, एक नायक के रूप में मानती है, उसका अपमान नहीं सहेगा किसी सूरत में। सर, अगर प्रधान फिल्म को लेकर क्या कहना है आप? लगातार उसमें देश का विरोध हो रहा है। ऐसा है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी संस्कृति को अपमानित करने वाली नहीं करनी। राहुल जी ने जनता सवाल उठाया है और राहुल ने कहा है कि चीन के सैनिक जो है वो हमारे। ऐसा है कि राहुल जी की जो यात्रा है, इट इज ए ट्रेडमिल वॉक। ट्रेडमिल होता है जिस पर दौड़ने वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसको लगता है वो दौड़ रहा, लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रेडमिल वॉक है जिस पर दौड़ने वाला व्यक्ति 1 गज, 1 किलोमीटर, 1 भी माइलस्टोन नहीं पार करता है और वो यात्रा लक्ष्यहीन होती है। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा ट्रेडमिल वॉक है, लक्ष्यहीन है, और इस यात्रा से वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस पार्टी पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी छटपटाहट में सुर्खियां बटोरने के लिए कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को अपने साथ ले जाते हैं और कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे वो सुर्खियों में रह सके। देश वंशवाद से, भ्रष्टाचार से डूबी हुई कांग्रेस से घृणा है। So, the BJP once again slamming Rahul Gandhi over the comment that he's made. This, remember, is at a protest site in Jabalpur, where we see how protesters are raising their voices against Bilawal Bhutto, Pakistan foreign minister, who went on to make that remark against Prime Minister Modi. And sporadic protests that we've seen in several parts of the country. A short while ago, we also showed you pictures from Patna, Srinagar, Jammu, New Delhi, Mumbai, where protests have been underway. Even in Pune, you see where those effigies were burnt, and very indecent remarks as protesters are angry over the insult to the Prime Minister. And the timing in particular that is being questioned when it comes to the Congress party and Rahul Gandhi.